Central Universities Amendment Bill 2023. 2. Consideration passing of the Chief Election Commissioner and other election commissioners' appointment, conditions of service and term of office Bill 2023. 3. Consideration and return of the Appropriation Number 3 Bill 2023 related to the first batch of supplementary demands for grants for the year 2023-24 after it is introduced, considered and passed by Lok Sabha. 4. Consideration and return of the Appropriation Number 4 Bill 2023 related to demands for excess grants 2020-21 after it is introduced, considered and passed by Lok Sabha. 5. Consideration and passing of the following bills after they are passed by Lok Sabha. 1. The Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Caste Order Amendment Bill 2023. 2. The Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2023. 3. The Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. 4. The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023. And 5. The Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023. 6. Consideration passing of the following bills after they are introduced, considered and passed by Lok Sabha. 1. The Central Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2023 and the Provisional Collection of Taxes Bill 2023. Matters raised with permission. Shri Vikramjit Singh Sahni. Point of order. Yes, Mr. Tirupati. Yes. So normally the convention is that on Fridays the afternoon session commences at 2:30, sir. But today in the revised list of business we have received as 2 p.m., sir. When such a decision was arrived, members are not aware, and why such a change, sir? We would like to know, sir. Please. Honorable members, this is not being done from today. This has already been done earlier by me, and reason was given. Lok Sabha sits at 2 p.m. Lok Sabha and Rajya Sabha, being integral part of Parliament, need to adhere to the same time to the extent possible. And therefore, it was 2 p.m. on an earlier occasion as directed by me. So this is not a beginning today. Shri Vikramjit Singh Sahni. Honorable Chairman, sir, I would like to raise a very important issue which has been a heartburn for the Sikh community since decades. There is an ongoing political and legal movement in Punjab to seek remission of life sentences handed to Sikh political prisoners which were convicted during the militancy era. Please take your seat. This issue is a complex and multifaceted one. Mr. Sahni, 1 second. Mr. Sahni. Yes, yes. No. Practice for such a long time, for 60, 70 years. What are you saying? What? Sit down first, one at a time. Sit down. Yes. 2:30 was made for the purpose of Muslim member for their Jummah on Friday. It was okay, I get your point. Yes, sir. Honorable members, both Lok Sabha, sit down now. I'm addressing the issue. Both Lok Sabha and Rajya Sabha have members drawn from all sections of the society. Lok Sabha sits at 2 p.m. There are members from every segment. Consciously, after due deliberation, I had effected it, indicated to the House, and this was already in place in the last session. The House will meet after lunch at 2 p.m., being in conformity with the time frame indicated by Lok Sabha. Mr. Vikramjit Singh Sahni. Now, your time starts now. Honorable Chairman, sir, I would like to raise a very important issue which has been a heartburn for the Sikh community since decades, because justice delayed is justice denied. As you are aware, there is an ongoing political and legal movement in Punjab at large to seek remission of life sentences handed to Sikh political prisoners which were predominantly during militancy area. The issue is complex and multifaceted one, rooted in historical, political, and legal considerations. At the heart of the matter are the cases of individuals
who were arrested and imprisoned in connection with various incidents during militancy in Punjab. सिख कैदियों को लंबा समय जेल में रखने से भारतीय न्याय प्रणाली की निरपेक्षता पर चिंता हो रही है, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि बिल्किस बानो केस में 15 साल की कंप्लीशन पे ही घिनौना जुर्म करने वाले अपराधियों को रिहा कर दिया गया। श्री राजीव गांधी जी के असैसिनेट्स को भी 30 साल के बाद फ्री कर दिया गया। घिनौने जुर्म करने वालों को फ्रीक्वेंट पेरोल भी दी जा रही है आपके सामने। तो ये हम्बल सबमिशन है कि देयर शुड बी यूनिफॉर्म नेशनल लेवल पैरामीटर और पॉलिसी, क्योंकि भारत एक देश है, देश के प्रांतों में डिफरेंट पॉलिसी नहीं हो सकती कि कोई 15 साल घिनौना जुर्म करके 15 साल में ही रिमिशन हो गई कोर्ट में, और while deciding the premature release, so that uniformity should be maintained. Chairman sir, I would like to draw your attention कि 11 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार की तरफ से कुछ प्रिजनर्स को रिहा करने की सर्कुलर निकाला गया, और बहुत से ऐसे ये लोग मानसिक तौर पर गंभीर बीमारियों का शिकार हैं। उसमें सरदार गुरदीप सिंह खेरा, दविंदर सिंह भुल्लर, बलवंत सिंह राजौना, जिनकी डेथ सेंटेंस ऑलरेडी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो गई है एज पर द लेटर विच आई एम लेइंग ऑन द टेबल ऑफ द पार्लियामेंट 11 अक्टूबर 2019, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो ये बंदी सिख्स जो हैं, पंजाब में एक मूवमेंट चल रही है पंजाब की शांति के लिए, सद्भावना के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि जिन सिख बंदियों ने 30 साल 32 साल गुजार लिए हैं, उनका कंडक्ट ठीक है, और इसमें many of them are facing serious physical and mental healthness. So release of Bandi Sikhs will be a necessary step in addressing historical injustice as means of fostering reconciliation and social healing in Punjab. मैं भारत के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जी को प्रार्थना करता हूं कि एक जल्दी हाई पावर्ड कमेटी बना के इन केसेस का रिव्यू करके इनका निर्वाण किया जाए। जो बंदी सिख्स 30 साल से वहां है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा समय खत्म हो चुका है। माननीय विक्रमजीत सिंह साहनी जी, सिर्फ 3 मिनट प्लीज। अब माननीय श्री सकलदीप राजभर जी, नीड टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ बाय एस्टैब्लिशिंग डिफरेंट इंडस्ट्रीज इन द स्टेट ऑफ बिहार। माननीय सभापति जी, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए समय दिए, इसके लिए मैं आपके प्रति दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय महोदय जी, आज हम इस अमृत काल में बड़े दुख के साथ कहना चाहते हैं कि जहाँ के माननीय जयप्रकाश नारायण जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, देश के प्रथम राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एवं चित्तू पांडे, मंगल पांडे, वीर कुंवर सिंह आदि के अनेक अमर शहीद जिन्होंने बलिया को सबसे पहले लड़कर आजाद कराए, जहां गंगा और सरजू नदियों का संगम होता है, ऐसा क्षेत्र आज विकास विहीन है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य बिहार व उत्तर प्रदेश के मध्य पूर्वी क्षेत्र एवं कुछ झारखंड के क्षेत्र में आज़ादी के 77 वर्षों के बाद भी कोई फैक्ट्री या कारखाना या भारी उद्योग नहीं है। कोई देशी विदेशी निवेश करने वाले भी नहीं हैं। बिल्कुल ही पिछड़ा और अनदेखा क्षेत्र है। आज स्थिति यह है कि उक्त क्षेत्र के शिक्षित अशिक्षित बेरोजगार नौजवान अपने गरीबी की वजह से अपने पेट पालने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए देश के मेट्रो शहरों में मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, पंजाब, हरियाणा आदि अनेक शहरों में जीविकोपार्जन के लिए रोजगार की तलाश में घर छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर बाहर जाता है। यही नहीं, अपने बाल बच्चों को 2-3 साल के लिए परिवार से नाता तोड़कर कुछ पैसा कमाता है और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भेजता है। लेकिन यह नहीं जान पाता है कि हमारे बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई या भरण पोषण ठीक ठाक हो रहा है अथवा नहीं। परिवार से लगाव टूटने की वजह से बाल बच्चों की शिक्षा दीक्षा ठीक नहीं हो पाती है और वही पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब ही रह जाते हैं। भूखमरी और बेरोजगारी का अंदाजा तब चलता है जब ट्रेन
बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से शहरों की ओर जाती है। माननीय महोदय जी, ऐसी सूरत में उसे अविकसित और विषम परिस्थितियों को देखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की अति आवश्यकता है, क्योंकि उक्त क्षेत्र में कल कारखाना, फैक्ट्री या मिल या कोई भारी उद्योग होता तो वहां के नौजवानों को मेट्रो शहरों में विषम परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता और अपने परिवार के साथ रहकर अपने बाल बच्चों की सही लालन पालन करता। साथ ही क्षेत्र का सर्वांगीण विकास भी होता। अतः माननीय महोदय जी के माध्यम से अपनी सरकार व राज्य सरकारों से मांग करता हूं कि उक्त क्षेत्रों में भारी उद्योग या कल कारखाना और देशी विदेशी निवेशकों से निवेश कराने की कृपा की जाए, जिससे उक्त क्षेत्र का विकास हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री सकलदीप राजभर जी। माननीय सदस्यगण, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप बोलें, उस विषय पर लिखित भाषण पहले से तैयार न पढ़ें। माननीय श्री अब्दुल वहाब जी, डिमांड टू इंक्लूड ऑल नवोदय विद्यालय एम्प्लॉइज अंडर CGS पेंशन स्कीम। Yeah, Deputy Chairman ji, the issue is the same. This Navodaya Vidyalaya, since 85, I think, it is there all over India. It's a wonderful experiment, and it has won a lot of sidelines, rural students are nowadays, after passing out the Navodaya, they are in good positions. Issue is the teachers and the employees, they are not in this pension scheme. A lot of years saying everything saying the parliamentary, even parliamentary committee also given the recommendation. Now it is still with the finance department. So thousands of employees are waiting for this one. So all other institutions by government of India, they are getting this pension and other facilities. But why this is lagging? That was my point. And I hope this one, instead of before they are coming out with this one, Chalo Parliament and Parliament blockade, please consider this one as early as possible. That is my demand. Thank you. Thank you. Thank you, माननीय श्री अब्दुल वहाब जी। श्रीमती सुलता देव जी, request to revise the financial assistance given under PMAYU. शुक्रिया डिप्टी चेयरमैन सर। करीबन 1.5 साल होने के बाद आज मेरा पहला बार 0 आवर लगा, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और परमिशन देने के लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। जब प्रधानमंत्री जी ने एक बार बोला कि सबके जो सब गरीब के सर के ऊपर छत होना चाहिए और PMAY का योजना का शुरुआत हुआ था 2015 में। 2015 में PMAY के लिए 1.5 लाख रुपए का प्रावधान हुआ है और देखा जाए तो ये अर्बन में और रूरल में देखे तो जो IAP डिस्ट्रिक्ट है उसमें उसके लिए 1.20 माने 1,20,000 का, और अगर देखा जाए तो और जो नॉन IAP है उसमें 1,10,000 का। 2015 में जो 1.5 लाख था और 1,20,000 1,10,000 था, वो आज 8 साल बढ़ गया है और सारे कमोडिटी का रेट, सारे चीज का रेट बढ़ रहा है। अगर सारे चीज का रेट बढ़ रहा है तो ये असिस्टेंट रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि जो गरीब है उसके लिए छत के लिए फिर पैसा जब ज्यादा खर्चा हो रहा है उसके हाथ से, वो बेचारा कहाँ से लाएगा। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर 8 साल में सीमेंट को देखा जाए तो फिर वो 30-40% बढ़ा है। अगर नॉन एग्रीकल्चर लेबर कॉस्ट देखा जाए तो वो भी 30 से 40% बढ़ा है। स्टील का देखा जाए तो 100% बढ़ा है और सब चीज का, सारे चीज का जो रेट है वो बढ़ रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ रहा है। सबका रेट बढ़ने के साथ साथ अगर देखें तो कॉस्ट नहीं बढ़ रहा, कहीं ना कहीं कॉस्ट भी बढ़ना चाहिए। कॉस्ट नहीं बढ़ेगा तो बेचारा कभी वो घर है ना, वो गरीब का घर है, वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा आपसे ये, आपके माध्यम से सरकार से ये विनती है, अनुरोध है कि जो देखा जाए तो 1.5 लाख का एक हाउस के लिए 330 फीट स्क्वायर फीट का हाउस के लिए कम से कम 4 लाख रुपया खर्चा होता है। आपका जो सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का असिस्टेंट बढ़ाना चाहिए।
कम से कम 3 लाख हो तो कभी गरीब अपना एक छोटा सा झोपड़ी का घर से वो आके छत का घर बना सकती है, रह सकती है। और हमारे वहां पर उड़ीसा में जो MGNREGA में 95 डेज का उसमें ऐड किया जाता है लेबर कॉस्ट, और जो जल्दी काम खत्म करते हैं 2 महीने का अगर काम खत्म करते हैं उसको 20,000 रुपया इंसेंटिव दिया जाता है। जो 4 महीने के अंदर काम खत्म करते हैं उनको 10,000 का इंसेंटिव दिया जाता है। मेरा सरकार से ये निवेदन रहेगा आपके माध्यम से कि ये कॉस्ट ज्यादा बढ़ाया जाए, सो दैट जो गरीब लोग हैं उन लोगों को छत बनाने के लिए, सर के ऊपर छत बनाने के लिए, PMI घर बनाने के लिए उनको सहज हो और सरल हो। मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे सारे जो सांसद है, सारे जो साथी सांसद है, ये इस बात से सहमत होंगे धन्यवाद श्रीमती सुलता देव जी, धन्यवाद। माननीय श्री सुजीत कुमार जी, डिमांड फॉर इंक्रीज गारंटीड डेज ऑफ वर्क फ्रॉम 100 days to 150 days in 10 aspirational districts and backward districts of Odisha. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, through you, I would like to request and urge the Government of India to increase the guaranteed number of work days under Manrega scheme from 100 to 150 days in all the aspirational districts and blocks of Odisha. Sir, in year 2014, Ministry of Rural Development, Government of India, sir, had taken a very significant step which has solidified the livelihood of all those citizens who received pattas under the Forest Rights Act 2006. Sir, through this directive, sir, about 8 lakh beneficiaries benefited, including 3.2 lakh from the state of Odisha alone. And sir, the number of work days was increased from 100 to 150 for these 8 lakh beneficiaries. Highly commendable steps, sir, which solidified the livelihood security, boosted the income and food security of the beneficiaries. But sir, still a large number of citizens, particularly from the SC/ST communities, are left behind in the state of Odisha. Sir, there are over 1 crore ST population in the state of Odisha, which is roughly 23% of our population. We have the largest number of scheduled tribes in the country, sir, 62, and we also have the largest number of PVTGs, particularly vulnerable tribal groups, 13. So, sir, a large section of this population is still deprived of this enhanced benefit, sir. So, sir, this is causing, sir, seasonal unemployment, distress, migration. So, sir, my request and my sincere request to the government is to look into this. Sir, I'll now mention about a very commendable step which the government of Odisha took in the year 2020 by enhancing the additional work days from 100 to 200 in 20 blocks in 4 aspirational districts of Odisha. But we have many more aspirational blocks and districts, sir, which are yet to be covered. And this 200 days enhancement was further enhanced to 300 days. But, sir, being a state with limited resources, we can only do so much. So my request to Government of India is, sir, to sanction adequate fund to the state so that we can cover this additional work days under Manrega to all the aspirational districts and all the aspirational blocks of Odisha. Thank you, sir. धन्यवाद माननीय सुजीत कुमार जी। माननीय श्री कार्तिकेय शर्मा, the success of PM Ayushman Yojana in delivering universal health coverage. माननीय कार्तिकेय शर्मा, absent. माननीय श्री लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर DP Vats, retired, request to fill up the left out ex-serviceman vacancies by Agniveer. Thank you, sir. With your permission, मैं अग्निवीरों के लिए पूर्व सैनिकों की छूटी हुई रिक्तियां भरना के लिए दरखास्त करता हूं। केंद्रीय और राज्य सेवाओं में ग्रुप C और D में पूर्व सैनिकों के लिए औसतन 10 से 14% आरक्षण है। ये मैं स्टेट्स और सेंटर की बात कर रहा हूं, जिसमें से 2 से 3% का लाभ पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं यानी वीर नारियों और उनके आश्रितों सहित लिया जाता है। यानी फिलअप जो वैकेंसीज हैं वो 2 से 3% रहती हैं और बाकी छूट जाती हैं। अब आगे आगे क्या होगा कि जैसे अग्निवीरों की संख्या बढ़ती जाएगी और पूर्व सैनिकों की घटती जाएगी। इसका कारण ये भी है कि 1 रैंक 1 पेंशन मिलने के बाद रिटायरमेंट इज एज गुड एज सर्विस। मैं जब रिटायर हुआ, मेरी तनख्वाह आज जो मुझे पेंशन मिलती है उससे कम थी। तो इसलिए एक तो ये बात है, दूसरी पहले एज का रिलैक्सेशन
के साथ साथ क्वालिफिकेशंस का भी रिलैक्सेशन होता था एक्स सर्विसमैन को, जिसमें सिविल सर्विसेज भी आती थी। अब सिर्फ एज का रिलैक्सेशन है, क्वालिफिकेशन का रिलैक्सेशन नहीं है। तो खासकर फिजिकल एक्टिविटी में और क्वालिफाइंग मार्क्स में 40 साल की उम्र में एक्स सर्विसमैन एक 22 साल के जवान के साथ compete करने में दिक्कत होती है। तो मोस्टली वैकेंसीज बच जाती हैं। मेरी प्रार्थना ये है आपके माध्यम से कि ये लेफ्ट आउट जो वैकेंसीज हैं, आई अगेन मीन लेफ्ट आउट, जो आश्रितों तक अवेल हो चुकी हैं उससे बच गई, उनको अग्निवीर को ऑफर किया जाए इन एडिशन टू दी रिजर्वेशंस फॉर अग्निवीर। ये अग्निवीर जो स्कीम है उसको बहुत आकर्षक बनाएगा। और अग्निवीर क्योंकि युद्ध अपना स्वरूप चेंज कर चुका है, आज के दिन दर्जी की दुकान पे भी टेररिस्ट अटैक हो जाता है, स्कूलों में भी हो जाता है, इसलिए अग्निवीर एक समय की मांग है। थैंक यू सर। थैंक यू। माननीय श्री आर गिरिराजन, डिमांड टू प्रोवाइड ₹2,500 crores exclusively for construction of flyovers at Chennai. Thank you, sir. With your kind permission, Chennai megacity has over 10 million people and a large migrant population from within and outside Tamil Nadu. With over 50 lakh two-wheelers, 10 lakh three-wheelers and 7 lakh four-wheelers, Chennai is home to the second largest vehicular population in India. The total road network in Chennai megacity is 2,780 kilometers. During 96 and 2001, our visionary leader Dr. Kalangar constructed several flyovers to reduce the traffic congestions in Chennai. There are 52 functional flyovers in the city and 32 bridges, catering to the city's homogeneous vehicular population. In addition, 36 flyovers are in pipeline. Our Honorable Chief Minister, Thalapathy M.K. Stalin, has taken appropriate measures to improve the infrastructure developments in Chennai. At the moment, Chennai requires many flyovers between stagingly important places. A 4-lane elevated flyover on Anna Salai from Tenabed to Saidapeta will be taken up for construction at an essential cost of 621 crore in the coming year. The flyover will be the modern engineering marvel and improve road safety and ease out traffic congestion at several major junctions. Likewise, there is an urgent need for the construction of 9 flyovers in Greater Chennai region. DPR for building 6 bridges, flyovers and an elevated 4-lane road from Lighthouse to Gindi in under progress. Construction of 2 U-shaped flyovers at Indranagar Junction and Title Park Junction and Rajiv Gandhi Salai is underway, and rupees 108 crore was allotted for it. The proposed flyover and Madhya Kailash Junction is in the pre-construction stage and the civil work will commence soon. A total of 46 crore has been earmarked for this project. Apart from this, the Municipal Administration Department is planning to build 5 flyovers bridges at Vallur Kotam Junction in Nungambakam, 98 crore. ROB at Korukupeta in place of LC Gate on Manali, rupees 105 crore. An elevated bridge at China, Chinnanolambur across Coom River, linking Union Road with Punamalli, rupees 200 crore. Flyovers at Jeevan Nagar and Ashfran Garden Colony near Kill Park, 7 crore. A flyover MKN Road, Alandur and Officers Training Colony, OTA on GST Road is as planned. Therefore, I urge the government to provide 2,500 crores exclusively for the construction of flyovers at important roads and junctions to ease the vehicular traffic in Chennai megacity. Thank you, sir. Thank you. माननीय श्री हरनाथ सिंह यादव जी, need to impose uniform civil code in the country to maintain communal harmony. माननीय सभापति जी, संविधान के अनुच्छेद 44 में देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक आचार संहिता लागू करने की बात कही गई है, परंतु मुस्लिम, ईसाई
आदि अल्पसंख्यक समाज की 10 करोड़ से अधिक माताएं बहनें बेटियां हैं, जिनसे कुछ जाहिल ताकतों ने उनसे इज्जत और सिर ऊंचा उठाकर चलने के अधिकार को छीन लिया है। सवाल यह है कि आखिर उनके साथ उनका ऐसा क्या अपराध है कि उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं मिल रहा है। महोदय, धर्म, लिंग, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना एक जघन्य अपराध है और संविधान की मूल अवधारणा का अतिक्रमण है। महोदय, समान नागरिक आचार संहिता किसी पूजा पद्धति या विवाह पद्धति से कोई दूर का संबंध नहीं है, इसका सीधा संबंध इंसानियत से है। महोदय, समान नागरिक संहिता लागू होने का मतलब है कि हिंदू बहन बेटियों की तरह मुस्लिम, ईसाई आदि सभी वर्गों की बहन बेटियों के लिए विरासत और वसीयत का अधिकार समान होगा। निसंतान पति पत्नियों को अपनी वंश परंपरा आगे चलाने के लिए बच्चा गोद लेने का अधिकार समान होगा। हिंदुओं के समान सभी वर्गों के विवाह की उम्र एक समान होगी। विवाह विच्छेद का तरीका और आधार एक समान होगा। विवाह विच्छेद होने पर किसी बहन बेटी के दर दर भटकने के बजाय हिंदुओं की भांति गुजारे, भत्ते और भरण पोषण का आधार एक समान होगा। महोदय, हिंदुओं के समान एक पति, एक पत्नी, एक विवाह का अधिकार एक समान होगा और हिंदुओं की भांति पैतृक संपत्ति में पुत्र, पुत्री, बेटा, बहू को समान अधिकार होगा और विवाह विच्छेद की स्थिति में विवाह उपरांत अर्जित संपत्ति और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही, प्लीज समान अधिकार प्राप्त होगा। महोदय, चिंतन का विषय यह है कि सभी महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देने के किसी मजहब को खतरा कैसे पैदा हो जाता है, उसकी पवित्रता कैसे नष्ट हो जाएगी। महोदय, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक स्तंभ स्थापित किए हैं और इस यात्रा में नारी शक्ति वंदन कानून का निर्माण और 3 तलाक प्रथा की समाप्ति आगे चलकर मील का पत्थर साबित होगी। महोदय, आज आवश्यकता है कि मुस्लिम, ईसाई, पारसी आज 10 करोड़ बहन बेटियों के लिए ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए जो मानवीय गरिमा को स्थापित करती हो और उसकी सुरक्षा करती हो तथा एक सभ्य समाज के मानकों पर खरी उतरती हो। अतः मैं सामाजिक एकता, सांप्रदायिक एकता और पारस्परिक सौहार्द को स्थापित करने के लिए सरकार से समान नागरिक संहिता शीघ्र लागू करने की मांग करता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य का प्लीज, मैंने आपने सही कहा, पर मैं सारे सदस्यों से मैं आरंभ में यह निवेदन कर चुका हूं कि you are not supposed to read, but you are supposed to speak। पर सारे सदस्य लगभग इसी रास्ते पर है। प्लीज नो, माननीय सुश्री इंदु बाला गोस्वामी नीड टू क्रिएट एक्स्ट्रा स्टॉपेज ऑफ वंदे भारत एट पठानकोट रेलवे स्टेशन, प्लीज। धन्यवाद उपसभापति जी। बोले प्लीज। धन्यवाद उपसभापति जी। माननीय रेल मंत्री जी के समक्ष वंदे भारत ट्रेन संख्या 22-439/22-440 पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर ठहराव के संबंध में निवेदन करना चाहती हूँ। वंदे भारत दिल्ली से कटरा आते और कटरा से दिल्ली जाते हुए पठानकोट से गुजरती है, किंतु इस स्टेशन पर इसका ठहराव नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण रूट है जिसमें पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पंजाब, हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा व जिला कांगड़ा के लोगों के लिए एकमात्र ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। साल भर भारी संख्या में श्रद्धालु देश के हर कोने से मां वैष्णो माता के दर्शनों के लिए जम्मू आते जाते हैं। इसके पश्चात अधिकतर लोग प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर देवभूमि हिमाचल प्रदेश में धार्मिक पर्यटन हेतु मां ज्वालामुखी, मां बगलामुखी, नयना देवी, चिंतपूर्णी, मां चामुंडा देवी, मां ब्रजेश्वरी व शिव मंदिर बैजनाथ आते हैं। वंदे भारत ट्रेन के पठानकोट कैंट स्टेशन पर ठहराव न होने की वजह से हिमाचल प्रदेश के उपरोक्त धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं व पर्यटकों से वंचित रह जाते हैं। पठानकोट स्टेशन पर वंदे भारत ठहराव से हिमाचल के धार्मिक पर्यटन को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। वंदे भारत ट्रेन देश की पहली ऐसी रेल सेवा है जिसमें प्रीमियर सफर का सबसे अधिक ख्याल रखा गया है। इसलिए उपरोक्त रूट पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन का ठहराव हिमाचल प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में
अत्यंत महत्वपूर्ण कदम होगा। अतः मैं माननीय रेलवे मंत्री जी से मांग करती हूं कि आप संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर वंदे भारत ट्रेन का ठहराव कम से कम 2 मिनट के लिए पठानकोट कैंट स्टेशन पर करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री केसी वेणुगोपाल जी, कंसर्न ओवर alleged prevalence of casteism Thank you, and sir. discriminatory practice in Central University. Sir, I would like to draw the attention of this august house towards a pressing incident that needs an immediate intervention from the union government. Sir, I have gone through a answer given by the Honorable Minister in the Lok Sabha, which reveals that about 13,626 students from the scheduled caste, scheduled tribe, and other backward community have dropped out central universities, Indian Institute of Technology, and Indian Institute of Management during the last 5 years. The Honorable Minister also give a breakup of the students who have dropped out of various institutions. Around 4,596 OBC candidates and 2,424 SC and 2,622 ST students dropped out of central universities. And in the past 5 years, as many as 2,666 OBC candidates, 1,068 SC, and 408 ST students dropped out from IIT, and 163 OBC, and 188 SC, and 91 ST candidates dropped out of IIM in the same period. The minister is giving an explanation that the students have various options for going for other programs, and that is why this happened. But only OBC, SC, ST students have this option, sir? Why is this happening only for these students? Sir, it should be noted that our major institutions, prestigious institutions like IIM and IIT, were in the headline due to caste discriminations and other discriminatory activities. These students are faced by serious issues during their study. Therefore, the rate of suicide in the campus is also very high in this period, sir. I have a statistics on that also. In December 2021, sir, the union government has told Parliament that 122 students had died by suicide at higher education institutions under the center between 2014 and 2021. Of the 120 students, 24 belong to the SC communities, 3 were STs, and 41 were OBCs. We have not forgotten about Rohit Vemula, sir. His suicide note is very clear. My birth is my fatal accident. This was by Rohit Vemula while his suicide shots. Sir, I urge the government of India to take immediate step, intervene it, to address the concern on this discrimination and marginalization of within the education. Thank you. Thank you. Thank you. It's not going on record, you know, Pramod ji. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Not going on record, K.C. Venugopal ji. Not going on record. You know, 3 minutes, please. Thank you. Thank you. जो माननीय सदस्य एसोसिएट करना चाहते हैं, काइंडली सेंड योर नेम हियर. सेंड योर नेम हियर. माननीय श्री संजीव अरोड़ा demand to make Ayushman scheme more effective by enabling poor to get full benefits. Sir, Thank you, Vice Chairman साहब, for giving me opportunity. आप सब जानते हैं कि इस उसमें जब आपका मैटर विद परमिशन ऑफ चेयर एक्सेप्ट होता है, सिर्फ 3 मिनट बोल सकते हैं और वो रिकॉर्ड पर नहीं जाता. आपको बार बार मुझे बताना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता नहीं. माननीय संजीव अरोड़ा, आपकी बात जाएगी रिकॉर्ड पे. कुछ और प्रमोद जी. Thank you, Vice Chairman साहब, for giving me opportunity to speak on a very important issue, which is regarding Ayushman scheme launched by government. And I am talking from the official numbers. From the official numbers of Ayushman scheme, the average spent on every patient is 12,000 rupees.
whereas the approved amount is rupees 5 lakhs for every family. So 12,000 is less for two reasons. First of all the hospitals which can take care of critical care are not empaneled with Ayushman. And so, which means now the average bed size of hospitals empaneled under Ayushman scheme is 48. So, which means only smaller hospitals are empaneled, and the bigger hospitals which can take care of critical illness is not. They are not. So, my request to the government is to make bigger hospitals compulsory for empanelment, at least those hospitals which are taking benefit from the government, like that of which have medical colleges and which take income tax exemption, because poor patients are not getting treatment to the extent promised in Ayushman scheme. And also the cost of treating, which have been approved in Ayushman scheme, is very less. So private hospitals, corporate hospitals, they do not want to get themselves impaneled. And that is why the patients do not get the best possible care under this scheme. So my request to government is to make some hospitals compulsory, increase the charges to some extent in Ayushman, so that all the poor people are covered. Thank you. Thank you, Mani Sanjeev Arora ji. Mani Sri Neeraj Dangi ji, need to amend newly implemented circular of Reserve Bank of India circular dated 17th March for auditing of banks. बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों में 20 करोड़ से अधिक के एडवांस वाली शाखाओं का 100% ऑडिट एवं 20 करोड़ से कम एडवांस वाली शाखाओं का 20% ऑडिट रोटेशन वाइज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा करवाया जाता रहा है। 2020-21 में ऑडिट अलॉटमेंट के समय राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए उसके मद्देनजर कराई जाने वाली ऑडिट के प्रावधानों के अंदर पैरामीटर्स के बदलाव का आग्रह आरबीआई से किया और आरबीआई ने उसे स्वीकार करते हुए एडवांस को बेस मानते हुए सिर्फ 90% एडवांसेस की ऑडिट करने का नया प्रावधान दिया। इसी प्रकार एक परिपत्र 17 मार्च 2022 को जारी किया गया, जिसमें इन एडवांसेस के 90% ऑडिट वाले प्रावधान को घटा करके 80% कर दिया गया। इस नए प्रावधान से लगभग 50% बैंक शाखाएं जो है ऑडिट के दायरे से बाहर हो गई और इस वजह से देश ये परिस्थितियां इस नए प्रावधान से इस तरह से बन गई जो कि बैंकिंग सिस्टम और वित्तीय स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से ये अनुकूल नहीं है और ना ही जमाकर्ताओं के ये हित में भी है नया प्रावधान। वर्तमान परिदृश्य में आए दिन बैंक घोटाले सामने आ रहे हैं और लगातार वित्तीय अनियमितताओं के चलते हुए प्रतिदिन बैंक लाइसेंस जो है रद्द किए जा रहे हैं। ऐसे में जमाकर्ताओं की खून पसीने की गाढ़ी कमाई और बुढ़ापे का सहारा बैंकों में डूब रहा है और आगे भी डूबने के आसार हैं। अतः जनहित व राष्ट्रहित में वित्त मंत्रालय व केंद्र सरकार से माननीय उपसभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन है, अनुरोध है कि आरबीआई को निर्देशित किया जाए और इन नए प्रावधानों को वापस लेकर के पुराना जो ऑडिट सिस्टम है उसको रिस्टोर कराया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय नीरज डांगी जी। माननीय श्री पवित्र मार्गेरिटा नीड टू इनिशिएट ए ग्लोबल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन अंडर दूरदर्शन। Namaskar, sir. Honorable Chairman, sir. As I speak in this August House today, flames of war have been raging in two parts of the world. Millions of people are going through unspeakable suffering in these wars. Along with the human casualties, the truth also becomes the casualty in these wars. I've been observing in fascination, sir, that the various global media organizations have been presenting versions of truth that suit them the most. It's true that these conflicts are occurring on faraway shores today, but I shudder to think what kind of roles some of these so-called global media organizations will play if countries like India
get drawn into a conflict. Even an organization like BBC's agenda gets exposed when they unreasonably target a democratically elected world leader on fictitious allegations. These developments only illustrate that a handful of global media outlets continue to dominate the flows of international news and keep targeting emerging countries like our India. इसे बदलना होगा. There is a demand and we have resources in abundant supply. What the world needs today is a truly global media organization that doesn't push agendas against countries like India. India has an unparalleled pool of talent engaged in more than 1 lakh registered newspapers, 400 news channels, and uncountable other media entities. What we need now is to leverage the power of this workforce to create a media outlet that has international presence and acceptance. And I think our Prasar Bharati's Doordarshan and Akashvani maybe can be the best answer. As a member of this august house and as a former journalist, I honestly request our INB ministry for a roadmap to boost up the infrastructure and editorial capabilities along with global presence of Doordarshan so that the organization is able to collect and disseminate news from all over the world and to the world. Chairman sir, भारत एक ऐसा देश है जिसने कभी भी दूसरे की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारी कूटनीति की बुनियाद है. पक्षपात करने के बजाय हम राष्ट्रों के बीच सद्भाव लाने के प्रयास करते हैं. वसुधैव कुटुंबकम इज आवर मंत्र. ऐसे में यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दुनिया को एक सच्चा बेसिक मीडिया संगठन देने के लिए भारत से बेहतर कोई नहीं है. वी हैव कंटेंट, वी हैव टैलेंट एंड वी हैव टेक्नोलॉजी. और अभी ये संभव है क्योंकि मोदी जी है तो मुमकिन है. थैंक यू. धन्यवाद. माननीय श्रीमती दर्शना सिंह जी, डिमांड टू इंक्लूड चंदौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश अंडर बाना सागर इरिगेशन प्रोजेक्ट. धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान किया. महोदय, उत्तर प्रदेश का जनपद चंदौली कृषि प्रधान जनपद है, जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है. चंदौली जनपद एक जिला एक उत्पाद यानी कि ओडीओपी में काले चावल के लिए चयनित है. भारत सरकार द्वारा जनपद चंदौली जिले को आकांक्षी जिले के रूप में चयनित किया गया है, किंतु सिंचाई की उचित प्रबंध न होने के कारण किसानों को धान की रोपाई में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है. महोदय, जनपद चंदौली में सिंचाई हेतु पानी के समुचित प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार की बाण सागर परियोजना में चंदौली को शामिल किया जाना किसानों के लिए अति आवश्यक है. महोदय, चंदौली जनपद में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है. किसानों को सिंचाई हेतु नारायणपुर पंप कैनाल से पानी की आपूर्ति संभव नहीं है. इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि केंद्र सरकार की बाढ़ सागर परियोजना द्वारा संचालित नहर को जरगो बांध से मूसा खाड़ बांध नौगढ़ चंदौली से जोड़ दिया जाए तो लतीफ शाह बैराज से कर्मनाशा लेफ्ट नहर के माध्यम से पूरे चंदौली जिले को सिंचित किया जा सकता है. धन्यवाद. धन्यवाद. माननीय श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी, कंसर्न फॉर राइजिंग केसेज ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट अमंग इंडियन यूथ. सर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया है. सर, आज सवेरे ही जब मैं पार्लियामेंट में आने की तैयारी कर रही थी, पता चला कि एक मेरे परिवार से परिचित एक 36 साल के युवा हैं जिनकी क्रिकेट खेलते खेलते अचानक ही हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई. और आज मुझे ये मुद्दा रखने को मिल रहा है तो मैं आपकी खास करके आभारी हूँ. जो राइजिंग केसेस हैं इंडिया में सडन हार्ट अटैक्स के, वो एक चिंता का विषय है और मैं आपके ज़रिए हेल्थ मिनिस्ट्री को कहना चाहूँगी कि इस पे थोड़ी ज़्यादा रिसर्च कर एक डेटा बनाकर
कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस जो हो रहे हैं, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं, जो वैक्सीन्स हैं, उसको लेकर थोड़ा रिसर्च बैक हमें फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। कैसे हम लोग जो सडन हार्ट अटैक्स लेस देन 50 ईयर ओल्ड्स के हो रहे हैं, कैसे उसको काबू में ला सकते हैं। वैसे ही लांसेट की स्टडी बताती है कि इंडिया में 5 से 6 लाख इंडियंस की अचानक से हार्ट अटैक होकर मृत्यु हो जाती है, और वो 50 साल से कम उम्र के हैं। ये सिर्फ उनके परिवार के लिए ही दुख का विषय नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए दुख का विषय है। तो एक डेटाबेस बनाने की मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और रोज अखबारों में आता है कि कोई डांडिया खेलते खेलते उनकी डेथ हो जाती है, कोई हार्ट कंडीशन नहीं है, कोई हेल्थ हिस्ट्री नहीं है हार्ट को लेकर, पर वो उनके अचानक से डेथ होती है। कल ही डॉक्टर प्रशांत नंदा जी ने इस मुद्दे को रखा था। उन्होंने बताया था ट्रेन में एक 38 साल के युवा को हार्ट अटैक आ जाता है, कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। तो इस पे भी खास करके ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी सर, फाइजर की वैक्सीन जो अमेरिका में काफी लोगों को लगाई गई थी, अब आकर जब उन पे दबाव पड़ा है, उन्होंने बताया है क्या क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो शायद हमें इस पे भी आत्मचिंतन करने का विषय है कि जो वैक्सीन्स लगाई गई या कोविड का जो गंभीर स्वरूप जो लिया गया, जो मेडिसिन हमारी तरफ से प्रिस्क्राइब की गई, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से आई थी, क्या उसमें कहीं कमी रह गई। साकेत गोखले जी हमारे बगल में बैठे हैं, 34 साल की उम्र में विदाउट एनी हेल्थ इश्यूज उनको हार्ट अटैक आ जाता है, और उनके डॉक्टर बताते हैं कि वो इसलिए है क्योंकि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस है। तो आपके माध्यम से सर मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एक इम्पॉर्टेंट विषय है, इस पे खास करके ध्यान देना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसके गाइडलाइंस दिए हैं, पर वो इतने पुख्ता नहीं है कि इस इशू को एड्रेस कर पाए। आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे ये कहने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद श्रीमती प्रियंका जी। माननीय श्री राजीव सुख, माननीय राजीव सुख, माननीय राजीव सुख नहीं, माननीय श्री रामनाथ ठाकुर जी, डिमांड टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन एट जन औषधि केंद्र। बोलिए। उपसभापति महोदय, 2015 में बहुत जोर शोर से ये प्रचार किया गया, कहा गया कि जन औषधि केंद्रों की स्थापना की जाएगी। वहाँ गरीब लोगों के लिए, शोषित लोगों के लिए सस्ती दरों पर दवा उपलब्ध होगी। लेकिन हमने जो देखा है कि बीपी की, मधुमेह की जो दवा है, जिसको 100 रुपये में मिलनी चाहिए, वो 3000 रुपये में मिल रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जन औषधि जितनी दवाएं हैं, खुले हैं दुकानों में, उस सस्ती दर पर, सस्ते भाव पर गरीबों को वितरित करनी चाहिए और दवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। दवाएं उपलब्ध नहीं है, और उन दुकानों में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो एलोपैथिक की दवाएं हैं, अंग्रेजी दवाएं हैं, वो बिक रही हैं, बिकती हैं और बिक रही हैं। इसको अंग्रेजी दवाओं को वहां से हटाया जाए और सस्ती दर पर दवा उपलब्ध कराई जाए। आपके माध्यम से सरकार से यही अनुरोध है। धन्यवाद। माननीय विजयपाल सिंह तोमर, माननीय विजयपाल सिंह तोमर। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। कंसर्न ओवर एडल्ट्रेशन इन फूड आइटम्स। हाँ महोदय, आज शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलना मुश्किल हो गए हैं। 25% से लगाकर 80% तक एडल्ट्रेशन हो रहा है। दूध में, सब्जियों में, खाने पीने की चीज में, हर चीज में एडल्ट्रेशन है। मान्यवर दूध में अरारोट, सपरेटा पाउडर मिलाना और नकली मावा ये आम बात हो गई है। उबले हुए आलू, शकरकंद और सपरेटा का खोया बनाया जाता है। मसालों में भी आटा, अनाज, दवाइयाँ सभी में मिलावट है। घी के नाम पर वनस्पति मक्खन की जगह मार्जिन, आटे में सेल कड़ी, पाउडर पिसी हुई, हल्दी में पीली मिट्टी, काली मिर्च में पपीते के बीज, कटी हुई सुपारी, छुआरे की गुठलियां मिलाना आम बात हो गई है। यह सब इतनी मिलावट हो गई है कि एक इससे व्यापक बीमारी फैल गई है। बच्चे दूध पीते हैं, सिंथेटिक दूध आता है, मिलावटी दूध मिलता है। बच्चों में बचपन से ही तरह तरह की इस तरह की बीमारियां हैं कि डॉक्टरों को भी पता नहीं चल पा रहा कि बीमारी क्या है। एक गांव में अभी मैं क्षेत्र में गया, 40 से अधिक लोग मरे और डॉक्टर ऐसी दवा देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं चल पा रहा। इसने भयंकर रूप ले लिया है। मान्यवर मिलावट करने वालों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए।
एक पूर्व जो ताकि आगे इस तरह की कार्रवाई ना हो। मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि मिलावट करने वाले नंबर 2 से पैसे कमा लेते हैं। अगर वे पैसे वाले हैं तो समाज में भी वो सम्मान पा जाते हैं और बड़े पैमाने पर हर जगह जिस भी ब्रांड की चीज चाहे वो उपलब्ध हो जाती है। किसी भी ब्रांड का घी हो, किसी ब्रांड का दूध हो और किसी भी ब्रांड का कोई भी चीज हो, वो सब उपलब्ध हो जाती हैं। तो मान्यवर 1954 का जो अधिनियम बना हुआ है, PFA एक्ट 1954 खाद्य अधिनियम, तो उसे जहरीले एवं हानिकारक खाद्य पदार्थों से जनता की रक्षा करता है। लेकिन घटिया खाद्य पदार्थ, मैं मान्यवर इतना कहना चाहता हूं कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है। कड़ा कानून बनना चाहिए ताकि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। धन्यवाद। Question number 61, Dr. Sasmit Patra. Honorable Chairman, question 61. Honorable Minister. माननीय सभापति जी, उत्तर सभा पटल पर रख देगा। First supplementary, Dr. Sasmit Patra. माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत स्पष्ट उत्तर रखा है। मेरा पहला सप्लीमेंट्री फसल बीमा योजना को लेके है, क्योंकि ये रिलेटेड है किसानों से। मैं उड़ीसा के संदर्भ में ये सवाल रख रहा हूं। उड़ीसा के किसान, विशेषकर कोस्टल उड़ीसा, वेस्टर्न उड़ीसा और दक्षिण उड़ीसा में ज्यादातर पैडी ग्रो करते हैं, धान ग्रो करते हैं और कई बार विपत्तियों के कारण, नेचुरल कैलामिटीज के कारण उनके फसलों की हानि होती है। फसल बीमा योजना के तहत कई बार ऐसा होता है कि जो फसल बीमा की राशि है उसको मिलने में विलंब होने से किसानों को जो क्षति पहुंचती है, क्रॉप लॉस होता है, उसकी भरपाई करने में उनको दिक्कत आती है। और विशेषकर उड़ीसा में कई किसान हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार क्या कदम उठा रही है। माननीय मंत्री। माननीय सभापति जी, मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई फसल बीमा नीति जो लागू की, उसके बाद में किसानों को एक कवच के रूप में उनको सहायता मिलती है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि आपदा आती है और उस समय किसानों को कोई सहारा नहीं होता। उस समय में आज एक उम्मीद है कि किसानों को फसल बीमा मिले और निश्चित रूप से इसको लेकर भारत सरकार के द्वारा उड़ीसा से लेकर पूरे देश के अंदर सभी किसानों को जो उनका नुकसान हुआ उनको भरपाई मिले, इसके लिए सरकार ने नई फसल बीमा नीति भी बनाई और उसके साथ में हमने उसमें कई सुधार भी किए, जिसके अंदर कि उनको एक पात्र किसान को वो क्लेम मिले। इसके लिए एक तो हमने 3 साल के लिए उसके टेंडर प्रक्रिया भी कर दी, पहले 1 साल की होती थी, और उसके बाद में उसमें नई तकनीक का भी उपयोग हो जिससे कि किसी भी पात्र किसान को वो फसल का क्लेम मिले। इसके लिए एक तो हमने ऐड ऑन योजना जो ऐप बनाया है और उस ऐप के माध्यम से किसान के पास डायरेक्ट किसान के पास में जाकर वो मित्र है वो जाते हैं और वहां जाकर उसका क्लेम बीमा करवाते हैं। और उसके अंदर भी लगभग 1,25,00,000 हेक्टेयर एरिया कवर किया है और लगभग 2.25 लाख किसानों के पास में वो सीधे हम पहुंचे हैं। ये पहली बार आप देख रहे होंगे। और उसके साथ ही एक #YesTech ऐप भी तैयार किया है और उसके साथ ही DG क्लेम मॉड्यूल भी तैयार किया गया ताकि किसानों को क्लेम सही मिल सके DG क्लेम में। और उसके साथ ही विंड्स के द्वारा जो किया जा रहा है और विंड्स के एक स्कीम प्रारंभ की गई है जिसमें स्वचालित मौसम स्टेशन बनाए गए और उसमें मौसम स्टेशन है वो लगभग 1,60,000 जो रेन गेज प्रस्तावित किए हैं गांवों के अंदर ही। और इसके साथ ही लगभग 2500 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भी बनाए। तो ये सारे जो बने अभी तक ये सभी इसीलिए बनाए गए कि ताकि किसान को क्लेम जो है वो वास्तव में मिले, उसकी किसानों के पास जाकर और किसानों का पूरा जो क्लेम हुआ इसको लेकर सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि पात्र किसान है उसको मिले। और निश्चित रूप से मुझे ये बताना है माननीय सदस्यों को कि आगे भी इसके अंदर जो सुधार हो रहे हैं काफी सुधार किए और आगे भी इसमें जैसा संभावना होगी वैसे तकनीक का प्रयोग करके सुधार किया जाए। सेकंड सप्लीमेंट्री, डॉक्टर सस्मित पात्रा। Honorable Chairman, sir,
मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं पहले सवाल के लिए। मेरा दूसरा सवाल नेचुरल डिजास्टर्स, विपत्तियों से संबंधित है और किसानों से संबंधित है। उड़ीसा मान्यवर पिछले 100 सालों में लगभग 99 साइक्लोन्स उड़ीसा को हिट कर चुकी है। अभी हाल ही में मियोंग साइक्लोन आई थी चेन्नई और साउथ को हिट करते हुए। जब ऐसी नेशनल डिजास्टर्स आती है, ऐसी विपत्तियां आती हैं, तो किसानों के कमर टूट जाते हैं, क्योंकि कई कई साल लग जाते हैं उस विपत्ति से उभरने के लिए। विशेषकर उड़ीसा के संदर्भ में अगर आप देखें तो नेचुरल डिजास्टर्स में, चाहे वो फाइलिन कह लीजिए, हुडहुड कह लीजिए, तितली कह लीजिए, कई ऐसी साइक्लोन्स आती हैं जिससे कि किसानों की भरपाई में या उनकी परेशानियों को लाघव करने में समय लगता है। तो विशेषकर जो तटीय क्षेत्र है, जैसे उड़ीसा है, दूसरे राज्य है, उन किसानों के विकास के लिए और कैसे वो उभर सकते हैं और उनकी ओवरऑल जो लॉसेस होते हैं, कॉम्पेंसेशन होते हैं, वो एसडीआरएफ एनडीआरएफ से होता है, मगर उसके अलावा कृषि मंत्रालय कैसे उनको मदद कर सकती है उनके ओवरऑल विकास में और कैसे ये परेशानियों से वो उभर सके। थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति जी, जैसा माननीय सदस्य ने इसका समाधान के लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ फंड का जिक्र किया है, इसके अतिरिक्त भी स्टेट का विषय है कृषि, और स्टेट के अंदर आरकेवीवाई योजना जो हमारी है, उस योजना के माध्यम से स्टेट अगर कोई उसको लेकर अगर कार्य करना चाहता है तो वो उसके जो नॉर्म्स के अनुसार जो है उसमें कर सकता है। और निश्चित रूप से भारत सरकार किसानों की ऐसी समस्याओं को लेकर निश्चित रूप से, जैसा कि किसान की अगर स्कीम भी है, जैसे बजट का भी हमने प्रावधान किया, बढ़ाया है। लगभग 2013 से आज दिन तक जो अभी बजट में प्रावधान है, 2013 में कृषि का जो बजट था वो लगभग 23,000 करोड़ था। अभी कृषि का बजट भी 1,25,000 करोड़ रुपए, लगभग 5.5 गुना वृद्धि कृषि के बजट में की गई है। इसी तरह से किसानों के लिए फसल बीमा की भी योजना है, नेचुरल फार्मिंग पर भी किसान जाए, ऐसी वेराइटियां भी हमने तैयार की है आईसीआर के द्वारा, जो क्लाइमेट के अनुसार उनकी क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटियां तैयार की है, ताकि किसान को अगर ऐसी आपदा आ जाए तो वो बरसात या नुकसान हो जाए तो भी वो फसल खड़ी रहे, उसका नुकसान नहीं हो। तो ऐसी आईसीआर के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं, एडवाइजरी भी जारी की जाती है और निश्चित रूप से किसानों को पहले सूचना मिले, इसके ऊपर भी किया जा रहा है। बाकायदा समय समय पर उनको कैसे जागरूक किया जाए, इसके ऊपर भी सरकार के लगातार प्रयास रहते हैं। और निश्चित रूप से उड़ीसा भी इस जो आपने कहा है, तो उड़ीसा के ऊपर भी यही सेम पूरे जो देश में किया जा रहा है वैसा इसमें भी किया जा रहा है। थर्ड सप्लीमेंट्री, श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल। Through you, I would like to ask very pointed question to Honorable Minister. Why is the number of beneficiaries of PM Kisan Yojana reduced by 67% from 2019 to 2022? Honorable Minister. माननीय सभापति जी, जैसा कि पीएम किसान सम्मान निधि एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की और पहली बार पीएम किसान योजना प्रारंभ हुई, और 2019 के अंदर जो प्रारंभ हुई तो लगभग उसके अंदर किसान सम्मान निधि के तौर पर 3 किस्तों के अंदर, 4 किस्त के अंदर ये पैसा किसान सम्मान निधि का 3 किस्त में किसान के अकाउंट में 6,000 रुपये जाता है। और इसमें जैसा कि माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है कि इसमें सदस्यों की कम होना, मुझे लगता है कि इसके अंदर जो पीएम किसान सम्मान निधि है। Honorable Minister, honorable member is specific that there has been reduction of 60% in the beneficiary list. Respond to that. जी, मैं माननीय सभापति जी, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं कि ये पीएम किसान सम्मान निधि की जो प्रारंभ में जो सदस्य थे, वो पूरे जो सदस्य राज्यसभा राज्य सरकार की ओर से जो डेटा आए थे वो पूरे आए, और उसमें उस समय किसान सम्मान निधि का पैसा उनको रिलीज हुआ। लेकिन उसके बाद में जैसा कि जो पात्र किसान, अपात्र किसान थे, उनको भी पैसा वो मिल गया। उसके बाद में हमने आधार से लिंक किया, उस आधार लिंक की वजह से कुछ नाम कम हुए, और उसके बाद में हमने उसको ई-केवाईसी के माध्यम से जोड़ा ताकि फेस ऑथेंटिकेशन से भी उनका किया गया। तो उसके बाद में जो पात्र किसान है उनकी संख्या है वो आज लगभग जैसा कि 8.12 करोड़ किसान है जो पात्र, और इसमें हम लगातार राज्य सरकारों से ये संपर्क में है कि जो पात्र किसान पीछे रह गए हैं और उनको अगर ऐसे कोई पात्र किसान है और वो वास्तव में वंचित है, तो ई-केवाईसी के माध्यम से
आधार लिंक करके वो नाम तुरंत भारत सरकार को भिजवाए, ताकि हमारे जितने भी किसान हैं जो ऐसे वंचित रहे, उन किसानों को हम किसान सम्मान निधि का पैसा दे सके। तो मेरा आपसे आपके माध्यम से यही कहना है। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने पूछा है कि पहले लाभार्थियों की संख्या ज्यादा थी और माननीय सदस्य ने कहा है कि ये संख्या में गिरावट 67% की आई है। उस पर माननीय सदस्य को आप निमंत्रित कीजिए और उनसे इस विषय पर चर्चा कीजिए। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस योजना के लाभार्थियों की संख्या 2019 से 60% गिरी है। माननीय सभापति जी, इसमें 60% की गिरावट नहीं आई है। 11 करोड़ किसानों तक गया था, अभी 8.8 करोड़ और 12 लाख किसानों को मिल रहा है, तो परसेंटेज इतना नहीं है। लेकिन the honorable minister will invite you to his chamber and then you can come back to the house. Okay sir. मैं अमन Yes. होगा। हमको कैसा मालूम? मैंने तो सोचा था कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहेंगे कि सभापति जी, आपने मंत्री जी से सदस्य के अधिकारों के लिए पूरा काम किया है। नहीं, आपने ऐसा नहीं कहा। नहीं, देखिए साहब, मेरी अब कह दो सर। नहीं, मेरी विनती है कि वो दोनों जाकर एक दूसरे का समाधान निकालने के बजाय तो पूरे सदन को मालूम होना चाहिए कि ये 5 साल में क्यों ये बेनिफिशियरीज की संख्या कम हो गई, उसका कारण क्या है, ये पूछ रहे। तो ये तो आपके पास आंकड़े होना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने आंकड़े दिए हैं, ऐसा नहीं है। और what is alarming from her question is decline of 67%, which prima facie does not appear to be acceptable. Therefore, to find a way out, और उसमें आपका लंबा सार्वजनिक राजनीतिक संसदीय जीवन मेरे सामने है कि इस मामलों का हल निकालने का रास्ता होना चाहिए। तो वो माननीय सदस्य को आमंत्रित करेंगे and then she will come back to the house. Your chairman will find a method to keep the house in loop. आखिर मैं कृषक पुत्र हूं सर, किसान का हित तो मेरे दिल में है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि माननीय सदस्य रजनी अशोकराव पाटिल के दिल में भी किसान के लिए इतनी हमदर्दी है। और मंत्री जी के दिल में कितनी है ये मैंने जमीनी हकीकत पर देखी है। तो नियत सबकी साफ है। विल मूव हेड। Well, you are in the queue. श्रीमती रमीला बहन बेचार भाई 12। माननीय अध्यक्ष श्री, मोदी सरकार सदैव किसानों के लिए काम करती है और माननीय अध्यक्ष श्री, सरकार श्री ने किसानों के डिजिटल सहायक के लिए किसान ई मित्र विकसित किया है। माननीय अध्यक्ष श्री, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ, ये किसान ई मित्र जो विकसित किया है वो किसानों को कैसे मदद करता है और आज तक ऐसे किसानों की ओर से कितनी समस्याएं मिली और वो समस्याओं कैसे प्रकार की थी? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। सभापति जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर और ई मित्र के माध्यम से जिस तरह से काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, इनको किसानों को कैसे अधिक से अधिक से जोड़ा जाए। तो जैसा कि इसको हमने, जैसा कि किसानों की जो भी अगर उसको किसान सम्मान निधि मिले और उसकी समस्या है तो उसके समाधान के लिए हमने पोर्टल विकसित किया है और उस पोर्टल के माध्यम से वो किसान अपने कस्टम हायरिंग सेंटर के CSC के ऊपर जाकर भी वो उसके साथ अपने आप वहां जाकर भी अपने नाम को जुड़वा सकता है
और उसके साथ ही अगर उसकी समस्या है तो उसके लिए वो उसके अंदर KYC के माध्यम से एक किसान 100 किसानों को भी जोड़ सकता है। अधिकारी को भी ये पावर दिया कि वो 500 किसानों को उसके साथ जोड़ सकता है और लगभग इससे 20 लाख किसानों को KYC का लाभ डायरेक्ट इनसे जोड़ा गया है। और मैं इसमें यह भी बताऊं कि अभी तक जो इन्होंने कहा कि किसान ई मित्र, इसको हमने 5 भाषाओं के अंदर बनाया है, जिसमें 5 भाषा के अंदर वो अगर डैशबोर्ड के ऊपर या मोबाइल पे लिखते जाएंगे तो उनको तुरंत उसके ऊपर जवाब मिलता भी जाएगा। और ऐसे लगभग हमने फोन कॉल से वो लगभग 1,55,000 फोन कॉल्स हुए, जिसमें आवाज पर सीधा है लगभग उसमें भी 2 करोड़ से 24 करोड़ से अधिक बार इस पर बातचीत हुई है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर लगातार इस पे प्रयास जारी है और नई नई टेक्नोलॉजी से किसान को ज्यादा से ज्यादा किसान सम्मान निधि का लाभ मिले, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि उससे किसानों की इससे समस्या का समाधान भी लगातार हो रहा है। श्री जयंत चौधरी। धन्यवाद सभापति जी। अभी मंत्री जी ने रजनी जी के सवाल के जवाब में किए थे, उनको रखा गया। तो मेरा सुझाव है कि जो आगे से योजनाएं बने, पहले जो लाभार्थी हैं उनको सुनिश्चित कर लिया जाए, उसके बाद ऐसी योजना बनाई जाए। मैं सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, 5 साल इस योजना को लागू किए अब होने वाले हैं। 5 साल में किसान के खर्चे, किसान की लागत, कृषि में पूंजी निवेश की आवश्यकताएं कई गुना बढ़ चुकी हैं। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब हाल में जहां बनी है, वहां भी इनके मैनिफेस्टो में भी लिखा गया था कि 6,000 रुपए को सप्लीमेंट किया जाएगा राज्य के संसाधनों के द्वारा। तो क्या केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी कि 5 साल बाद अब 6,000 रुपए को बढ़ाया जाए? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। सभापति जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये किसान सम्मान निधि योजना पहली बार लागू की और किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर 6,000 रुपए किसान को DBT के माध्यम से मिलता है, बिना किसी बिचौलिए के मिल रहा है। और मुझे इसमें यह कहना है कि इससे किसानों को निश्चित रूप से पिछले जो किसानों की इनकम में भी इसका इजाफा हुआ है और किसान इस योजना का लाभ लेकर, जैसा कि 4 महीने बाद में उसको इंतजार रहता है कि हमारे 2,000 रुपए किसान के पास आएंगे, तो उससे वो अपनी जो भी आवश्यकता की वस्तु होती है किसान के लिए, चाहे उसको बीज की आवश्यकता है या उसको कोई भी इक्विपमेंट की आवश्यकता है, तो तुरंत उसको इसका लाभ मिलता है। तो मुझे इसमें यही कहना है कि इसमें कई राज्यों ने ऐसे हैं जिन्होंने राज्यों ने अपनी ओर से भी किसान सम्मान निधि के साथ में एड ऑन करके जोड़ा गया है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ ये किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और किसान इसका बेनिफिट ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 62 श्री रामनाथ ठाकुर। प्रश्न संख्या 62। ऑनरेबल मिनिस्टर। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री रामनाथ ठाकुर। सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं, 2020 के पहले, कोरोना के पहले जो ट्रेन कर्पूरी ग्राम में, सोनपुर प्रमंडल के कर्पूरी ग्राम में जो रुकती थी, मिथिला एक्सप्रेस, बाघ एक्सप्रेस, जननायक एक्सप्रेस, टाटा छपरा एक्सप्रेस, वो क्यों नहीं 2022 के बाद रुक रही है? माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, ये जो विषय है ट्रेन के हॉल्ट का, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और थोड़ा टेक्निकल विषय है। इसमें कोई कॉमर्शियल या कोई दूसरा कंसिडरेशन नहीं है। इसको थोड़ा समझने की भी अगर आप अनुमति दे तो 2-3 मिनट लेके थोड़ा विस्तार में बताऊं। माननीय सभापति महोदय, बेसिकली हमें ये रेलवे और हाईवे के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो समझने की जरूरत है। हाईवे में अगर बाय चांस कहीं पर भी कोई रिपेयर मेंटेनेंस का काम आता है तो गाड़ियां जो होती है, चाहे ट्रक हो या कार हो या कोई भी गाड़ी हो, वो आराम से डाइवर्ट होके जा सकती है जो पैच जहाँ पे रिपेयर करना है। ट्रेन में क्या होता है, रेलवे की पटरी स्टील की बनी हुई है जो, उसमें अगर रेगुलरली उसमें जो मेंटेनेंस करनी पड़ती है, उस मेंटेनेंस की जगह
मान लो कोई 12 किलोमीटर का एक सेक्शन है जिसमें ट्रेन की पटरी को रिप्लेस करना है, तो ऐसा तो संभव नहीं है कि ट्रेन जो पीछे से आ रही है वो नीचे जाए, पटरी से उतरे और वापस पटरी पे चढ़ जाए उस 12 किलोमीटर पैच के बाद में। ऐसा तो संभव नहीं है। ट्रेन तो नीचे उतर के वापस डाइवर्ट होके ऊपर नहीं आ सकती। इसलिए दुनिया भर में जितनी भी रेलवेज हैं, जितने भी रेलवे सिस्टम है, उन सब में एक कॉरिडोर ब्लॉक का सिस्टम लगा होता है। यानी 24 घंटे में से 8 घंटे ज्यादातर देशों में, कई देशों में 4 घंटे और कई देशों में 6 घंटे मिनिमम रेलवे के पटरियों को खाली रखते हैं, जिससे कि उसको मेंटेन कर सके। वहां पे मेंटेनेंस की जरूरत होती है। तो जब कॉरिडोर ब्लॉक बनाना होता है, यानी एक कॉरिडोर को 125 किलोमीटर्स के एक कॉरिडोर को आपको खाली रखना पड़ता है मेंटेनेंस के हिसाब से, तब उसमें से जो भी गाड़ी पास हो रही थी उस टाइम में पुराने टाइम टेबल के हिसाब से, उस गाड़ी को वहां पे रोकना संभव नहीं होता है, उसको निकाल देना पड़ता है उस 125 किलोमीटर के। ये प्रक्रिया अगर आप देखें 2014 से पहले, माननीय सभापति जी, बहुत बड़ी संख्या में एक्सीडेंट्स होते थे, 170 के आसपास एवरेज, क्योंकि मेंटेनेंस की बड़ी समस्याएं थी। तो ये बहुत एक कड़ा फैसला लिया गया था IIT बॉम्बे के हेल्प से। उन्होंने बहुत डिटेल स्टडी की थी पूरे देश भर के नेटवर्क की, जिससे कि पूरे देश में कम से कम 3 घंटे के हर एक सेक्शन को रेगुलरली 3-3 घंटे के कॉरिडोर मेंटेनेंस के लिए मिल जाए। उसी प्रक्रिया में कई स्टॉपेजेस रोके गए और यथासंभव टाइम टेबल जैसे जैसे रेलवे की कैपेसिटी बढ़ रही है, यथासंभव नए स्टॉपेजेस भी दिए जा रहे हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्री रामनाथ ठाकुर। सभापति महोदय, माननीय रेल मंत्री की बातों से मैं सहमत नहीं हूं। अभी उन्होंने जो कोशिश कीजिए। उन्होंने जो जवाब दिया है, लिखित जवाब दिया है कि 8 जोड़ी ट्रेनें उस पर जाती है, रुकती है, राजधानी भी जाती है। हमने एक्सप्रेस के बारे में पूछा और आपको बताऊं कि 10 बार मैंने माननीय मंत्री जी को मौखिक रूप से और पत्र के माध्यम से, और जो बात ये बोल रहे हैं, जो अफसर इनको सिखाए हैं वही बात बोल रहे हैं। मैं दूसरा सप्लीमेंट्री पूछता हूं, क्या नहीं, माननीय सदस्य, क्या माननीय मंत्री जी अफसर रह चुके हैं? हाँ, अफसर रह चुके हैं। मैं अफसर के रूप में नहीं जानता हूं, मैं मंत्री के रूप में, राज्यसभा के सदस्य के रूप में जानता हूं, और इनसे मेरा बहुत ही अच्छा संबंध है, बहुत ही अच्छा संबंध है। दूसरा सप्लीमेंट्री मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से मंत्री जी से, क्या 1.5 महीने पहले बेगूसराय जिले में और समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी स्टेशन पर आपने बेगूसराय में 6 जोड़ी ट्रेन रोकने का आदेश दिया है और रुक रही है, और शाहपुर पटोरी स्टेशन पर 3 जोड़ी ट्रेन रुक रही है 1.5 महीना पहले से? क्या कारण है कि कर्पूरी ग्राम में जो ट्रेनें रुकती थी वो नहीं रुक रही है, और नहीं रुकने का कारण जो आपने बताया उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं आपसे सभापति महोदय विशेष अनुरोध के साथ, निवेदन के साथ, प्रार्थना के साथ, आरजू के साथ, विनती के साथ कि जनता को और सरकार को जो लाभ होने वाला है उस लाभ से आप वंचित मत करें, और उस स्टेशन पर आप जो ट्रेन का नाम मैंने लिया है उस ट्रेन को रोकने का आदेश आज करने का कृपा करेंगे। माननीय मंत्री जी, पर सभापति माननीय सदस्य ने बहुत भावुक रूप से, पुरजोर तरीके से, संयम रखते हुए, आपके संबंधों की चर्चा करते हुए बात कही है। मान्यवर सांसद जी, आप बहुत ही मेरे सम्मानीय सांसद जी हैं, और पहले जब इधर बैठते थे काफी अच्छी गपशप भी होती थी, खूब आनंद भी आता था, और जिस तरह की आप पहले बातें सुनाते थे बिहार की राजनीति की, उससे सीखने को भी बहुत मिला। और आपके इन्हीं सब आपके प्रवचनों के कारण ही आज मुझे थोड़ी बहुत राजनीति की समझ आई, इसलिए मैं आपका धन्यवाद भी देता हूँ।
आपका धन्यवाद भी देता हूं और माननीय सांसद महोदय का जो स्पेसिफिक विषय है, मैं माननीय सांसद महोदय को रिक्वेस्ट करूंगा बैठे साथ और जो यथासंभव इसमें हो पाएगा वो करेंगे। उधर चले गए। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री जवाहर सरकार। Sub question. How many halts and railway stations are not covered after COVID? After COVID, you withdrew services from many stations. Now, 3-4 years later, I'm asking specifically which stations and halts are deprived of railway stoppage. That's all. Honorable Minister. As I said, there is absolutely no relation with the COVID of this decision. The entire decision was based purely on the maintenance requirements, purely on safety requirements, and for safety, certain very difficult decisions have to be taken. This is one of those difficult decisions which has been taken. We know this has huge implication in terms of passenger convenience and all, but still this was a very important decision which had to be taken. This has nothing to do with COVID, Honorable Chairman, sir. And overall, practically every week things change as more and more tracks are added. As you would be aware, Honorable Chairman, sir, through you, I would like to let the entire House know, in the last 9 years, close to 21,000 kilometers of new tracks have been added. So once capacity is there, enough more trains can be run. That is the way we are moving in this direction. Modi ji's vision for railway is very big vision, and he is implementing it in a very meticulous way. So as more capacity increases, we can have more stoppages. Shri Rajiv Shukla. श्री राजीव शुक्ला। धन्यवाद चेयरमैन साहब। ये सर बहुत बड़ी समस्या है, आपने देखा हो। कौन सी? कोई ट्रेन शुरू होती है, पहले तय होता है कि ए स्टेशन से जेड स्टेशन तक जाएगी, कहीं नहीं रुकेगी, सुपर फास्ट है, ये है वो है। बाद में धीरे धीरे उसके हाल्ट स्टेशन बढ़ते जाते हैं। अल्टीमेटली वो जो है 20 स्टेशन उसके बीच के रास्ते हो जाते हैं और ट्रेन बेकार हो जाती है। किसी जमाने की तूफान मेल आपको याद है कि आज सबसे ज्यादा खड़खड़िया गाड़ी हो गई है। इसी तरह सुपर फास्ट ट्रेन के साथ भी हो रहा कि पॉलिटिकल प्रेशर में या किस प्रेशर में उनके स्टेशन के जो स्टॉपेज है बढ़ते चले जाते हैं, हाल्ट स्टेशन। मेरा मंत्री से निवेदन है, क्यों ना इस पे एक आप नीति बनाए, एक प्रोविजन बनाए, उस आधार पे सिर्फ ये तय हो। ये जो है कि किसी ने कहा रिक्वेस्ट की, मिनिस्टर की रिक्वेस्ट, एमपी की रिक्वेस्ट, इसकी रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट, आप उसका स्टेशन बढ़ा देते हैं, रुकने के स्टॉपेज, हाल्ट स्टेशन। ये पूरे देश की समस्या है और इसकी वजह से ट्रेनों को जो द्रुत गति से चलना चाहिए, फास्ट स्पीड से, वो नहीं चल पाती और उनको भी शिकायत नहीं होती, रामनाथ जी को भी। अगर इसकी कोई पॉलिसी प्रोविजन हो तो दिक्कत ना है। इसलिए ट्रेनों की आवाजाही, उनके रुकने की पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? माननीय मंत्री, माननीय सभापति महोदय, ट्रेन्स के हॉल्ट की और जो व्यवस्था है, ये पूरी तरह से एक बहुत ही एकदम क्लियरली लेड आउट पॉलिसी और क्लियरली लेड आउट टेक्निकल पैरामीटर्स पे चलती है। जो माननीय सांसद महोदय का जिस तरह से आता है रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार राजीव जी जमीन पे जाएंगे तो रिक्वेस्ट तो आते जाएंगे, लेकिन होता पॉलिसी के हिसाब से। Sir, can I make a small point for Rajiv? My good friend Rajiv, with your permission. Sir, you have problem with your friends. You have problem from your friends. Go ahead. Just two small submissions. एक तो राजीव जी से पूछना चाह रहा हूँ कि लास्ट कब ट्रेन में गए थे वो, और दूसरा सर उनसे मेरा अनुरोध है, बताएं कि उन्होंने तय कर लिया है कि आज के बाद कभी लोकसभा में ना उनको जीतना है ना उनकी पार्टी के किसी व्यक्ति को जीतना है। अगर ऐसा तय कर लिया है तो जरा हमें भी थोड़ा जानकारी दे। I have a problem. 1 second. I have a problem. I can ask the minister to respond to a question of a member. I can't ask the member to reply to a question of another member. मैं 15 एक तो इनके सवाल का जवाब आर गिरिराजन। पहले तो ये कि 15 दिन पहले मैं ट्रेन श्री आर गिरिराजन, या आप क्या Thank you, sir. आपस का मामला है। Thank you, sir. My request is so many electrical motor trains has been dropped from Chennai Central to Chennai Park to
Dindivanam in the time of COVID, because Chennai has developing up to that level, Dindivanam up to Dindivanam, because in between Dindivanam to Chennai Park, SRM college is there. So many times minister has visited there. Apart from that, Melmaruthur, one temple city is there. Lot of colleges there. Therefore, we need continuously electrical motor units operation from Chennai Park to up to Dindivanam. This is my request. Kindly consider the minister. Honorable Minister. Question is very specific about a particular section of the Indian Railways. We can definitely discuss it as and when honorable member decides to come and meet me. Question number 63, Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik. Honorable Minister. रखो Question number, oh, yes, I have. Yes. Again. I got them. I got afraid of them suddenly. The honorable member was not present. Shri Saket Gokhale. Supplementary on question number 63. Sir, first of all, I would like to express gratitude to you because we saw you today protecting a member and actually asking a question to the minister. So I would like to express my heartfelt gratitude to you for the way you protected the member. So through you, my question to the honorable minister is, a lot of states, especially during COVID-19 and even after that, have rejected dal and other grains that have come under the PMGKMY Yojana. So through you, I would like to ask the minister that what were the reasons for states rejecting food grains that have come under this Yojana, and what steps have been taken to ensure that high quality of food is now being supplied to different states under this scheme, sir? Thank you. Honorable Minister. माननीय I don't think there has been any incident of rejection of dal because we don't supply dal under PMGKY. No, there is no such incident that is reported to us that states have rejected the food grains. In fact, most states they are themselves procuring the food grains and distributing it in their states. I think the honorable member may kindly place some specific incident where there is a rejection of dal or whatever food grain is claiming to have been rejected. If at all there is any misdemeanor at the fair price shop level, certainly the state government should investigate that. But no incident of FCI sending any material which has got rejected is currently available with us. If he gives us some specific details, we can respond to it. If there is an instance with the honorable member, he'll share with the leader of the house. Tamil Nadu is one example. What had happened was after food grains were rejected, they went to NAFED, they instituted a committee, and NAFED after that changed the procurement process where out of 100% that is given by millers, 70% is taken and the OTR lower limit was removed, which is why I would request the honorable leader of the house to kindly let the minister whose jurisdiction it is to respond, because he does not seem to be aware of the facts. I strongly rebut what has been said by the honorable member through you, sir. And I would like him to place that on the record on the table of the house, since he's made a very grave allegation against a very reputed organization. Please place the details on the floor of the house. One second. Honorable member, 1 second. Take your seat. Take your seat. 1 second. 1 second. 1 second, honorable member. Please take your seat. Take your seat. Honorable member has put in firm perspective an assertion which has been disputed by the leader of the house. The honorable member may put it on the table of the house. We'll examine it and take it next. Sri Tiruchi Shiva. I take note of both.
and every document which I call upon to be put on the table of the House is seriously examined. Shri Tiruchi Siva. Thank you, Chairman, sir. Sir, keeping in view of the welfare of the beneficiaries of PMGK, the Government of India decided to continue to provide food grants to 81.35 crore beneficiaries with an outlay of 11.8 lakh crores, sir. Very much appreciable. And the whole subsidy is borne by the Government of India. My simple question is, why after all this, in the global hunger index, India ranks 111th out of the 125 countries? Thank you. Sir, while this is not directly related to the question, but I'm happy to share with the honorable member that the Global Hunger Index has not at all spoken about hunger being the cause of any death or there being any people who are hungry in India. In fact, I have been writing from all the states, including the state of Tamil Nadu, that there is no starvation death in their state thanks to the sufficient availability of food grains in the country. Our Annadatas really need to be complimented, and you are a Kisan Putra yourself for the fantastic increase in production in the last 9-10 years. We are one of the few countries in the world where production has gone up significantly, and thanks to the 81.35 crore poor and lower middle class people who get free food grains. The hunger index takes into account certain factors which have been wholly rejected by the government of India. They have certain ways of calculating stunting and malnutrition which have been rejected by the government of India, rejected by India because those pertain to Western standards and not to India. Well, all I can say with confidence, and I'm sure the House will agree, our hunger index for power is perhaps highest in the world. Am I right? Yes, it is there. It seems I am not intelligible. Yes. Dr. Fozia Khan, last supplementary on this question. Sir, the minister just mentioned about stunting and other things. So I would like to ask him, 200 million malnourished people are there in India, which involve factors like poverty, lack of proper nutrients in their food, access to clean water, poor sanitation, etc., sir. Despite the evident link between food insecurity and malnutrition, it has rarely been investigated. I would like to ask the minister, how do schemes like PMGKY address malnourishment in this context? Because he just said that dal we don't distribute. So why can't we include such nutrients? Honorable Minister. Today, PMGKY is possibly the world's largest outlay that has ever been embarked anywhere in the world on free food grains to ensure that no child sleeps hungry and all the poor get free food grains. 81 crore people are benefiting from that, fully funded by the government of India. Whether you want to give dal or other products, the different states are free to decide on their own and have their own schemes. Government of India has had an outlay of 11.8 lakh crores on PMGKY. As regards poverty, 13 crore people have come out of poverty in the 5-year period. The report has just come out recently. I think I would urge the honorable member to introspect what their party, what their government for so many years did that has caused this situation in the country today. Why are we in a situation where we have people who are still malnourished or are not getting adequate nourishment or protein? Is something that a government of which she and her party leaders were a part for over 55 years have to introspect that what did they do for all these years that the country has come to this state of affairs, and how in a short period of 9 years the country has transformed itself so that across the country nowhere there is shortage of food grain, nowhere are people dying of hunger. In any case, the malnutrition statistics are based on parameters which have been rejected by the government.
because they do not apply to the people of India, to the demographic profile of the people of India. Question number 64, Shri Harbhajan Singh. Honorable members, on every question, I get number of supplementary requests. But I, as per practice, can handle only 3. Therefore, and I take them as far as possible serially. But if they all happen from a same political party, I slightly deviate to make it little more representative. Thank you. Shri Harbhajan Singh. Honorable Minister. सभा पटल पर रख दिया गया. Dr. Ami Yaznik. First. Sir, I want to ask a question to the minister that given the situation and the state of electrification in rural areas, which is still a challenge far off rural areas, what steps are being taken by the ministry to see that the farmers at that far end get an uninterrupted power supply so that they can come out with their products and their produce? So where is the question of, where is the data where they can say that there is rural electrification to the farmers? Because the question involves electric tractors. So I had to first ask this question in order to know that electric tractors will come later. What is your question? Yes, so where is the uninterrupted power that is required by the farmers? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने विद्युत की और किसान से बात की है, किसान से संबंधित विद्युत वैसे कृषि राज्य का विषय होता है, लेकिन भारत सरकार की ओर से किसानों को नई से नई टेक्नोलॉजी मिले, चाहे वो सोलर ऊर्जा के माध्यम से हो या बैटरी के सिस्टम से हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. जैसा कि मैं स्पेसिफिक इस क्वेश्चन के अंदर भी कहा गया ट्रैक्टर के विषय पर कि बैटरी से ट्रैक्टर चले या उसको कब परमिशन का विषय है, तो मुझे इसमें ये जरूर कहना है कि हमारी सरकार का ये विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है कि किसानों को नई से नई तकनीकी भी मिले और इलेक्ट्रिक से भी उनको कम उपयोग के साथ हम उसको किसान को सुविधा दे सके. मुझे इसमें आपसे ये बताना है कि जैसा कि किसानों को जिस तरह से आज एक ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना प्रारंभ की हमारी, जिसमें हमारी बहनों को भी उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी गांव के अंदर कैसे पहुंचे और ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज 15,000 हमारी बहनों को ड्रोन के साथ ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन करके वो अपने गांव के अंदर वहां पर करेगी और ड्रोन के अंदर उनको सब्सिडी का भी 80% सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है और लगभग हम इसमें 1261-60 करोड़ रुपए का भी इसमें प्रावधान किया गया है. तो कुल मिलाकर यह कि नई टेक्नोलॉजी भी मिले और गांव के अंदर हम उस सारी समस्याओं का समाधान कैसे करें, इसके ऊपर लगातार सरकार की ओर से किसानों को तकनीकी उपलब्ध करवाए, इसके ऊपर सरकार का प्रयास है. और रही बात इलेक्ट्रिक की, तो उसके लिए भी आपको पता होगा कि आज गांवों के अंदर पहले की क्या स्थिति थी, अभी क्या है. देखो आज दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत हर गांव तक लाइट पहुंचाने का काम किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हमारी सरकार ने किया, गाँवों के अंदर लाइटें पहुंची. वरना पहले ये स्थिति थी कि गाँवों के अंदर लाइट भी नहीं होती थी, बहुत कम गांवों के अंदर लाइटें उपलब्ध होती थी. तो मैं ये कह सकता हूं कि गांवों के अंदर ऊर्जा का भी संचार गांव तक पहुंचे और नई तकनीकी भी पहुंचे, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता में है. डॉक्टर फौजिया खान. Thank you, sir. Sir, considering the challenges in electrifying farm vehicles in India, particularly the issues with charging infrastructure, with durability, with reliability, along with the diverse range of heavy-duty machinery used in agriculture, especially for family farms in developing regions, and given the major farm vehicle manufacturers cater to global markets, making international developments impactful on product offerings, sir, has the ministry developed a strategy to promote the holistic development of electrification initiatives for tractors in the country, sir? Honorable Minister. माननीय सभापति जी, हम पहले कभी दूसरे देशों के अंदर जाते थे तो वहां पर किसानों को अत्याधुनिक यंत्र देखने को मिलते थे,
जैसा कि चाहे ड्रोन हो, चाहे दूसरे एपिशेडर है, रोटावेटर है, ये दूसरे देशों के अंदर जाते तब देखने को मिलते थे। लेकिन हमारी सरकार ने आने के बाद में ऐसे कई प्रयास किए, जिसके माध्यम से मैं कह सकता हूं कि जब 2014 से पहले 10 साल के अंदर जो लगभग उस समय इसके ऊपर जो एक खर्चा हुआ था वो 163 करोड़ रुपए खर्च हुआ था 10 साल में। लेकिन अभी हमने जो खर्च किया इसके ऊपर वो है 6,415 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए हैं। और मैं इसमें यह भी बताऊं कि पहले जो इक्विपमेंट जो मशीनरीज थी, 10 साल का फिगर बता रहा हूं, 10 साल के अंदर 10 लाख मशीनों का वितरण सरकार के द्वारा हुआ था। लेकिन हमने जो इन 10 सालों के अंदर 9 साल के अंदर जो वितरण किया है वो लगभग 35 लाख मशीनों का वितरण किया गया, जो 4 गुना अधिक है वहां उससे। और इसके साथ ही हमने हायरिंग सेंटर 23,472 कस्टम हायरिंग सेंटर खोले हैं। इसी तरह से गांवों के अंदर हाईटेक हब स्थापित करने के लिए 405 हाईटेक हब स्थापित किए हैं। ऐसे ही फार्म मशीनरी बैंक भी 20,000 से अधिक हमने वहां पर गांवों के अंदर पहुंचाई है। और इसके लिए जैसा कि प्रदर्शन है, गांवों के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन करके नए ट्रैक्टर है या नई दूसरी इक्विपमेंट है वो किसान के गांव तक पहुंचे, उनको अत्याधुनिक कैसे पहुंचे, इसके ऊपर लगातार प्रयास करके 70,000 से अधिक डेमोन्स्ट्रेशन भी किए। तो ये मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से सरकार की ओर से नई तकनीकी गांवों के अंदर पहुंचे, नए इक्विपमेंट उपकरण किसानों तक पहुंचे, इसके लिए हमने बजट का भी प्रावधान किया है। और उसी का ये पार्ट है जो पहली बार देश के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी को परमिशन भारत सरकार ने दी है। पहले देश के अंदर परमिशन ही नहीं थी, किसान ड्रोन से पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर का छिड़काव कर ही नहीं सकता था, इसकी अनुमति नहीं थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि देश के अंदर ड्रोन की स्वीकृति हमारे देश के अंदर किसानों को दी, और आज वो ड्रोन का उपयोग किसान, देश के किसान है वो करेगा। जब कभी विदेश में जाता था तब ये देखने को मिलता था, अब हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है सरकार के द्वारा। श्री गुलाम अली। थैंक यू चेयरमैन सर। जम्मू कश्मीर भी इस हाउस से बहुत कुछ चाहता है। शुक्रिया, आपने हमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के लिए टाइम दिया। सभी जम्मू कश्मीर में पहले अमन नहीं था, अब माननीय नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में वहां अमन आया है। और अब अवाम के जो मसले हैं कैलेंडर के बजाय खेत के हैं। इस तरह के जम्मू और कश्मीर का जो रोड है वो अक्सर बंद रहता है, पर कश्मीर का जो सेब उगाने वाला है, जहां जो बाकी अनाज के वैसे तो सरकार ने बहुत कुछ करा है, जीआई टैक्स दिए हैं, राजमा को दिया है, बासमती को दिया है, कश्मीर के केसर के उसको, और बहुत सारी पंप्स लगाए हैं। बहुत हम आपका प्रश्न, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फ्रूट जो है उनकी स्टोरेज के लिए, जहाँ कश्मीर में अनाज स्टोरेज के लिए कोई सरकार का ऐसा प्लान है कि स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए नौजवानों को वो बड़े बड़े गोदाम बनाए स्टोरेज के लिए, डीप फ्रीजर बड़े बड़े, ऐसा कोई प्लान है जहाँ कुछ बनाए हैं? थैंक यू। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, किसानों के जो भी समस्या है, चाहे उसके स्टोरेज की समस्या है या उनके अन्य प्रकार की समस्या है, तो उनके लिए भारत सरकार ने स्टोरेज के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया है। MIDH स्कीम के अंदर भी इसका प्रावधान है, जिसमें वो अगर गांव के अंदर कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहता है या जहां भी वो बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये प्रावधान है कि उसमें 2 करोड़ रुपए तक का अगर कोई किसान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस या सॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट भी अगर गांव में लगाना चाहता है तो उसमें 2 करोड़ का प्रावधान है। और उसमें 3% ब्याज की छूट का भी प्रावधान किया गया है, ताकि और उसमें बिना कोई कोलेटरल के उसको पैसा किसान को मिलता है, जिसमें कोई प्रकार का उसको डॉक्यूमेंट्स गिरवी नहीं रखना पड़ता। और इसके साथ ही उसके अंदर सब्सिडी का भी प्रावधान है। वो MIDS की स्कीम जो है उसमें 40% की सब्सिडी है या 35% की जो सब्सिडी है, और उसके अंदर भी अगर उससे लेना चाहता है तो दोनों को क्लब भी किया गया है, उस स्कीम से सब्सिडी ले सकता है और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से वो
उससे ऋण भी ले सकता है। तो ये दोनों को क्लब करके बनाएगा, जिसका पूरे देश के अंदर भी लाभ हो रहा है। और निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के अंदर भी ऐसे कई प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं, जिसमें आपके केसर सैफरॉन का भी बड़ा एक पार्क वहां पर लगा है। और सेब के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन का आपने जिक्र किया, तो हमने किसान रेल के माध्यम से भी इस पूरे देश के अंदर किसान रेलें भी चलाई, ताकि हम उसको अधिक से अधिक लाभ दे सके। तो इसके लिए लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। Question number 65, Sri Prabhakar Reddy, Vemi Reddy. Honorable Minister. उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। Anil Prasad Hegde. आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या यह बात सच है कि भारत का सीड मार्केट में जो बीटी कॉटन टेक्नोलॉजी उपलब्ध है वह पिंक बोलवर्म के लिए रेसिस्टेंट है, और मॉन्सेंटो बेयर जैसे बीटी कॉटन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर बीज कंपनियां पिंक बोलवर्म इन्फेस्टेशन के कारण किसानों को हुई नुकसान का भरपाई करने किसानों को कितना पैसा देकर कंपेंसेट किया, और कौन कौन सा प्रदेश सरकारों ने किसानों को इस बात के लिए कंपेंसेट किया? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, पिंक बॉलवर्म की जो बात माननीय सदस्य ने की है, इसके लिए हमने सबसे पहले तो ये प्रयास किया है कि उसके अंदर नई वैरायटियां भी हमने तैयार की है। आईसीआर लगातार इसमें प्रयास करके कई वैरायटियां भी तैयार की है। और उसके बाद में जो इन्होंने सवाल का जो प्रश्न पूछा है कि उसकी भविष्य में किस तरह से इसका समाधान भी हो, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इस सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए, क्योंकि ये पिंक बॉलवर्म में जिसकी वजह ये है कि लास्ट के अंदर जब बरसात हो, जुलाई के अंदर जब बरसात भी आती है उसी समय ये आता है। इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो उसके अंदर रहती है लगभग 4 महीने, और ये 3-3.5 महीने रहती है और 4 महीने होती है। तो इसलिए इसकी समस्या ये सामने आती है, वो लास्ट में आती है। लेकिन इसके लिए हमने वैरायटियां हैं वो बिल्कुल आईसीआर की तरफ से लगातार प्रयास करके की जा रही है, तैयार। Sri V. Vijay Sai Reddy. Sir, thank you very much, Chairman. Sir, this PB Knot technology, which is being tested in Kurnool, district of Andhra Pradesh, and which is tested to effectively kill pink bollworm, whether the government of India have got the plans to plan of action to provide, and if at all there are plans to implement to distribute it, then the honorable minister may provide the details. Honorable Minister. सभापति जी, इसके अंदर मैंने जैसा पहले कहा कि कुछ तो हमने वैरायटियां तैयार की है, और उसके साथ ही किसानों को एडवाइजरी भी हम जारी करते हैं। और इसी का परिणाम है कि एडवाइजरी जारी करके और उनको बताया भी जाता है, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो 2017-18 के अंदर जो थे लगभग 30% ये पिंक बॉलवर्म की बीमारी की वजह से फसल का नुकसान होता था, जो अब लगभग घटकर सिर्फ 10% रह गया है। यानी कि 30% हमने कटौती इसकी माध्यम से की है कि हमारे जो किसान साइंटिस्ट है वो वहां पर जाकर डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं, और जो एडवाइजरी किसान जो हमारे साइंटिस्ट जारी करते हैं उसके अनुसार अगर किसान उसका सीड का जो फर्टिलाइजर का छिड़काव समय पर अगर करते हैं तो उसमें किसान का बचाव जरूर होता है। और ये सारी जानकारियां देने की वजह से 20% की कमी आई है। आगे हमारा लगातार ये प्रयास है कि इसमें भी कटौती आए, लेकिन क्या है कि ये कोई भी अगर पौधा है तो उसमें बीमारी तो स्वतः कहीं न कहीं से आती है, लेकिन हमारा यही प्रयास रहता है कि उसकी कैसे उसका समाधान हो। तो इसके लिए निश्चित रूप से वैरायटियां भी है, और जो इसका पेस्टिसाइड की है वो भी नई नई तरीके से लाके उनको समाधान करें। इसके ऊपर सरकार के लगातार कार्य चालू है। Question number 66, Sri Shakti Singh Gohil, not present. Honorable Minister. Sri Biplab Kumar Dev. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूं। जो
रेलवे ओवरब्रिज का जो प्रस्ताव त्रिपुरा सरकार की तरफ से दिया गया था, उसमें क्या कार्रवाई हुई और नहीं हुई तो इसलिए नहीं हुई। ऐसे में ये प्रश्न उसके थोड़ा सा दूर है। मैं मंत्री जी से थोड़ा आश्वासन चाहता हूँ। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन सर, रेलवे के जो फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस हैं, उसमें जिस तरह से पिछले 9.5 वर्षों में काम हुआ है, वो काम एक हिस्टोरिक काम है। अगर हम 2004 से 2014 का पीरियड देखें तो 2004 से 2014 के बीच में कुल मिला के 4148 फ्लाईओवर और अंडरपासेस बने थे। और 2014 से 2023 का जो पीरियड है, इसमें देखें तो 4000 पुराना जो था, उसके कंपैरिजन में माननीय सभापति महोदय 10,867 यानी करीब 2.5 गुना ज्यादा फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बने। फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस को बनाने के लिए कई तरह के रिफॉर्म्स भी किए गए, एक्स्ट्रा फंड सैंक्शन किए गए, करीब 80 के आसपास स्टैंडर्ड अलाइनमेंट्स बनाए गए, जिससे कि 1 लाइन हो, 2 लाइन हो, 3 लाइन हो, 4 लाइन हो, 90 डिग्री हो, 85 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, हर तरह के अलाइनमेंट के लिए स्टैंडर्ड डिजाइन्स और स्टैंडर्ड ड्राइंग्स बनी है, जिसके कारण आज प्रैक्टिकली बहुत ही कम टाइम में सारे अप्रूवल्स हो जाते हैं। और इसके अलावा जहां पर भी लेवल क्रॉसिंग गेट है और लेवल क्रॉसिंग गेट के बाहर भी जहां प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को लेते हुए भी रेलवे का जो प्रशासन है वो उसमें फैसले करते हैं। माननीय सांसद महोदय ने जो त्रिपुरा के विषय में प्रश्न रखा, मैं माननीय सांसद महोदय को रिक्वेस्ट करूंगा, इनवाइट करूंगा कि आके बैठे और जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है उस पर डिस्कस करें। He has missed the bus. Dr. John Britas. Sir, though my question is not directly linked to the original question, since the Honorable Minister is very ebullient and erudite, and also since he spoke about the facilities being extended to the passengers, I would ask a specific question with your indulgence, sir, that since he is vocal about the facilities to the passengers, there are constraints and difficulties that are heaped on the passengers because of discontinuation of the concessions for the senior citizens. And since there is a premium tatkal which has been brought in to fleece the passengers, since conversion of the sleeper and general compartments to AC, so will he review his stand? And also through your good officer, I will extend all my best wishes for his future endeavors. Honorable Chairman Sir. Honorable Minister. Honorable Chairman Sir. First of all, the Honorable very, very erudite member and very erudite member and very and senior most member. There may be a caveat from the chair. Yes, sir. So, not on your intellect, on its direction only. Go ahead. So, honorable member could not ask a question. He has made some comments which are very misleading comments, and I fully respect all the points that he has made. If he has any specific questions which is related to the particular question right now being discussed, definitely he is most welcome to come and discuss any particular ROB or RUB, flyover or underpass in Kerala or his area, so that we can discuss and find a solution to it. Before that, he has missed the bus but not plane. Okay, 1 second. Sir, now this is the second instance. No, but he will not have enough time. Second instance in one day. 30 seconds. That a member shoots and scoots. This is the second instance. First I had the case of Dal. Now we have the case. So this, what will be the, I want a ruling, what will happen to a member who makes false allegations or just sensationalizes an issue to try and draw attention to which is something which is not factual.
If found so, what action will be taken against such a member? Well, Honorable Minister. Sir, Honorable Chairman, Honorable sir, Minister. this is a matter of great importance. This is matter of great importance. If any honorable member, in the garb of asking a question, is plainly making allegations which are baseless, absolutely false, have absolutely no direction, then what should be the treatment? What should be punishment to that particular honorable member? Let me tell you, Honorable Chairman. and let me take the House in confidence. 1 second. No. I look into all aspects. Honorable members. Yes. 1 second. Mr. Shakti Singh Goyal. सर मेरा आज सिर्फ छोटा सा सवाल आपके जरिए यही है कि ये ब्रिज काफी लंबे अरसे से बन रहा है, उसकी टाइम लिमिट क्या थी और अभी तक खत्म नहीं किया है आरएनबी डिपार्टमेंट ने, Honorable तो क्या Minister. पेनल्टी? Honorable Minister. सर, इस ब्रिज के अप्रोच रोड पे काम चल रहा है, अभी गर्डर इसका फैब्रिकेशन हो रहा है, इसका काम बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत जल्दी ये कंप्लीट भी हो जाएगा। इसमें कुछ शुरू में दिक्कतें आई शक्ति थी। सिंह जी जानना चाहते हैं कि आप शक्ति का उपयोग कर गति शक्ति का उपयोग कर ये कब तक पूरा कर देंगे, यही जानना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी कर देंगे, जल्दी से जल्दी। ये 3-4 साल से ब्रिज का काम चल रहा है। The House will meet at 2 p.m. today. Act. A bill passed by both houses of Parliament and assented to by the President. Adjournment of the sitting of the House. Termination of the sitting of the House, which meets again at the same time appointed for the next sitting. Adjournment sine die. Termination of a sitting of the House without any definite date being fixed for the next sitting. Expunction. Deletion of words, phrases or expressions from the proceedings or records of Rajya Sabha by an order of the chairman for being defamatory or indecent or unparliamentary or undignified. Rule 380 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha gives the Speaker the discretion to expunge any words or expressions used in debate that are considered defamatory, indecent, unparliamentary or undignified. Maiden speech. First speech of a member in the House after election/nomination to Rajya Sabha or Lok Sabha.
भारत में स्टार्टअप की दुनिया ही बदल चुकी है। The special session of Parliament commenced with a very important message from Chairman of Rajya Sabha. Honorable members, use of wit, humor, sarcasm, and even acerbic comments inside Parliament are important, inalienable facet of a vigorous democracy. These days, we don't get to hear such light-hearted exchanges. Hopefully, we'll see the revival of wit, humor, and scholarly debates. Lighter moments were witnessed during the special session as Chairman sought to use laughter as the best medicine in the House. If you want to address the chair, you can gentlemanly rise and make your point. Not in a cozy chair like this. One second. No. Honorable, one second. Leader of the opposition. Honorable leader of the opposition. और उसके पहले मैं खड़गे जी आपसे एक बात कहूंगा कि जो मैंने विट ह्यूमर की बात की है उसमें आप पर लागू नहीं है। आपने विट भी दिखाया है, ह्यूमर भी दिखाया है, सरकाज़म भी दिखाया है। वो बात मैंने बातों के लिए कही थी। मैं ये सोच के आया था क्योंकि दौड़ते दौड़ते रात के 1:30 बजे यहाँ पर पहुँचा। मैं ये समझ के आया था आज का दिन बहुत अच्छा है और हमारे चेयरमैन साहब गुस्से में नहीं रहेंगे और किसको डराएंगे नहीं और बड़े प्रेम के साथ सबको लेकर चलेंगे, ये उम्मीद से मैं आया था। यहाँ आते ही एकदम आपने गुस्सा जाहिर किया, उन्होंने रोना, तो ये हो रहा है। It is 261st session, special session. Then came the much-awaited historic move of shifting the entire parliamentary system from Samvidhan Sadan to the Parliament House of India.
माननीय सदस्यगण, आज हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जब हम संसद के नए भवन में लोकसभा की पहली बैठक आरंभ कर रहे हैं। Parliament House of India. This iconic building is a cradle of empowerment, igniting dreams and nurturing them into reality. The treasured and iconic legislative debates in this temple of democracy are replete with wit and humor. Humor is an enlivening force capable of transforming a tense and turbulent atmosphere into an amiable one. It brightens life and instills in it the spirit of harmony and goodwill. Humor is indispensable, intangible, and forms the very texture of our lives. Hello and welcome, viewers. You're watching this special presentation of Sunset TV, Humor in the House. I have packed all the fascinating and captivating moments for you of wit and humor of Parliament House of India. So come along. I'm here. I am always looking at you. Yes. But my difficulty is that And when you look at, whenever you look at me, I smile at you. Then me. No, whenever you look at me, I smile at you. Good. Sir, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेगा. Yes, thank you. Jairam, now you have made a reflection. Let him react. Look, here. And before that, Jairam was on right track. Jairam, you were on right track. But when I took the seat, you got into political. What is this? From science, you traveled to politics. Sir, I had got up in between also. Unfortunately, Jairam thought, Honorable Chairman, sir. सर हमारा पुराना रिश्ता है सर, हमारा पुराना रिश्ता और ये बड़े इन्होंने कुछ साल पहले आइंस्टाइन और न्यूटन को कंफ्यूज भी कर दिया था। पुराना उसको रिश्ता याद नहीं दिलाऊंगा पुराना रिश्ता पर आज उनसे भाषण सुनना पड़ा, प्रवचन सुनना पड़ा। पुराना हमारे रिश्ता स्पेस प्रोग्राम का क्या उपलब्धियां हैं। पुराना रिश्ता और पुराना घाव सोचा मीठा दर्द देता है। But at the end of the day, I'm sure my honorable colleague and friend Jairam will also appreciate that people run many races. There are marathons run, there are sprints run, there are 100 meters, 200 meters, 42 kilometers, all sorts of races. But ultimately, one must also acknowledge that it's the Your turn will grit come. and determination that makes the winner win. But on the other point where he made a personal comment on me, well, I'm sure everybody is human and everybody can make mistakes. Honorable members. I may not be as infallible as Mr. Jairam Ramesh. He's of course infallible. Please. He has never made any mistakes in life. I very openly and in public acknowledge I made a mistake at that point of time in the rush of speaking. But I have not made the kind of colossal mistakes that my friend Jairam Ramesh has done. So in the age of figures, statistics and evidence, I can't say I'm saying so, that's I'm true. Or anybody else says so. And it's also gone are the days when I would say I'm more experienced and wiser than you. Or I'm more grey haired. Today... Sir, I don't see grey hair. Sorry, sir. I see grey material, but grey hair is not visible. Sir, all kinds of colors are available in the market today. Sir, with you, person like you, inspiring chairman, I think it motivates everybody to use the kind of color he or she wants. For grey hair, you can look to Jairam Ramesh. Complete grey hair. I can share some with him, sir.
Please. But he has more grey matter than me, sir. I think that is the sense of the house. No, I think there is a sense of acceptance. I'm glad. About 3 decades ago, I was in Rajya Sabha as a junior minister. A very distinguished member was making a scholarly address at Jaramir. At that point of time, there was entry of another member. It is in the context of leader of the house saying, I fully agree with him. I'm on that. So when that member entered, the speaker got worried that that member will unsettle him. So immediately says, even my very good learned friend agrees with me, so that he doesn't say otherwise. And came the swift comment, fools never differ. That was a comment. No, I said you have to understand, sir. I said it with apologetic mode. That if these two have agreed, we have to see in several perspectives. ये आखिर में बोलने के नुकसान बहुत है. बोलने को कुछ बचा ही नहीं. मैम, इतने हिस्सों में बट गया मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं. आप तो समय मत गिनवाइए, ये तो गिनवाते ही हैं. सर, I hope this is not cosmetic. This parampara will be carried on and remain. नहीं तो आपको ये हाउस की महिला है सब प्लास्टिक सर्जन के. I know their firepower. I know your firepower. सर, आपकी कुर्सी बहुत मजेदार. वहां बैठो तो वो झूले की तरह आगे पीछे होता रहता है. So now I know why you keep coming back and sitting here for so long. This is ये 7-star होटल में अगर कोई अच्छी चीज है तो ये व्हील लाभ चेयर जो है बहुत बढ़िया. आप मानते हैं ना सर? आप मानते हैं? मैं तो बीच में हूँ. तब तो दोनों आपको परेशान करेंगे. We saw hilarious exchanges as Parliament hailed the success of Chandrayaan 3. Professor, on a point of fact, Honorable Prime Minister is the Cabinet Minister for this department. That I know. I am his student. A student can always put across a situation. ये आपने बहुत ठीक कहा. When our first Prime Minister, a giant of a person, तब कहा गया था, nothing grows under the banyan tree. It is heartening to note कि यहाँ banyan tree के नीचे आप इन लोगों से क्या कहना चाहते हो? डॉक्टर जितेंद्र भी हैं. Please go ahead. उसके नीचे एक भी नहीं परफेक्ट. हमारा जीरो करो टाइम जीरो. ये घड़ी वाले जीरो करो तो ये मुश्किल हो जाएगा. प्रोफेसर साहब, अब आप राजनीति में जा रहे हो. अब आप हमें बीच में डिस्टर्ब मत करो. और मैं आज बोलूंगा 5-6 मिनट. बीच में घंटी मत बजाइए. ओके. तो लाठीचार्ज में मेरा पैर टूट गया. आज ये सही चल रहा है. राज्यसभा में आने के लिए ही कर रहा था. तो मैंने टिकट क्यों दिया आपने? टिकट क्यों दिया आपने? बोले इसकी जाति का कोई बड़ा आदमी नहीं था, देना था, मजबूरी में लाना पड़ा. मैं जानता हूँ बहुत फ्रॉड था. तो करवा चौथ पे महिलाएं चंद्रमा को बहुत खूबसूरती का वो माना जाता था. लड़की का नाम है शशि. उसने कहा साहब चेहरा इसका बहुत खराब है चंद्रमा का. हमारा नाम तो शशि मान चंद्रमा. कोई शशि प्रभा है, कोई चंद्र प्रभा है. और तमाम आदमियों के नामों के पीछे चंद्र लगा हुआ. सुभाष चंद्र, मानिक चंद्र, तिलक चंद्र, फला चंद्र, चंद्रमा से तो लगा हुआ. अब ये है कि जाने अनंत काल से हम लोग चंद्रमा को बहुत खूबसूरत मानते रहे. इसलिए हम तो अपने वैज्ञानिकों को कहेंगे कि उनकी बदसूरत फोटो मत भेजिए, रिसर्च करते रहिए. लोगों
कांग्रेस के बड़े नेता है रमेश जयराम। कांग्रेस के बड़े नेता है रमेश जयराम, लेकिन सभी का आपने नाम लिया, लेकिन आपने नहीं लिया नरेंद्र मोदी जी का नाम। आज के बहुत ही सुंदर है शाम, आज के बहुत ही सुंदर है शाम, अब तो नरेंद्र मोदी जी को याद करो रमेश जयराम। As New India embraced new Parliament House, humor and wit became more instrumental in decision and lawmaking, a reflection of which we saw during the passage of Nari Shakti Vandan Adhiniyam. माननीय अध्यक्ष जी, मैं अधीर रंजन जी को इतना पूछना चाहता हूँ, क्या महिलाओं की चिंता सिर्फ महिलाएं ही करेगी, पुरुष नहीं कर सकते हैं? किस प्रकार के समाज की आप रचना चाहते हैं भाई? महिलाओं की चिंता, महिलाओं का हित, महिलाओं से आगे बढ़कर भाइयों ने सोचना चाहिए। यही इस देश की परंपरा है। महिलाओं के बारे में सोचने का अधिकार सभी को है। वो जाना है, डरिए मत। अरे भाई डरो मत। अब रिसर्च ये बताती है कि women are more accessible than men as a public representative. अब ये रिसर्च बताती है कि कलेक्टिवली नशा के खिलाफ महिलाओं ने आवाज उठाई। अब ये बताती है कि the corruption level is less where there are women representatives। यह भी बात समझ गई। मैं पुरुषों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, इसको अन्यथा ना लीजिए। चारों तरफ देखते हैं तो जब नई नई पंचायत व्यवस्था आई थी और गांव में जाता था तो पूछता था कि आप कौन है? मीटिंग में आते थे, कहते थे मैं सरपंच पति, मैं प्रधान पति, मैं जिला प्रमुख पति। ये कल्चर चालू हुआ था, वो कल्चर अब खत्म हो गया है। And that you can see all around. Yes. कांटों से कीलित पथ पर Poems and shloks were also used to convey a subtle message. Let's enjoy these oratorical flourishes. तुम सृष्टि की आधारशिला, तुम सृष्टि की आधारशिला, तुमसे मानव को प्राण मिला। संगीत तुम्हारा कण कण में, तुमने जीवन में रंग भरा। तुम माँ भी हो और बेटी भी, तुम बहन और अर्धांगनी, तुम प्रेम भी हो और शक्ति भी, तुमसे ही जीवन पूर्ण हुआ। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम समस्तिका मम आत्मा सर्वदेहेषु प्रदो विष्णु उपस्वाका। मतलब क्या है? आत्मा हर्षित मंत्रेधि ध्रुव स्तिष्ठा विचाचली विशरत्वा सर्वा वांछन्तु मातत्वध राष्ट्रमदि भ्रशत। अर्थात हे राष्ट्र के अधिपति, मैं आपको चुनकर लाया हूँ। आप सभा के अंदर स्थिरता बनाए रखें। सारी प्रजा आपको चाहेगी और आपके द्वारा राज्य का पतन भी नहीं होगा। वो परख रहे हैं तूफानों में कितनी ताकत है, वो देख रहे हैं आंधियों की कितनी आहट है, पर मन में संकल्पों की राहत है। कांटों से कीलित पथ पर कदमों की छाप उकेरी है। हाथों को वज्र बनाकर अंधियारों में दीप जलाती वह एक जान अकेली है, वह एक जान अकेली है। ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। ভারত will once again reclaim her seat in the world stage। ভারতবর্ষের সূর্যের এক নাম, আমরা রয়েছি সেই সূর্যের দেশে। ए रोग युधिष्ठिर कौन है यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग भी, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम भी। कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य, तो फिर एक बार सारे भारत में गूंजे उठे हर हर बम बम का फिर महोत्सव। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई।
ভারত আমার ভারতবর্ষ, স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, তোমাতে আমরা লোভিয়া জন্ম, ধন্য হয়েছি ধন্য গো, কিরিট ধারিণী তৃষার সিংহ সবুজে সাজানো তোমার দেশ, তোমার উপমা তুমি তোমার রূপের নাহি তো শেষ। সগন গহন তমসা সহসা নেমে আসি যদি আকাশে তোর, হাতে হাত রেখে মিলি একসাথে আমরা আনিব নতুন ভোর। শক্তি দায়নি দাও মা শক্তি, ঘুচাও দীনতা ভীরু আবেশ, আধার জননী ভয় কি জননী, আমরা বাঁচাবো এ মহাদেশ। রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ বীর সুভাষের মহান দেশ, নাহি তো ভাবনা করি না চিন্তা, হৃদয়ে নাহি তো ভয়ের দেশ। अभी चिराग सरे राह को कुछ खबर ही नहीं, अभी चिराग सरे राह को कुछ खबर ही नहीं, अभी गिरानी शब्द में कमी नहीं आई, अभी गिरानी शब्द में कमी नहीं आई, निजात की दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि मंजिल अभी नहीं आई। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा, होना ना होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा, हम हैं हम रहेंगे, ये भ्रम सदा पलता रहेगा। Well, viewers, I'll leave you with that healthy dose of laughter. With camera person D.K. Pandey and camera assistant Hari, I'm Kriti Mishra signing off for Sunset Television. भारतीय संविधान में कर्तव्यों को शामिल करने का मूल विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। वर्ष 1976 में ये मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किए गए। इन्हें संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को एक निरंतर अनुस्मारक यानी कि रिमाइंडर के रूप में ये बताना है कि संविधान ने विशेष रूप से उन्हें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन नागरिकों को लोकतांत्रिक आचरण और लोकतांत्रिक व्यवहार के बुनियादी मानदंडों का पालन करने की भी आवश्यकता है। आइए आपको बताते हैं मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल 7वां कर्तव्य क्या है। 7वां कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं। उनकी रक्षा और संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। असम के जोरहाट जिले के रहने वाले जादव पायेंग ने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अकेले अपने दम पर 1360 एकड़ का जंगल खड़ा कर दिया। वर्ष 2015 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुके फॉरेस्ट मैन जादव पायेंग इस कर्तव्य के निर्वहन के सबसे बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने न सिर्फ खुद इस कर्तव्य को पूरा किया है, बल्कि लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित भी किया। प्रकृति के प्रति ये उत्तरदायित्व, ये कर्तव्य भारतीय सदियों से निभाते आ रहे हैं। राजस्थान के सूखे से निपटने के लिए वर्षा जल संचयन के लिए बने तालाब और बावड़ियां इन्हीं का उदाहरण है। बनवारी वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई से बने ये सैकड़ों तालाब लाखों लोगों की प्यास इसी प्रकार बुझाते थे। प्रधानमंत्री लगातार पर्यावरण के प्रति अपने इस कर्तव्य की चर्चा करते रहते हैं। अपने मानसिक कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से भी वे पर्यावरण को बचाने का संदेश प्रेषित करते रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा ने हमें प्रकृति के साथ संघर्ष करना नहीं सिखाया है। हमें प्रकृति के साथ सद्भाव से रहना है, प्रकृति के साथ जुड़ करके रहना है। महात्मा गांधी ने तो जीवन भर हर कदम इस बात की वकालत की थी। जब आज भारत क्लाइमेट जस्टिस की बात करता है, जब भारत ने COP21 और पेरिस समझौते में प्रमुख भूमिका निभाई, जब हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से पूरी दुनिया को एकजुट किया, तो इन सब के मूल में
महात्मा गांधी के उस सपने को पूरा करने का एक भाव था। हम सब इस बारे में सोचें कि हम अपने प्लेनेट को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, क्या इनोवेटिव कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों की तरह ही मौलिक कर्तव्यों को लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जितने आवश्यक मौलिक अधिकार होते हैं, उतने ही अहम होते हैं मौलिक कर्तव्य। देश के नागरिकों से इस बात की उम्मीद की जाती है कि वे अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करें। +1,000 gigawatts renewable energy potential in India. As of July 2023, renewable energy sources in India have a combined installed capacity of 179.32 gigawatts. India is the world's third largest producer of renewable energy, fourth in wind power capacity, and fourth in solar power capacity. India aims to produce 5 million tons of green hydrogen by 2030. India has already achieved its target of 40% installed electric capacity from non-fossil fuels. UN Secretary General Antonio Guterres has warned the world that humanity is on the highway to climate hell with foot on accelerator. Listen in. Humanity has a choice: cooperate or perish. It is either a climate solidarity pact or a collective suicide pact. We are in the fight of our lives and we are losing. India is emerging as a global powerhouse in the renewable energy sector and is set to achieve net zero emissions by 2070. India's announcement that it aims to reach net zero emissions by 2070 is a hugely significant moment for the global fight against climate change. We believe that an ounce of practice is worth more than a ton of preaching. हम भारत में के फ्यूल मिक्स में नॉन फॉसिल फ्यूल की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। Hello and a very warm welcome viewers. You're watching this special presentation of Sunset TV on making India a manufacturing powerhouse, and today our focus is on the renewable energy sector. In this edition, we've packed everything for you on how India is emerging as a global powerhouse in the renewable energy sector, voices that matter, stakeholder versions, and of course, a visit to the manufacturing unit. In fact, right now, we're at one of the MSME units producing solar components. So come along with me on this exciting journey. With a population of around 1.4 billion, India has a massive demand for energy to fuel its rapidly growing economy. From a power deficit nation at the time of independence, the efforts to make India energy independent have continued for over 7 decades. Today, we are a power surplus nation with a total installed electricity capacity of over 4 lakh megawatts. International Energy Agency has called it the largest ever expansion of access in the history of mankind. Largest ever expansion of electricity access anywhere in the world in history. No country has connected so many households in such a short period of time. India has made impressive strides in the renewable energy sector, positioning itself as a front-runner in the global renewable energy market. Thanks to central government policies and initiatives
technological advancements, and significant foreign investments, India has witnessed remarkable growth in the renewable energy capacity. The scale of transformation in India is stunning. Its economic growth has been among the highest in the world, lifting millions of people out of poverty. Every year, India adds a city the size of London to its urban population, involving vast construction of new buildings, factories, and transportation networks. Coal and oil have so far served as bedrocks of India's industrial growth and modernization, giving a rising number of Indian people access to modern energy services. This includes adding new electricity connections for over 50 million citizens each year over the past decade. Despite the fact that nation consists of over 17% of world population, it only accounts for about 5% of global emissions. India's sheer size and its huge scope for growth means that its energy demand is set to grow by more than that of any other country in the coming decades. In a pathway to net zero emissions by 2070, India estimates that most of the growth in energy demand in this decade would already have to be met with low carbon energy sources. Having understood the importance of this crucial sector in the years following the signing of the Paris Agreement, the renewable energy sector was one of the critical sectors identified under the Make in India program, which was launched in 2014. With its focus on a zero defect and zero effect policy, there was a need for the development of the sustained long-term capacity of the renewable sector while ensuring zero effect through reducing greenhouse gas emissions by increasing dependence on clean and green technologies. Private sector is driving the renewable energy wave in India. The phenomenal growth of manufacturing industry in our country is a testimony of the fact that Make in India is just not a patriotic slogan. It has been fully imbibed by the consumers and supported by the industry. The growth in manufacturing sector is not only limited to one or two places, but it is all across. For example, in the renewable industry, till around a decade back, as well as module manufacturing is concerned, we have a capacity of even less than 10 gigawatt. And by 2026, we're looking forward to add at least 100 gigawatt of module manufacturing capacity. We want to lead by example and leave behind a cleaner, sustainable planet for our future generations. That is the mission that we at Renew Power are embarked upon. India has been aggressively pushing towards a more sustainable future by investing heavily in renewable energy sources, with solar energy at the forefront of its efforts. India is endowed with abundant solar energy, which is capable of producing 5 trillion kilowatts of clean energy. We are blessed with around 300 sunny days in a year. Many states in India have already recognized and identified solar energy potential, and others are lined up to meet their growing energy demands with clean and everlasting solar energy. The top 5 states for installed renewable capacity in India are Rajasthan, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu, and Maharashtra. Most states in India have a comprehensive residential solar rooftop policy, and you can use the power produced from your own residential rooftop solar system. 8,877 megawatts rooftop solar capacity was added as on 31st of March 2023. The Ministry of New and Renewable Energy, under its scheme Development of Solar Cities, has approved and sanctioned 60 cities. Sachi, the historic home to the renowned Stoop, now holds the distinction of being India's first solar city. India's utility-scale solar park model has firmly stood its ground. India now houses multiple ultra-mega solar parks with capacity of more than 1 gigawatt, and 2 of them are the largest commissioned in the world to date. The solar parks in India continue to attract global capital and some of the most renowned domestic and international renewable energy developers. Bhadla Solar Park
is the world's largest solar park located in India, which is spread over a total area of 14,000 acres in Jodhpur district in Rajasthan. Floating solar power also helps tap into India's large water reservoirs and overcome some of the persisting issues facing ground-mounted solar. The largest floating solar power plant in India is currently in Ramagunda in Telangana. The Union Cabinet has also approved to introduce the production-linked incentive scheme in high-efficiency solar PV modules for enhancing India's manufacturing capabilities and enhancing exports. The scheme focuses on direct employment of about 30,000 and indirect employment of about 120,000 persons. Import substitution of around 17,500 crore every year. The government has also allocated a total capacity of 39,600 megawatts of domestic solar PV module manufacturing to 11 companies, with a total outlay of 14,007 crore under the production-linked incentive scheme for high-efficiency solar PV modules. Manufacturing capacity totaling 7,400 megawatts is expected to become operational by October 2024, 16,800 megawatts capacity by April 2025, and the balance 15,400 megawatts capacity by April 2026. Thanks to the government's proactive schemes like production-linked incentive and other incentives, India has been emerging as a global hub for solar manufacturing. As for NSEFI's official data estimates and market intelligence, we believe that India's manufacturing capacity for solar modules will touch 100 gigawatt by 2026 or 2027, with another 100 gigawatt of cell manufacturing capacity and around 60 to 70 gigawatt of ingot polysilicon wafer capacity. The focus has been on made in India also. That is where the manufacturers like us are finding a good space to show to the world that yes, there is alternative to China, and yes, the made in India renewable energy products are available, and we are equally competent and we are equally price competitive, technology competitive to offer to the world good quality solar products. A treaty-based international intergovernmental organization, International Solar Alliance, aims at mobilizing more than $1,000 billion of investment by 2030 for the massive deployment of solar energy. It was established by Prime Minister Narendra Modi and then President of France on November 30, 2015. ISA's objective is to scale up solar energy, reduce the cost of solar power generation through aggregation of demand for solar finance, technologies, innovation, research, and capacity building. We've also put together a global solar facility. It provides a payment guarantee mechanism to the private sector investors who invest in these kinds of small projects. With all of this, we hope to be able to create the kind of ecosystem that it takes for the world to move towards a solar future. Hydropower is commonly produced when fast-moving water spins turbines to generate electricity. India is endowed with large hydropower potential of 1,45,320 megawatts. There are around 197 hydroelectric power plants in India, with nearly 100 gigawatts of electricity potential in India's rivers lying untapped because of high tariffs. The government has approved a slew of measures under the hydro policy to make it competitive. As part of the new hydro policy, large hydropower projects have been declared as renewable energy sources, making them a part of renewable purchase obligation, which requires power discoms to buy a fixed amount of renewable energy to cut reliance on fossil fuels. These measures are particularly beneficial for development of hydro projects in hilly regions and states, which are often located in remote and far-flung areas and require development of extensive associated infrastructure such as roads, bridges for transportation of heavy and large-sized equipment and machinery to the project site. Koyna Hydroelectric Power Project is considered to be the largest hydroelectric power plant in India.
wind energy in India is emerging as an important and reliable source of renewable energy. Wind energy is generated by the use of wind turbines installed in wind farms. According to MNRE, the total installed capacity of wind energy in India is 41.2 gigawatts as of September 2022. There are more than 800 wind power plants in India installed to generate wind power. Tamil Nadu tops the list of states with the largest installed wind power generation capacity. Gujarat houses the second largest installed wind power generation capacity. Maharashtra has the third largest installed wind power generation capacity. Karnataka houses the fourth largest installed wind power generation capacity. Rajasthan houses the fifth largest installed wind power generation capacity in the country. For offshore wind energy, India has a very vibrant policy that came up in October 2015, known as the National Offshore Wind Energy Policy Framework. The objective is to develop offshore wind energy in Indian Exclusive Economic Zone along the Indian coastline. A solar wind hybrid policy was issued in May 2018. The main objective of the policy is to provide a framework for the promotion of large grid-connected wind, solar, photovoltaic hybrid systems for optimal and efficient utilization of wind and solar resources. The wind-solar PV hybrid systems will help in reducing the variability in renewable power generation and achieving better grid stability. The Green Hydrogen Mission aims to promote the production and utilization of green hydrogen. It is poised to play a pivotal role in reducing the nation's carbon footprint and achieving its commitment to renewable energy sources. The government has approved a whopping 19,744 crore for the implementation of the National Green Hydrogen Mission in the country. Considered a future fuel, green hydrogen or ammonia is said to be a replacement for traditional fossil fuels. The mission is to reduce India's oil imports and provide clean fuel to citizens. At the same time, to make India a global hub for using, producing and exporting green hydrogen. Its production capacity is likely to invite investment of 8 lakh crore and create over 6 lakh clean jobs. Hydrogen is light and can be stored. It is energy dense and doesn't generate direct polluting emissions. Therefore, it is considered as a substitute for fossil fuels in heavy transport sectors like maritime transport or the aviation sector, where it is hard to decarbonize the fuel. There was undivided focus on mitigating climate change and switching to renewable sources during India's ongoing G20 presidency. In fact, parliaments of the G20 nations and other invitee nations discussed the issue during the P20 summit hosted by India. After pioneering International Solar Alliance, India has also paved way for Global Biofuel Alliance. Biofuels are generated from all types of waste, which of course is locally available everywhere. While currently biofuel is only systematically produced from crops and industrial food processing waste, it can also be produced from human-generated waste due to advances in technology. This solves multiple problems. Waste is diverted from landfills as an energy source. It is renewable and available at all times, and being locally produced resolves the hassles and carbon emissions. Prime Minister Modi, along with the leaders of Singapore, Bangladesh, Italy, USA, Brazil, Argentina, Mauritius, and UAE, launched the Global Biofuel Alliance on 9th of September 2023 on the sidelines of the G20 summit in New Delhi. The Global Biofuel Alliance is an initiative by India as the G20 chair. The alliance intends to expedite global uptake of biofuels through facilitating technology advancements. In this leaders communique, and that's a very important component. It talks about tripling renewable energy, cutting down on fossil subsidies, but it talks about green hydrogen, it talks about biofuel, this partnership on biofuels, Global Biofuel Alliance. It talks about ending plastic. It talks about disaster risk reduction. So many components to the Green Development Pact. And this, to my mind, is one of the biggest achievements which this G20 has seen.
1,600 retail outlets, E20 is available. And the movement forward is to have, by the end of 2025, all petrol pumps in the country to have E20. But I think an even more significant achievement of the leadership of the Honorable Prime Minister is that we've already moved from the hesitancy of 5%, hesitancy of 10%, hesitancy of 20%. Our mindset is already changing and looking beyond 20%. How will that happen? Greater ethanol production. India is pioneering a new model of economic development that could avoid the carbon-intensive approaches that many countries have pursued in the past and provide a blueprint for other developing economies. In addition, Government of India has also initiated major reforms with missions, like the Renewable Energy Evaluation Storage Projects. For example, Green Credit Program, PM Pranam, Govardhan Scheme, Bharatiya Prakritik Kheti, Bio Input Resources Center, Nishti, Amrit Dharohar Initiative, Coastal Shipping Replacement, Vehicle Scrappage Policy, PM Kusum Yojana, which are spread across 13 ministries as part of Green Growth Agenda. Sector is witnessing a rapid growth. There's been more than 50 gigawatt of bids already announced by utilities. And on top of that, both commercial and industrial category of consumers are also eager to buy more and more renewable power. It doesn't stop at this. Indian government is also pushing that all these power plants should use Make in India. In an era of accelerating change, the imperative to limit climate change and achieve sustainable growth is strengthening the momentum of global energy transformation. The rapid decline in renewable energy costs, improving energy efficiency, widespread electrification, increasingly smart technologies, continual technological breakthroughs, and well-informed policy making all are driving the shift, bringing a sustainable energy future within reach. The world's actions today will be crucial to create a sustainable energy system. Ultimately, the path to secure a better future depends on pursuing a positive, inclusive, economically, socially, and environmentally beneficial energy transition, the way India is pursuing. Well, viewers, that's all I had for you in this edition. With camera person DK Pandey, camera assistant Riyasat, and video editor Mukhtar Ali, I'm Kriti Mishra signing off for Sunset Television. Naming a member. The drawing of attention of the House by the chairman to the conduct of a member who disregards the authority of the chair or abuses the rules of the House by persistently and willfully obstructing the business thereof, with a view to action being taken to suspend him from the service of the House for a period not exceeding the remainder of the session. Ordinance. A law made by the President in exercise of the powers vested in him under Article 123 of the Constitution. Question of privilege. A question involving a breach of privilege either of a member or of the House or of a committee thereof, or a contempt of the House. Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar has reconstituted the panel of vice chairpersons with 50% women parliamentarians.
Many parliamentarians have been nominated for the first time. I have to inform honorable members that the panel of vice chairpersons has been reconstituted with effect from 4 December 2023 with the following honorable members: Shrimati Fulo Devi Netam, Shrimati S. Fognan Konyak, Shrimati Darshana Singh, Dr. Sonal Man Singh, Dr. Sasmit Patra, Shri V. Vijay Sai Reddy, Shri Sukhendu Sekhar Rai, and Shri Kartikesh Sharma. All the nominated members have expressed gratitude to Chairman Dhankhar for the opportunity. इतना बड़ा मौका देने के लिए मैं माननीय सभापति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने एक महिला को ये सम्मान और अवसर प्रदान किया है और ये मौका दिया है, तो निश्चित तौर पे इस काम को मैं अच्छी तरीके से करूँगी. This is my last year of the term, and I'm looking forward to understanding a little more on the other side, sitting on the other side. And I suppose to be seated in that grand seat, that chair, would definitely mean something in my entire career, not only of as a MP, in my life. देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है. निश्चित तौर पर इस जिम्मेदारी को बेखूबी से निभाने का पूरा कोशिश करूँगी. I'm very grateful to the chairman for giving me this opportunity. It's a big responsibility. I would like to thank the honorable chairman for giving me this opportunity, and I think it's fantastic that youngsters like myself who've been in the parliament for a little more than a year have got opportunities to understand the system and also be a part of the system. It's a very big responsibility, and I intend on taking it very seriously as well. So my basic priority will be that the house should function in a manner that it's supposed to. And it took me almost a year to make my maiden speech. I hope that doesn't happen to the others because of the disruptions by the opposition party. I think the main mandate of all members of parliament when they're elected by people is that they put out their opinion and voice their opinion of people who they represent. And it's extremely important to give them a chance to speak. I think that will be my main priority, that people should get an opportunity to voice their opinion. I'm profusely thankful to the Vice President of India and Chairman Rajya Sabha for nominating me as a panel of Vice Chairmen. I will discharge my responsibility as per the rules, regulations, and with utmost care and integrity. No, I'm extremely grateful to Honorable Chairman Rajya Sabha Shri Jagdeep Dhankhar ji, because his dynamism, his leadership, and his mentorship has always been a blessing for me. And in that sense, Honorable Chairman has always looked out and especially promoted and encouraged young parliamentarians like me. And in 2022, when he came to office, initially at the first time, he immediately had appointed me to the panel of vice chairman. And thereafter, there were two lady the members from my party who were also appointed to the panel of vice chairman. And today, by reappointing me, I'm deeply grateful to Honorable Chairman Shri Jagdeep Dhankhar ji. According to the rules, the chairman shall, from time to time, nominate from amongst the members of the council a panel of vice chairmen, any one of whom may preside over the council in the absence of the chairman and the deputy chairman, when so requested by the chairman, or in his absence by the deputy chairman.
माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Shri Arnath Singh Yadav to move for leave to introduce the bill. माननीय सभापति जी, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि जो आपने मुझे वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 को निरस्त करने हेतु निजी सदस्य विधेयक पुनः स्थापित करने की अनुमति मांगने का अवसर प्रदान किया। महोदय, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 समाज में द्वेष और नफरत पैदा करता है, अपनी अकूत ताकत का दुरुपयोग करता है, समाज की एकता और सद्भाव को विभाजित करता है, अपने अकूत अधिकारों की ताकत के आधार पर सरकारी और निजी संपत्तियों तथा मठ मंदिरों पर मनमाने तरीके से कब्जा करता है। यह विधेयक वक्फ बोर्ड के असंवैधानिक कृत्यों के खिलाफ पीड़ित पक्षों को अदालत जाने से रोकता है। Sir, you will oppose after he moves. Yes. You moved leave to introduce the bill. माननीय, एक सेकंड, मुझे दोबारा बोलना पड़ेगा। बोल दीजिए। माननीय सभापति जी, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि जो आपने मुझे वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 को निरस्त करने हेतु निजी सदस्य विधेयक पुनः स्थापित करने की अनुमति मांगने का अवसर प्रदान किया। महोदय, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 समाज में द्वेष और नफरत पैदा करता है, अपनी अकूत ताकत का दुरुपयोग करता है, समाज की एकता और सद्भाव को विभाजित करता है, अपने अकूत अधिकारों की ताकत के आधार पर सरकारी और निजी संपत्तियों तथा मठ मंदिरों पर मनमाने तरीके से कब्जा करता है। यह विधेयक वक्फ बोर्ड के असंवैधानिक कृत्यों के खिलाफ पीड़ित पक्ष को अदालत जाने से रोकता है, न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता को खंडित करता है। अतः मैं आपकी अनुमति से देश हित में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को निरस्त करने के लिए विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति देने की मांग करता हूं। Would you please, one second. Honorable members, 1 second. I am fully updated with the rules. The honorable member has moved it. I have now 2 notices before me. I will give opportunity to those persons and then the question will come. This is the only procedure we can follow. It will happen after the 2 honorable members have had their say. The honorable member has sought leave to introduce the bill. Now there are 2 notices, honorable members, to me. Shri Abdul Wahab and Shri Alamaram Karim. They are opposing introduction of the Waqf Repeal Bill 2022. Once again, voting issue will come after both of them have spoken. No, I don't have a notice. You are right, but we can't do it that so and so is also there. Follow the procedure. Shri Abdul Wahab. Shri Abdul Wahab, who seeks to oppose the bill, please. Not present. Shri Alamaram Karim, who seeks to oppose the bill. Yes, sir. Nothing will go on record. So you seek division only when there are no numbers. Sir, you may want immediate division, immediate power, immediate passing, immediate decline. That can happen only and only according to procedure. You have one of the distinguished senior advocates who is always thorough with this fact and law. I have to go according to the mandate of law. Otherwise, our honorable senior advocates may not choose to make reflections here.
but they will do it by way of an article. Sir, sir, I'll check up, the but we have only two notices within time. along with me, the members of CPIM, other members, John Britta, Shivadasan, Rahim, all are the partners in the notice. See, I yes, oppose again, even the introduction of this bill. It should not be admitted. One second. Because Ilamaram it is a Cream. very serious concern among the religious Muslim religion. That is their fundamental right as per their faith to keep the Waqf assets. To govern that Waqf assets, a law was enacted in the parliament. That protection is given to the Waqf assets. So many worship places and orphanages and other institutes are running under this Waqf. There is nothing related with to other community or other section of the people. So while we touching such a sensitive issue, it will create communal division among the people. So it should not be admitted. It should be rejected. That is my condition. Dr. John Britas and Jairam Rameshji, this is not a fish market. This is an important theater. If you wish to say something to another member, put it in his ear. It can't be so across. The house will have to be in order. You are creating disorder. You will force me to adjourn the house. I think message is loud and clear. I have given floor to Dr. John Britas. Mike. Thank you very much. I stand to oppose the introduction of the bill which has been moved here, and the only content and the objective of the bill is to create polarization and animosity amongst different sections of the population. This will have far-reaching impact in the society, and a member from the ruling party should not indulge in such bills which creates polarization and disharmony, which is obviously against the tenets of the Constitution. Thank you, sir. Yes. I will ask Jairam Ramesh to occupy this chair. I think he can better control it. Either allow me to do it. Sir, I'm ready to ask for division, sir. Sir, you are trampling on the rights of other members. The honorable member is too keen to speak. Then we have J.B. Mathur to speak. Sir, I stand to oppose the introduction of this bill. As it is already stated by my fellow members from Kerala, this is mainly intended to create division among the society. This member has nothing to do with the Waqf property. There is an established system. There is an established board. There are many related laws to take care of the Waqf properties. This is purposefully now going to introduce just to create division among the society. They are making use of each and every chance to create division among people, whether it is North India, South India, whether it is among Hindus or Muslims. This divisional politics tactic is going on. So I take this opportunity to oppose the introduction of this venomous bill. To move this private member bill, because as my good friend said, normally, it is against the basic structure of the Constitution. Normally, only members who have given notice can oppose it. But I am making a departure, forced by what Jairam Ramesh has said, that I must give opportunity to one of our party colleagues to oppose it. No. You made a request for J.B. Mathur. No, I called there. You please have division now.
It is violating the basic structure of the Constitution. To that extent, I would say that this bill should not be allowed to be moved. Thank you, Chairman, sir. JB Mathur. To vehemently oppose the introduction of this bill because this is totally against the ethos and the idea of India, what we have followed all throughout, right from pre-independence and post-independence days. Every religion has a right to follow their own system. This government always speaks volumes and volumes about minimum intervention and maximum governance, minimum intervention. But why is it that this government always wants to interfere in such matters? Waqf bill is something which has been there always. Let there be not a scene where communal disharmony is created in the country, and that is why we are saying let religion be left alone. We just celebrated Dr. Ambedkar ji's birth anniversary. We should definitely follow the social ethos, the religious balance this country has always followed. I vehemently oppose this Waqf bill, and I seriously consider this should not be allowed to be introduced in the House. And I'm deeply obliged for the opportunity. Shri Tiruchi Siva. Shri Tiruchi Siva. One moment. Sir, thank you very much, sir. Chairman, sir. Sir, I, on behalf of my party DMK, strongly object the introduction of a bill by Honorable Arnath Singh Yadav to repeal the Waqf Act 1995. Sir, when the division of the partition happened in 1947, Muhammad Ali Jinnah said, all the Muslims come to me, along with me to Pakistan. But the Muslims in this country told that we are Muslims, but India is our nation. Sir, the Constitution has given so much of protection to the minorities, and one among them is this Waqf. Sir, repealing such things will cause very big repercussions in this country across, and it will develop a sort of insecure mind in the Muslim community in the country. So, sir, in the interest of the nation and the integrity and what we have maintained all these days with the name of secularism, this has to be not to be introduced, sir. And I request Harivansh Singh himself to please withdraw that, or you please put it to division, sir. Thank you very much. Shri V. Shivdasan. My request is this great house is to be promoted the communal harmony, love and affection to the people. But here this bill, the Waqf repeal bill, that is trying to promote the communal venom to the people. So the bill should not be present here. I requesting to the member to withdraw the bill. Shri Jawahar Sarkar. Sir. कोई हाथ तो रेस करे? Sir, Rakesh ji. Sir, I thank you for your kindness in allowing me to speak a few words. I would only submit to the member and to you, sir, not to allow the introduction of this bill because it seeks to promote communalism. This is not correct. One plea that I make to my friends in the treasury benches, the Muslims of India are not living at the grace and mercy of the majority community. They are as much Indians as anyone else. And please do not try to take their rights to try to heckle them on every occasion. Sir, I submit to you and to the honorable member to withdraw a bill that seeks to introduce divisionism and hatred. This is a fundamental right that they have enjoyed, the community has enjoyed. Please do not allow a mischievous act, a mischievous legislation to even think of withdrawing the natural rights of the Muslims of India. Shri Rakesh Sinha. One, are you opposing the bill, Rakesh? Yes. Only those who seek to oppose the bill. That's what I say. No. Mr. Jairam, I'm asking the same thing. Chairman, sir. Please, you don't allow me to follow the rule.
सभापति महोदय मुझे Neeraj ji, सभापति महोदय you can speak only from chair. सभापति महोदय मुझे No, if you have to say something from the chair. No, are you opposing the introduction? No, no, then no. दो शब्द No. सिर्फ दो शब्द मैं आपसे- Rules permit, one second, I have been indulgent because on this issue, the honorable members wanted to oppose it. Those who oppose or seek to oppose, I'll give floor to them. बातें कहने Then take your seat. Then take your seat. No. Take your seat. No. Nothing will go on record. Nothing will go on record. I can give floor only to those who seek to oppose the introduction. And why I am doing this? I have sensed the sentiment of the House. And therefore, there is an appeal also from some members that the honorable member should take a particular course of action. And therefore, I will allow floor only to those who seek to oppose the introduction of bill. No. Good, okay. धन्यवाद सभापति जी। मैं इस बिल को पुरस्थापित करने का विरोध करता हूं। Yes. और मुझे लगता है कि हमारे बुजुर्ग साथी हरनाथ जी आदतन ऐसे विषयों को निजी विधेयक के रूप में सदन के अंदर लाते हैं बार बार, जिससे समाज के अंदर वैमनस्य बढ़े और खाई This will बढ़े। be deleted. मैं It's a अकेला personal allegation. अभी तक के जितने साथियों ने अपोज किया है इस बिल को, मैं पहला स्टेक होल्डर हूं इस बिल का। इसलिए मेरी बात सुनी जाए कि वक्फ की संपत्ति सिर्फ मुसलमानों के द्वारा वक्फ की गई संपत्ति होती है और मुसलमानों ने भारत सरकार के जो कायदे कानून है वक्फ के संबंध में उसको फॉलो करने का डिसीजन लिया है। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दी गई संपत्ति ना वक्फ हो सकती है, ना उसके ऊपर मुसलमानों का कोई अधिकार हो सकता है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि ये एक्सक्लूसिवली एक रिलीजियस कम्युनिटी का इंटरनल मामला है और इसे रेगुलेट करने के लिए संबंधित कानून हमारे देश की संसद ने बना रखा है। इसमें हस्तक्षेप करना गैर जरूरी है। इसलिए मैं इस बिल का जो वो प्रस्तावित करना चाहते हैं पुरजोर विरोध करता हूं। धन्यवाद। नासिर सर बोलिए सर, मैं ये जो सर मैं ये इस बिल का इंट्रोडक्शन का अपोज करने के लिए खड़ा हूं सर। पूरे देश में वो फैक्ट है और वो फैक्ट क्लियरली डिस्कस किया गया है, डिबेट किया गया है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट जो है उस वो फैक्ट को टाइम टू टाइम अमेंड भी किया है। प्रॉपरली गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स लाती है जब जब जरूरत पड़ती है तो, और उसको वो फैक्ट को अमेंड किया गया। ये पर्सनल मैटर है और वक्फ जो है क्लियरली डिफाइंड है। सब कुछ पूरे स्टेट में इसके बॉडीज हैं, इसके कमिटीज हैं, उसमें इलेक्शंस होता है, सब कुछ ठीक है। ये सिर्फ कम्युनलाइज करने के लिए, पोलराइज करने के लिए, अननेसेसरी डिबेट पैदा करने के लिए मिसच्यूअस प्रपोजल यहाँ पे लेके आए हैं। मुझे लगता है कि इसको अलो बिल्कुल नहीं करना चाहिए और मैं चाहता हूं उसके ऊपर अगर हो सके तो डिवीजन भी करवा दें। डॉक्टर फौजिया खान। सर, इस बिल का वक्फ रिपील बिल 2022 जो लाया गया है इसका मैं भरपूर विरोध करती हूं और ये बिल बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर, क्योंकि हर रिलीजन को हमारे देश में फ्रीडम दिया गया है, उनके रिलीजियस भावनाओं को प्रोटेक्शन दिया गया है और भी समाजों के लिए इस तरह के बिल है सर। धार्मिक संस्थान वाले बिल्स हैं, तो जिस तरह हर धर्म को अपना प्रोटेक्शन करने का अधिकार है संविधान ने दिया हुआ, मुस्लिम समाज को भी ये अधिकार है। इसलिए इस बिल को मैं आपसे विनंती करती हूँ, प्लीज ये इस सभागृह में मत आने दीजिएगा सर, और डिवीजन के लिए मैं मांग करती हूँ। सर, मैं वक्फ रिपील बिल 2022 का विरोध करती हूँ, क्योंकि ये हमारे मुसलमान भाइयों का इंटरनल मामला है
और उस पर उनका अधिकार है और उसको लेके समाज में उनके यहाँ इलेक्शंस होते हैं और रांची में भी, झारखंड में भी मैं देखती हूँ लगातार इसको लेके लोग सक्रिय रहते हैं। ये उनके सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मामला है सर, इसमें हस्तक्षेप न किया जाए ताकि उनके मन में जो एक इस देश में रहने के बाद भी जो असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है वो और बढ़ जाएगी। इससे आपस में लड़ाई झगड़े, सांप्रदायिक एकता में भी बहुत लोगों में फिर से वैमनस्य की भावना उभरेगा। धन्यवाद सर। प्रोफेसर मनोज कुमार झा। शुक्रिया सर। शुरू में धन्यवाद आपका। शुरू में सोचा था कि बाकी सदस्य बोल देंगे, उसके बाद आप निर्णय लेंगे डिवीजन का। निर्णय हाउस लेगा? नहीं, मैंने कहा शुरू में कुछ लोग बोल देंगे तो मैं अपनी बात। लेट मी टेल यू, on this particular day, Jairamji has forgotten the rules. After you speak out, there is a procedure I'll follow. Yes, sir. There will be an occasion for him or every other member to demand division or not to demand it. थैंक यू सर। सर, आपके माध्यम से ये मेरा 6ठा वर्ष है इस सदन में और हरनाथ जी का बहुत आदर करता हूं, इसलिए भी सर कि उनको सपने अलग अलग तरह के आते हैं, लेकिन इस संसद में धर्मेंद्र जी मुझे देख रहे हैं, मैं बताऊंगा कौन कौन सपने। माननीय सभापति महोदय, संसद का एक और दायित्व है कि संसद के भवन से कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा आचार, कोई ऐसा संवाद ना हो जिसमें ऑलरेडी बटा हुआ समाज कितना और बांटेंगे, बंटवारा हो जाएगा, घर घर, गांव गांव, गली गली, इतने बंटवारे ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। The question is, honorable members, the question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. Your work also lighter. No, the point is that I will have to look into the lexicon, what is meant by incorrigibility. And incorrigibility, when a man is in sound company of very intelligent people all around, I think eyes have it. The eyes have it. The division. Let the lobbies be cleared. I think I should seriously think to take sense of the house, whether rules permit him to occupy my chair immediately. Sir, intelligence is a double-edged weapon. Secretary General will now explain. Lobbies have been cleared? Oh yes, we have to wait. We have to get confirmation from the marshal. हो गया?
नहीं नहीं, जिनको जाना no member to influence another member. Conscience or no conscience? Lobby is cleared. Secretary General will now explain the voting procedure. Honorable members, for your convenience, I shall explain the voting procedure by automatic vote recording system. It may please be noted that each member has a multimedia device, MMD, at his desk. This MMD has an integrated mic and a voting console containing 3 buttons: yes for ayes, no for noes, and abstain on right-hand corner. There is also a separately situated button, Vote Secure, provided on the bottom left-hand corner of the multimedia device. To record a vote, a member has to be on his allotted seat. The member may press the Vote Secure button. Keep the Vote Secure button in a pressed position. You have to simultaneously press one of the voting buttons of your choice. Each voting button, that is yes, no, or abstain, has an assigned LED light emitting diode indicating the correct and valid voting function as long as a button is pressed together with the Vote Secure button. In order to further facilitate the members, I will now explain the step-by-step method and precautions to be followed by each member in casting their votes. Step 1, I will announce that the voting process will start now. Step 2, the voting process starts and ends with an alarm sound on a large screen hall display in 2 corners of the chamber. The countdown time of 10 seconds in reverse counting order will be visible to the members on their respective multimedia devices. Step 3, members can cast their votes by pressing the Vote Secure button available on the bottom left-hand corner of their devices and keeping it pressed, simultaneously press one of the yes, no, abstain buttons of his or her choice. For easy identification, these voting buttons have been indicated on your devices as green for yes, red for no, and yellow for abstain. Step 4, each member must keep the Vote Secure button as well as one of the yes, no, or abstain buttons pressed simultaneously for 10 seconds, that is at the time of closing of voting, to register a valid vote. Step 5, once the valid vote is registered, the LED of the voting button pressed by the member will remain on, lighted up on their device. At the time of casting the vote, if the member observe that the LED of yes, no, or abstain buttons are simultaneously blinking, it means that their vote is not being registered. Therefore, they shall immediately release the voting button pressed by them without releasing the Vote Secure button and have to press again within 10 seconds period to register a valid vote. Step 6, during the voting period, the member can change his or her voting at any time. The button pressed at the time when the voting period is ending, that is the 10th second, will be recorded. In case either one or both the buttons are released prior to the close of voting period, the vote will not be registered. If a member finds that he or she has voted by mistake by pressing the wrong button, he or she can be allowed to correct the mistake through a correction slip devised for the purpose, provided he or she brings it to the notice of the chairman before the result of division is announced.
The correction slips will be distributed to the honorable members who desire to correct their recorded vote by the officials of the Secretariat. I shall now put the motion that leave be granted to introduce the bill to vote. The question is, those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Division, after that only. Division. Secretary General. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts after the alarm sound. You have to be technologically savvy. Ekagrta. Get a slip and follow the procedure. Don't question Telangana so soon. Don't question so soon. हैं? क्योंकि वो फ्रैक्शन होता है 0.01.
Honorable members, result of the division on the motion for introduction of the bill, subject to correction, ayes 53, noes 32, abstention 0. बोला है. I think we must immediately call emergency medical team. Everyone heard me loud and clear. I think a friend coming to his aid now. Shri Harnath Singh Yadav. माननीय सभापति जी, I introduce the bill, that's all. मैं प्रस्ताव करता हूं कि वक्फ एक्ट 1995 पारित किया जाए. Let the lobbies be opened. क्षमा चाहता हूं. Harinath ji, you have to introduce the bill. You sought leave of this house to introduce the bill. मालूम है. माननीय सभापति जी, वक्फ एक्ट 1995 केवल 2 मिनट लूंगा. अतार्किक है, असंवैधानिक है, नहीं, अव्यवहारिक है. Harnath ji, you sought leave to introduce the bill. Are you introducing the bill? नहीं, are you introducing the bill? अतः मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से दलीय भावना से ऊपर उठकर मेरे द्वारा प्रस्तुत विधेयक के समर्थन की मांग करते हुए पूर्ण पवित्र भाव से Harnath ji, honorable member, स्थापित are you introducing the bill? 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 महोदय, मैं अपने इस बिल को देश हित में पुरस्कृत. Are you introducing the bill? मैं पुरस्कृत करता हूं सर. The Constitution Amendment Bill 2023, Amendment of Article 348, Shri Harnath Singh Yadav to move for leave to introduce the bill. दूसरा वाला. मैं मान्यवर पूर्ण पवित्र भाव से देश हित में अपने इस विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Shri Harnath Singh Yadav. Are you introducing the bill, Harnath Singh ji? मैं अपने इस बिल को पुनर्स्थापित करता हूं. 3. The representation of the People Amendment Bill 2022,
Shri Irana Kadadi to move for leave to introduce the bill. Not present. The Constitution Amendment Bill 2022, insertion of new Article 21 capital B. Shri Irana Kadadi to move for leave to introduce the bill. Not present. The Right of Children to Free, Compulsory and Quality Education Amendment Bill 2023. Shri Irana Kadadi to move for leave to introduce the bill. Not present. The Prevention and Eradication of Human Sacrifice and Other Superstitious Practices Bill 2022. Shri Binoy Viswam to move for leave to introduce the bill. Absent, sir. Not present. The Indian Penal Code Amendment Bill 2022, amendment of Section 375. Shri Binoy Viswam to move for leave to introduce the bill. Not present. The Constitution Amendment Bill 2023, amendment of Articles 58, 66, 72, etc. Shri Binoy Viswam to move for leave to introduce the bill. Not present. The Constitution Amendment Bill 2022, amendment of the 8th schedule. Shri Rajiv Shukla to move for leave to introduce the bill. Thank you, Chairman. With your permission, I seek the leave of the House to introduce a bill further to amend the Constitution to include Chhattisgarhi language in 8th schedule of the Constitution. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. नो बोल रहे हो हैं? I think the ayes have it. I think the ayes have it. The ayes have it. Sir, I take note of not gestures. Unlike our friend, my hearing capacity is sound. It was eyes. Shri Rajiv Shukla. Sir, I introduce the bill. The Constitution Amendment Bill 2022, amendment of Article 16. Shri P. Wilson to move for leave to introduce the bill. Thank you, Chairman, sir. I raise to seek the leave of the House to introduce the bill to amend Article 16 of the Constitution and introduce Article 1648 to grant reservations to the OBC communities in the promotion and to grant seniority and to bring them in the mainstream. Thank you, Chairman. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Subdued hai. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri P. Wilson. I introduce the bill. The Constitution Amendment Bill 2023, amendment of the 7th schedule. Shri P. Wilson to move for leave to introduce the bill. Chairman, sir, I raise to seek the leave of the House to introduce the bill to amend 7th schedule, List 1, Entry 69 of the Constitution, and to remove the powers from the center, the unused power from the central government, and to move it to List 3 in concurrent list and make it as Entry 48 to help the state to take census by themselves and to grant reservations to the OBC communities. Thank you, Chairman, sir. The question is
that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri P. Wilson. Thank you, Chairman, sir. I introduce this bill. Election Commission of India Reforms Bill 2023. Shri P. Wilson to move for leave to introduce the bill. Thank you, Chairman, sir. I raise to seek the leave of the House to introduce the bill, the Election Commission of India Reforms Bill 2023, which completely deals with the qualification, method of appointment, and other conditions of service of the Chief Election Commissioner, and Regional Election Commissioner, establishment of a permanent secretariat, and staffs for the Election Commissioner of India, and expenses of the commissions, and for the matters connected therewith and incidental thereto. And I seek the leave to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Shri P. Wilson. Thank you, Chairman, sir. I introduce the bill. The Constitution Amendment Bill 2022, Amendment of Articles 102, 191, and the 10th Schedule. Shrimati Priyanka Chaturvedi to move for leave to introduce the bill. Honorable Chairman, sir, I rise to seek the leave to introduce a bill further to amend Articles 102, 191, and the 10th Schedule of the Constitution of India for matters connected therewith and incidental thereto. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Shrimati Priyanka Chaturvedi. Thank you so much, Honorable Chairman, sir. I introduce the bill to strengthen anti-defection laws by amending Article 102, 191, and the 10th Schedule. Thank you, sir. The Facial Recognition Technology Regulation of Police Powers Bill 2023. Sir, Shrimati Priyanka Chaturvedi to move for leave to introduce the bill. Sir, I raise to seek your leave to introduce a bill to provide for framework to regulate, control, and define powers of the police agencies and central investigative agencies to use facial recognition technologies for the purposes of identification, investigation, and inquiries of criminal offences, and for matters connected therewith and incidental thereto. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shrimati Priyanka Chaturvedi. Sir, I rise to introduce the bill. Thank you, sir. The Constitution Amendment Bill 2022, insertion of new Article 44 capital A and amendment of Article 51 capital A. Dr. Anil Sukhdev Rao Bonde to move for leave to introduce the bill. Thank you, Chairman, sir. I herewith move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India. Further to? Amend the Constitution of India. No. For insertion of? For the insertion of new Article 44A and amendment of Article 51A. Yeah. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Anil Sukhdev Rao Bonde. Thank you, sir. I introduce the bill. The Marriage Bureau Regulation Bill 2022. Dr. Anil Sukhdev Rao Bonde to move for leave to introduce the bill. Thank you, Chairman, sir. I move for leave to introduce a bill to provide for regulation of Marriage Bureau for prevention of malpractices and misuse of marriages registration facility and for matters connected therewith or incidental thereto. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye.
Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Dr. Anil Sukhdev Rao Bonde. Thank you, sir. I introduce the bill. The Interfaith Marriages by Unlawful Conversion Prohibition Bill 2023. Dr. Anil Sukhdev Rao Bonde to move for leave to introduce the bill. Thank you, Chairman, sir. I move for leave to introduce a bill to prohibit interfaith You only marriage. have to introduce the bill. To prohibit interfaith marriages by unlawful conversion and for matters connected therewith or incidental thereto. Dr. Bonde, you have just to move the bill. Yes. Good. Sir, The I move question the is bill. that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Anil Sukhdev Rao Bonde. Thank you, sir. I introduce the bill. The Right of Children to Free and Compulsory Education Amendment Bill 2022. Shri A. Rahim to move for leave to introduce the bill. Not present. The Constitution Amendment Bill 2023, Amendment of Article 371A. Shri A. Rahim to move for leave to introduce the bill. Not present. The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Amendment Bill 2023. Shri A. Rahim to move for leave to introduce the bill. Not present. The Advocates Amendment Bill 2022. Dr. Sasmit Patra to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce a bill, the Advocates Amendment Bill 2022, to further amend the Advocates Act 1961. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Sasmit Patra. Sir, I introduce the bill. The Indian Penal Code Amendment Bill 2022, substitution of sections 124 capital A and 309 and amendment of section 375. Dr. Sasmit Patra to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce a bill, the Indian Penal Code Amendment Bill 2022, substitution of sections 124A and 309 and amendment of section 375, further to amend the Indian Penal Code 1860. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Sasmit Patra. Sir, I introduce the bill. The Constitution Amendment Bill 2022, substitution of Articles 331 and 333. Dr. Sasmit Patra to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce a bill, the Constitution Amendment Bill 2022, substitution of Articles 331 and 333, further to amend the Constitution of India. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Sasmit Patra. I introduce the bill. Thank you. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2022. Dr. Kani Moji, NV and Somu to move for leave to introduce the bill. Sir, I rise to seek the leave of the House to introduce the bill further to amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Kani Moji, NV and Somu. Thank you so much, Chairman. I introduce the bill. The Food Safety and Standards Amendment Bill 2022. Dr. Kani Moji, NV and Somu to move for leave to introduce the bill. Sir, I rise to seek the leave of the House, the bill to introduce a bill further to amend the Food Safety and Standards Act 2006.
The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Kani Moji, NVN Somu. Thank you, Chairman, sir. I introduce the bill. The Special Financial Assistance to the State of Tamil Nadu Bill 2022. Dr. Kani Moji, NVN Somu to move for leave to introduce the bill. Sir, I raise to seek the leave of the House to introduce a bill to provide for special financial assistance to the state of Tamil Nadu for the purpose of sustainable and balanced development of growth-oriented infrastructure such as affordable housing, drinking water, roads, sanitation, creation of grain and fodder banks, skill development, textile parks, food processing zones, cloud seeding, and welfare schemes for women, children, senior citizens, and people living below the poverty line in the state, and encouraging traditional water conservation through lakes, ponds, wells, rainwater harvesting, and afforestation, and for matters connected thereof and incidental hereto. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Dr. Kani Moji, NVN Somu. Thank you, Chairman, sir. I introduce the bill. The Hate Speech and Hate Crimes Prevention Bill 2022. Shri K.R. Suresh Reddy to move for leave to introduce the bill. Thank you, Chairman, sir. I rise to seek the leave of the House to introduce the Prevention of Hate Speech and Hate Crimes Bill 2022. Thank The you, sir. question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri K.R. Suresh Reddy. Chairman, sir, I introduce the bill. Thank you. The Andhra Pradesh Reorganization Amendment Bill 2023. Shri K.R. Suresh Reddy to move for leave to introduce the bill. Chairman, sir, I rise to seek the leave of the House to introduce the Andhra Pradesh Reorganization Amendment Bill 2022. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Shri K.R. Suresh Reddy. Thank you, Chairman, sir. No, you have to introduce the bill. Introduce the bill. Thank you, Chairman, sir. Thanks is well taken. No, the pause from the side kind of paused me too, sir. The Prevention of Money Laundering Amendment Bill 2022. Shri Raghav Chadha to move for leave to introduce the bill. Sir, prevention of money laundering. You introduce the bill. एक वाक्य बोलकर Nothing. You just have to seek leave. It is not a platform to say beyond what rule prescribes. नहीं सर, पिछली बार जब इंट्रोड्यूस किया था तो आपने अनुमति दी थी. Why should you get into argumentative mode? No, I will follow. You follow the rule. I shall, sir. I shall. Do you want to move? Do you want to seek leave? Yes, sir. Okay, seek it. Thank you. Thank you so very much, sir. I move for leave to introduce a bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Raghav Chadha. I introduce the bill. The Constitution Amendment Bill 2022, substitution of Articles 153, 154, etc. Shri Raghav Chadha to move for leave to introduce the bill. I move for leave to introduce a bill to further amend the Constitution of India. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Shri Raghav Chadha. I introduce the bill. The Decriminalization of Defamation Bill 2023. Shri Raghav Chadha to move for leave to introduce the bill. I move for leave to introduce a bill to decriminalize the offences of defamation. You seek leave to move the bill. I move for leave to introduce a bill to decriminalize the offence of defamation. The question is that leave be granted to introduce the bill.
Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Raghav Chadda. I introduce the bill. The Constitution Amendment Bill 2022, insertion of new part 16 capital A, an amendment of Article 366. Dr. Ashok Kumar Mittal to move for leave to introduce the bill. With the kind permission of the chair, I rise to move for leave to introduce a bill to amend the Constitution of India. Just move the bill. I rise to move for leave to introduce a bill. Good. To amend the Constitution. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Ashok Kumar Mittal. I introduce the bill. The Shopkeepers Welfare Bill 2022. Dr. Ashok Kumar Mittal to move for leave to introduce the bill. I rise to move for leave to introduce a bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Ashok Kumar Mittal. I introduce the bill. The Khadi Spinners, Weavers and Khadi Institutions Protection and Welfare Bill 2022. Shri Anil Prasad Hegde to move for leave to introduce the bill. I move for leave to introduce a bill to provide for the protection of distressed Good Khadi enough. spinners. Introduce the bill. That's good enough. Doctor. I seek the leave. Yes. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Anil Prasad Hegde. I introduce the bill. The Sustainable Agriculture Ban on Harmful Chemicals Bill 2023. Shri Anil Prasad Hegde to move for leave to introduce the bill. I move for leave to introduce a bill to provide sustainable agriculture by banning the use of harmful chemicals in farming Good. and for introduce connected. Only bill. I move the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Anil Prasad Hegde. I introduce the bill. The Motor Vehicles Amendment 2022. Shri Almaram Karim to move for leave to introduce the bill. Thank you, Chairman. I move for leave to introduce a bill further to amend the Motor Vehicle Act. Sir, 1988. just introduce the bill. Thank you, sir. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Alamaram Karim. I introduce the bill. The Kashmiri Pandits Recourse Restitution, Rehabilitation and Resettlement Bill 2022. The honorable member has sought my leave. So I am passing it over. I had granted him that accommodation. So for 37, 38. Yes, 38. The sexual harassment of women at workplace, prevention, prohibition and redressal amendment bill 2022. Dr. Fozia Khan to move for leave to introduce the bill. Thank you, sir. I seek to move for leave to introduce the bill to further amend the section. Thank you, sir. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Fozia Khan. Introduce the bill.
The Constitution Amendment Bill 2023, insertion of new articles 330 capital A, 330 capital B, etc. Dr. Fozia Khan to move for leave to introduce the bill. Sir, I seek to move for leave to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Fozia Khan. Sir, I introduce the bill. The Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2023. Dr. Fozia Khan to move for leave to introduce the bill. Sir, I seek to move for leave to introduce the bill. This The is question about is- Dhankhar reservation, sir. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Fozia Khan. I introduce the bill, sir. The Right to Free Internet Bill 2023. Dr. V. Shivdasan to move for leave to introduce the bill. I move for leave to introduce a bill to provide for free The question internet is- access to all the citizens in Good, India. the question is that leave be granted to introduce the bill. I introduce the bill, sir. No, aye. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. V. Shivadasan. I introduce the bill, sir. The Right to Public Space Bill 2023. Dr. V. Shivdasan to move for leave to introduce the bill. I move for leave to introduce a bill to provide The question for free is access that to leave be public granted access to all introduce the citizens bill. in India. Those in favor, please say aye. Aye. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Because anyone saying no? Fine. Everybody Dr. is V. supporting. Shivdasan, I introduce, sir. the Right to Early Childhood Care Bill 2023. Dr. V. Shivdasan to move for leave to introduce the bill. I move for leave to introduce a bill to The provide for question the is, right to your early childhood only care. bill, no description required. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. V. Shivdasan. I introduce the bill, sir. Thank you, sir. The Constitution Amendment Bill 2023. Amendment of Article 326. Dr. John Brittas to move for leave to introduce the bill. Sir, move for leave to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. John Brittas. I introduce the bill. Sir. The Representation of People Amendment Bill 2023. Dr. John Brittas to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce the bill, sir. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. I didn't hear your aye. Aye. Oh, good. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. John Brittas. I introduce the bill, sir. The Reserve Bank, the Reserve Bank of India Amendment Bill 2023. Dr. John Brittas to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce the bill, sir. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. John Brittas. I introduce the bill, sir. The Antiquities and Art Treasures Amendment Bill 2023. Shri Sir. Sujit Kumar to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce a bill further. The question is that to leave amend be the Antiquities granted Act. to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Sujit Kumar. Sir, I introduce the bill. The Indian Penal Code Amendment Bill 2023, insertion of sections 24 capital A, 300 capital A, and 302 capital A.
Shri Sujit Kumar to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce a bill further to amend the IPC. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. The voice is getting feeble. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Sir, I introduce the bill. Shri Sujit Kumar. Sir, only after I have to open the window. Sir, आपका काम था सरल कर दे रहा हूँ. So Shri Sujit Kumar. Sir, I introduce the bill. And you do it after the House approves it. And that is reflected through me. The Central Educational Institutions Reservation in Admissions Amendment Bill 2023, Shri Sujit Kumar to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce a bill further to amend the Central Education. Just the bill, just the bill, just the bill. Sir. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Good. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Sujit Kumar. Sir, I introduce the bill. The Representation of People Amendment Bill 2023. Shri Sandosh Kumar P to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Sandosh Kumar P. Sir, I introduce the bill. Thank you. The National Commission for the Welfare of Youth Bill 2023. Shri Sandosh Kumar P to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce the bill. The representation. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Sandosh Kumar P. Sir, I introduce the bill. Thank you. The Participation of Workers in Management Bill 2023. Shri Sandosh Kumar P to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Sandosh Kumar P. Sir, I introduce the bill. Thank you. The Constitution Amendment Bill 2023, amendment of Articles 343, 344 and 348, etc. I move for leave. Sir. Shri R. Girirajan to move for leave to introduce the bill. I move for leave to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri R. Girirajan. I introduce the bill. The Black Money Recovery Bill 2023. Shri M. Mohammad Abdullah to move for leave to introduce the bill. Thank you, sir. I seek to move for the leave to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri M. Mohammad Abdullah. Thank you so much, sir. I introduce the bill. The Freedom of Marriage and Association and Prohibition of Crimes in the Name of Honor Bill 2023. Shri Ramnath Thakur to move for leave to introduce the bill. Move kiya. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Good. Thakur Sahab said aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Ramnath Thakur. I introduce the bill. The Constitution Amendment Bill 2023, amendment of Articles 124 and 217. Sir, Chairman, sir. Sir. No, sir. I have to open the door.
Shri V. Vijay Sai ready to move for leave to introduce the bill. Now. Chairman, sir, reservation in judicial appointments for backward classes in No, the no. Supreme Court and High Court, sir. No. Sir, I move for leave to introduce Constitutional Amendment Bill 2020. Good enough. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri V. Vijay Sai Reddy. Sir, I introduce the bill, sir. The Consumer Protection Amendment Bill 2023. Shri V. Vijay Sai ready to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce Consumer The question Protection is Amendment Bill that leave be 2020. granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Vijay Sai Reddy forgot. Sir. Okay. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri V. Vijay Sai Reddy. Sir, I introduce the bill, sir. The Central Universities Amendment Bill 2023. Shri V. Vijay Sai ready to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce Central Universities Amendment Bill The 2020. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri V. Vijay Sai ready. Sir, I introduce the bill, sir. The Prevention of Custodial Torture Bill 2023. Professor Manoj Kumar Jha to move for leave to introduce the bill. Sir, with your kind permission, I move to seek the leave of the House for the introduction of this bill. To move the bill. To move the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Professor Manoj Kumar Jha. Sir, I introduce the bill. Thank you so much. The Constitution Amendment Bill 2023, Amendment of Article 51, Capital A. Professor Manoj Kumar Jha to move for leave to introduce the bill. Sir, with your kind permission, I wish to seek the leave of the House to move this bill, which is all about fraternity. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Professor Manoj Kumar Jha. Thank you so very much, sir. I introduce the bill. The Payment and Settlement Systems Amendment Bill 2023. Dr. Amar Patnaik to move for leave to introduce the bill. Sir, I rise to seek leave to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Aye. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Amar Patnaik. I introduce the bill. Thank you, sir. The Indian Penal Code Amendment Bill 2023, substitution of sections 305 and amendment of section 375. Dr. Amar Patnaik to move for leave to introduce the bill. Sir, I rise to seek leave of the House to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Amar Patnaik. Sir, I introduce the bill. The Adaptation of Climate Change, Resilience, Rehabilitation and Resettlement Bill 2023. Shrimati Vandana Chauhan to move for leave to introduce the bill. So I move for leave to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shrimati Vandana Chauhan. I introduce the bill, sir. The Constitution Amendment Bill 2023, insertion of Article 16, Capital A. Shri M. Shanmugam to move for leave to introduce the bill. Thank you, sir. I move to leave to introduce the bill, sir. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri M. Shanmugam. I introduce the bill, sir. The Motor Vehicle Drivers and Other Workers Welfare Fund Bill 2023. Shri M. Shanmugam to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce the bill, sir. The question is that leave be granted to introduce the bill.
Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Sri M. Sanmugam. Sir, thank you, sir. I introduce the bills. The Representation of People Amendment Bill 2023, Sri Javed Ali Khan to move for leave to introduce the bill. माननीय सभापति जी, मैं लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2023 को सदन में पुरस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Sri Javed Ali Khan. मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं। The Constitution Amendment Bill 2023, amendment of Articles 111, 200 and 201. Sri A.D. Singh to move for leave to amend the bill. Sir, I move to leave for leave to introduce a bill further to amend the The Constitution. question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri A.D. Singh. I wish to introduce the bill. You With don't your wish. permission, I wish to introduce the bill. No, don't wish. You say I introduce the bill. I introduce the bill. The Special Financial Assistance to the State of Bihar Bill 2023, Shri A.D. Singh to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri A.D. Singh. I introduce the bill. The Indian Penal Code Amendment Bill 2023, insertion of new section 377 capital A. Shri A.D. Singh to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri A.D. Singh. I introduce the bill. The Witness Protection Bill 2023, Shri S. Niranjan Reddy to move for leave to introduce the bill. Not present. The Compulsory Teaching of Lifestyle for Environment Life in Schools Bill 2023, Shri Biplab Kumar Dev to move for leave to introduce the bill. I rise to leave to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Biplab Kumar Dev. I introduce the bill. The National Commission for Fishermen Welfare and Support Bill 2023, Shri Mastan Rao Bida to move for leave to introduce the bill. Not present. The Mental Health Care Amendment Bill 2023, Shri Surendra Singh Nagar. Sir, I move for leave to introduce a bill. Let me read out. Let me open the window for you. Shri Surendra Singh Nagar to move for leave to introduce the bill now. Sir, I move for leave to introduce a bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Surendra Singh Nagar. Sir, I introduce the bill. The Right of Children to Free and Compulsory Education Amendment Bill 2023, Shri Tiruchu Siva to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce a bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Tiruchi Siva. Sir, I introduce the bill. It has come to an end. The list has come to an end. I have to inform honorable members
that the Business Advisory Committee, in its meeting held today, on the 8th of December 2023, has allotted time for government legislative business as follows: consideration and return of the following bills after they are introduced, considered and passed by the Lok Sabha: the Central Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2023, 2 hours. The Provisional Collection of Taxes Bill 2023, 1 hour. Honorable members, considerable time was taken today for the motions for introduction of about 70 private members' bills. I suggest we may continue with the consideration of private members' bill beyond 4:30 p.m. till 5:15 p.m. After that, permitted special mentions will be taken up. Is that sense of the House? The Constitution Amendment Bill 2022, amendment of Article 153 and substitution of Articles 155 and 156. Further consideration of the following motion moved by Dr. V. Sivdasan on the 9th December 2022, that the bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration. On the 9th December 2022, Dr. V. Sivdasan had not concluded his speech while moving the motion. He may therefore be called upon to continue his speech. Dr. V. Sivdasan. Respected Chair of the House, here the Constitution Amendment Bill 2022, amendment of Article 153, substitution of Article 155 and 156 is a very important bill. It is in the public interest that the governor's position is to be filled not by the president under the advice of the union government. The governor should be appointed by the state itself. The will of the people has to be respected. The governors cannot act as stooges of the union government. Sir, currently, governors are working as tool of the institution of the union government into the state. We have a lot of examples. The first article of our constitution starts with the sentence that I quote, India, that is Bharat, shall be a union of states. It proves the importance of the states. Federalism is a part of the basic structure of our nation, basic structure of our constitution. We all know the existence of our great nation. India is linked with the existence of its basic character, that is unity in diversity. If the diversity is ruined, then the majority of the people will be marginalized. That means they will lose their identity, language, culture, and habitat. It cannot help in their development. Diversity is the basic principle of the federal structure of our nation. Unity develops and strengthens its diversity. The very structure of our nation, India, as the union of the states, is built by the positive spirit of love, affection, and great respect to the diversity. Respected Chair, our great nation, India, was not built by the bricks or bullets and guns or the missiles and forts. It was built by the struggle of freedom fighters, tears of workers, and the sweat of peasants. Respected Chair, they have differences in their opinion,
They have differences in their religion, languages, ideas, and identity, but they all are those differences, all above the all differences, they had deep commitment to the values of humanity. Respected here, what do we see? The rights of the states are reduced day by day by the union government. Respected Chair, not only have the rights of the states, the rights and the powers of Rajya Sabha, the Council of State also being reduced by the same union government through the money bills. Respected Chair, if we fail to protect the interest of the state as the representative of the states, then the great values of federalism will be destroyed by the rulers. Chair, respected Chair, world history reminds us the autocrats and their political parties have always attacked the diversity, and they have tried to establish their own power, and they have promoted only a monolithic culture. Respected Chair, the dangers of this attitude had been proven by the experience in various countries like Italy and Germany. We, as the representative of the people, as the representative of the state of India, should oppose the attack against the diversity, the steps against the legislative rights of the states, and undemocratic style of functioning of union government. In India, we have various identities. It is our strength. The great forefathers of our nation told us, unite against intolerance. Respected Chair, when the British colonial powers, they had divided the state of Bengal into West Bengal and East Bengal. The people of Bengal had united and fought against the bifurcation. Finally, the British Empire, they had to surrender in front of the massive movement led by the unity of the people. The leaders of the present colonialism, big corporates, have identified that one of the premier enemies of them is the unity of the people. That is why the ruling class of the country is practicing the same kind of colonial policy, divide and rule. The governors in the states, they are working as a tool of the imperialist policy of divide and rule. Wherever the state government is taking the stand to promote the secularism, then the governors are trying to promote the politics of hate. Respected Chair, in Kerala, the Assembly, everybody know that, the Assembly passed a resolution against NRC and upheld the secular values of the nation, secular values of the states, but the governor of Kerala had openly supported the politics of communal venom. Sir, the division of power is the part of our constitution. This is a part of our nation character. The powers are divided between states and union. But day by day, the powers of the states being reduced by the union government is utilizing the residuary powers to capture the powers of the states. Unfortunately, the governor has also become instrument to implement the plan of the union government. The education and forests, the two sectors which are the classic examples of violation of the division of power. Education and forests were the state subject, but now the entire sectors are under the union government. Earlier, agriculture was in the hands of the states, but the intrusion of the union government has happened there too. The dam and the hydel projects in the states are also serious cases of capture of power. Earlier, the state governments have some powers related to the
state. The state governments have taken the stance against these kinds of interventions. But some governors of the states has openly criticized the initiatives of the states. It has widened the gap between the elected state government and the nominated governors. The people of the state are requesting for more autonomy, but the union government is trying to pave the way for more centralized administration through the governors. The states like Kerala, Tamil Nadu, and Telangana are fighting for their rights in various ways. The representative of these states are here. Sir, kindly look at the approach adopted by the governors in the states. They are standing against the interest of their own state governments. The centralization versus decentralization is the core of the clash between states and the governors. Decentralization is the spirit of the age. That means the autonomy of the states, but also the autonomy of the Panchayati Raj institution. It is also a serious concern of the democratic movement in the country. Autonomy of the state does not mean the autonomy of the Raj Bhavans. Autonomy of the state does not mean the autonomy of the Raj Bhavans. The existing wrong notions of the government, governor, and the union government should be corrected. The governors are holding the bills passed by the assembly in the name of concurrent list or reductory powers. The union government has so far ignored the demand of the states to place at least the residuary powers of legislation in the state list. The ministers are here, but the government, the union government, is not ready to hand over these residuary powers to the states. We have seen the examples of usage of residuary powers in many ways against the interest of the states. In agriculture sector, the union government has made new laws, but it was withdrawn by the people because of the struggle of the people. About 800 people martyred in the struggle. But the governors, the titular head of the nation, were silent. They did not make any single statement against the move of the union government, the move of the government against the people, the move against the farmers of their state. On the other hand, many times the governors have criticized the state government. When the state government intervened for the protection of the people in the state assemblies, passed the resolution against the anti-people laws made by the union government. The strongest position against the anti-people laws of the union government has been expressed by the Legislative Assembly of Kerala in the resolution. But the titular head of the state took the stand against the resolution, against the interest of the state and the interest of the farmers. Then what is the meaning of the usage? The head of the state, the word head of the state. We all know the federal structure and great values of the constitution will be destroyed by these kinds of legislations by the union government. In education sector, state government have faced various issues. Everybody knows the extreme centralization in education sector is the one of the motto of the union government. The issue of NEET still exists. The Tamil Nadu state, the representative from Tamil Nadu is here. Tamil Nadu state government has taken a very strong stand for the protection of the interest of their state in the education sector.
Naturally, it is against the interest of the union government. It is against the wishes of the union government. The Legislative Assembly has passed the resolution against the need. The governor of the state openly criticized the state government and their principled position on the issue of need. The powers in the union government, the union list, are in the hands of the union government. They are taking the decisions unilaterally without any inclusion of the opinion of the states. Moreover, there is no formal institutional structure for the mandatory consultation between the union and the states for the legislation under the concurrent list. Sir, state revenue and the role of the governor should be discussed here. Why? This is an important subject. The revenue of the state is facing a lot of problems because of the intervention of the governors. In this great republic, one of the governor in India openly told the public that he did not sign the budget speech of the state government. It has created an uncomfortable situation in the state. The duty of the governor is to follow the advice of the cabinet. The wise men who have adorned this post had worked in such a way. But reality of this spirit is that the wisdom is rare in Raj Bhavans. The post-liberalization period witnessed a sharp decline in the fiscal health of the state government. Most of the states are facing fiscal crisis. The important factor behind this fiscal crisis strain is the policy of the union government. That is why the states are facing the fiscal crisis. Many states have tried to introduce different alternative measures to overcome the situation. But unfortunately, then the governors are making headwinds. The governors are making headwinds. The residuary powers of taxation in the sphere of services are being unilaterally used by the union government. To the total exclusion of the states, the GST captured the entire right of the taxation of the states and LSGs. The allocation of the money to the states is linked with the reforms in the administrative sector. The financial allocation. Honorable member, may I just request you, in the previous session, you had taken about 21 to 31 minutes roughly to speak. You have taken about 15 minutes. So if you think about concluding shortly, then other members will also get an opportunity. I will finish. Thank you. Because you had already spoken in the earlier session, that is why I'm just requesting. Thank you. The residuary powers of taxation, already I mentioned here, the allocation of the money to the states is linked with the reforms in the administrative sector. The financial allocation of the union government is not charity. It is the right of the states. So the financial allocation should not be linked to any kind of reforms by the union government. The governors should stand for the financial autonomy of the state. It is the duty of them. The financial burden of the state caused by the governors should be discussed. Fiscal crisis of the states and the expenses of the governors should be debated. I have received an answer from the government to my question that the total expenditure of the National Mission for Libraries in the year 2019-20 is only 73 lakhs. Annual expenditure of some Raj Bhavans is more than 30 times. Respected Chair, media has reported Maharashtra government has given an answer to an RTI question. They revealed that the expenditure of governor for 2 years is 60 crore rupees. It is the 10 times of the allotted amount of the union government to National Mission for Libraries. Currently, the expenditure of the running of the office of the governor and the family of the governor is the duty of the state. This expenditure of the governors should be audited by the society. The governors are appointed by the union government, but the salary and other
allowances are paid by the state government, appointed by the union government, but the salary paid by the state government. We need to start it is wrapping up, irrational. honorable member. The salary of the representative of the union government, appointed by the union government, should be paid by the union government. The burden of the salary and upkeep should not be transferred to the state. 1 minute, within 2 minutes, I will finish. The Rajbhavans are representing the colonial era of India. Majority of the Rajbhavans are not only the residents of the governors, but also their leisure houses. Look at the existence, expenditure, and facilities of the Rajbhavans. In Maharashtra, 4 Rajbhavans, Mumbai, Nagpur, Pune, Mahabaleshwar. Sir, one governor is residing in 4 palaces in a single state. A palace for 3 months. That means for the rest of 9 months, the palace is empty. Then how this palace will be maintained? When governor is not there, who will occupy the palace? Crores of Indians are living without a shelter, but a governor, a titular head of the national state, is using 4 palaces. Why these kind of practices are continuing? During the travel, the VVIPs, chief minister and ministers, are utilizing the circuit houses or guest houses. Then why the permanent palaces for the governor in different places? They hardly stay in these palaces. Uttarakhand, sir, 2 Rajbhavans, Dehradun and Nainital. Nainital Rajbhavan occupies 220 acres land, which includes 45-acre golf course. The residence of the governor is a highly restricted area, but the golf course is 45 acres. State government should ensure that this land is occupied, land is properly utilized. And in Tamil Nadu, there are 2 Sir, I'm giving you the last minute. Thereafter, I'll move I will on. mention only the residential. I've already indulged you in the previous session. You have spoken 31 minutes. Tamil Please Nadu, conclude. there are 2 Rajbhavans. There are Chennai and Ooty. Chennai Rajbhavan estate is 156 acres. It is in the reserved forest area. It might be buffer zone. In Tamil Nadu, I don't know, the governor is in the buffer zone. Ooty is one of the noted tourist place of the nation. Is the governor is a tourist, sir. Winter palace, summer palace. How rich a country, sir. In West Bengal, Honorable member, I'll have to move on. I'm moving West on. Bengal, I'm moving on. Okay, I'm moving on. 1 second. Please conclude your last comments, please. West Bengal, 2 Rajbhavans. One is Calcutta and second one is Darjeeling. In Odisha, your own state, 2 Rajbhavans. One is Bhubaneswar and another one is Puri. I think I'll have to In move Madhya on. I've Pradesh, given you 2 time. Rajbhavans. I've requested you repeatedly. Please, your closing comments and we move on, Okay, please. sir, I am finishing. These things, the governors, the titular head of the states, how they are making the hurdles of the state, administrative function of the state, these things, this August House, please discuss seriously. And I request the state, all of you take the initiative for stop the revenue, making the hurdle, making the hurdles and taking the wrong practices of the governor and try to end the colonial era's practices in our nation. Thank you, sir. Thank you. With these words, Thank you. Motion moved. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Dr. Anil Agrawal, Honorable Member. 9 minutes allotted to you. महोदय, भारतीय संविधान की एक खूबसूरती रही है कि किसी भी पद पर, किसी भी संवैधानिक संस्था पर कोई ना कोई क्रॉस चेक जरूर रहता है। इस संविधान में जो गवर्नर का पद है बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और जब संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को बनाया, बहुत सोच समझकर इस पद को बनाया गया और
इस पद पर हमेशा बहुत ही विद्वान व्यक्ति रहे हैं। मेरे जो मित्र केरला से आते हैं, मैं उनको भी बताना चाहूँगा, वहाँ वर्तमान में भी जो गवर्नर हैं महामहिम श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर। आप अगर उनकी स्पीचेस सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में आप किसी विद्वान व्यक्ति की स्पीच सुन रहे हैं। और हिंदुइज्म और जो जिस धर्म से वो आते हैं मुस्लिम, उसके बारे में श्लोक और आयतों के माध्यम से जो वो बोलते हैं, पूरा देश उनकी बातों को सुनता है। अधिकांश ऐसे हमारे महामहिम हैं जो वास्तव में बहुत ही विद्वान हैं और वो संविधान की रक्षक के रूप में स्टेट में काम करते हैं। जो मेरे मित्र ने कहा, अगर उस बात को मान लिया जाए तो पूरी जो संवैधानिक ढांचा है वो ही चरमरा जाएगा। और जो क्रॉस एंड चेक की जो हमारी एक संस्कृति है, पद्धति है, एक तरीका है, वो पूरा का पूरा हमारा समाप्त हो जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट्स जो चुन के आएंगी वो पूरी तरह से मनमानी हो जाएंगी, बेलगाम हो जाएंगी। कई बार लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे भी लोग चुन के आ जाते हैं जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, जिनकी कोई विचारधारा नहीं होती, किसी भी मुद्दे पर चुनकर आ गए और उसके बाद वो मनमानी करने की कोशिश करते हैं। और मेरे विद्वान मित्र ने जो कहा, जिस प्रकार से वो महामहिम को हटाकर और उस पद को दोबारा लाना चाहते हैं, उसमें उनका जो सजेशन है उसमें ये है कि साहब वहाँ के जो MLAs हैं, वहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, वहाँ के जो कॉरपोरेशंस हैं, वो सब मिलके महामहिम का चुनाव करें इलेक्शन। महोदय, स्टेट में ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर का जो चुनाव होता है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से होता है। और एक स्टेट में अगर दो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दोनों इलेक्टेड हो जाएंगे तो शायद जो पर्पस था हमारे संविधान निर्माताओं का गवर्नर के पद पर नियुक्त करने का, वो पूरी की पूरी तरह से डिफीट हो जाएगा। महोदय, मेरे मित्र ने एक ये भी सुझाव दिया है अपने बिल में कि 2/3 अगर MLAs को चाहें तो वो गवर्नर को हटा सकते हैं। गवर्नर के पद पर वर्तमान में जो नियुक्ति होती है वो महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है और राष्ट्रपति इलेक्टेड पद है। महामहिम राष्ट्रपति जी का जो चुनाव होता है उसमें हर विधानसभा के विधायकगण, लोकसभा के सांसदगण, राज्यसभा के सांसदगण, सबकी डिफरेंट वैल्यूज MLAs की रहती है, MPs की रहती है और पूरे देश में उसका एक बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है। और उस चुनाव के आधार पर महामहिम राष्ट्रपति का पद पर व्यक्ति आसीन होता है। उनकी इंटीग्रिटी को या उनके द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति को किसी भी प्रकार से शंका की दृष्टि से देखना मेरे ख्याल से ये उचित नहीं होगा। मैं आपको पूर्व में भी ले जाना चाहता हूं, जो मेरे मित्र मुझे लगता है गवर्नर के पद से परेशान हैं। कुछ कांग्रेस सरकारों में इस प्रकार के गवर्नर्स रहे हैं जिनका आचरण ठीक नहीं रहा, तो मुझे लगता है वो दृष्टांत उनके सामने है। लेकिन अधिकांश मामलों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है और गवर्नर्स की अपनी एक गरिमा है। आप देखिए, जब स्टेट इलेक्शंस का चुनाव होता है उस समय गवर्नर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर गवर्नर भी राजनीति से प्रेरित होकर काम करने लगे तो मुझे लगता है पूरी की पूरी जो संवैधानिक व्यवस्था है, चीफ मिनिस्टर को शपथ दिलाने की व्यवस्था है, उनका सदन में जो बहुमत सिद्ध करने की व्यवस्था है, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो प्रभावित हो सकती है। महोदय, राजभवन के रेजिडेंसेस के बारे में कुछ मेरे मित्र ने बताया है कि किसी स्टेट में 3 हैं, कहीं 4 हैं।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजभवन वास्तव में कई स्टेट में ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें 1 सीट या 2 सीट महामहिम राज्यपाल के लिए आरक्षित रहता है। बाकी का जो राजभवन है वो बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा यूज किया जाता है, उनके सेक्रेटरीज के द्वारा यूज किया जाता है। और उन राजभवनों में जब महामहिम नहीं भी रहते तब भी स्टेट में वीआईपी गेस्ट उसी राजभवन में निवास करते हैं। और ये एक ऐसी व्यवस्था है जो सुरक्षा की दृष्टि से भी उचित है। कई बार हमारे बहुत सारे ऐसे गणमान्य व्यक्ति होते हैं जो उस स्टेट में विजिट करते हैं और विजिट करते समय उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है, तो उनको उन राजभवनों में ठहराया जाता है। वो राजभवन सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी लोकेशंस पे हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, तो उसमें जो हमारा बाकी की जो चिंताएं होती हैं उन महामहिम व्यक्तियों को ठहराने की, वो चिंताएं हमारी दूर हो जाती हैं। महोदय, आज जो राष्ट्रपति महोदय द्वारा गवर्नर को चुने जाने का, चयनित करने का जो सिस्टम है वो भी बहुत लोकतांत्रिक है, और अगर उसमें हम किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है उसका रिजल्ट बहुत खराब होगा। हमारा जो गवर्नर का पद है बहुत ही एक महत्वपूर्ण पद है और राज्य सरकार की मनमानी को रोकने का एकमात्र जरिया है कि वो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति उसमें बहुत सारे निर्णय करते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि उस व्यवस्था पर भी हमारे न्यायालयों द्वारा उचित कार्रवाई समय समय पर की गई है। अगर किसी महामहिम राज्यपाल द्वारा कोई निर्णय गलत लिया गया है, कोर्ट में चैलेंज हुए हैं बहुत सारे निर्णय, विशेषकर जो उनके निर्णय चैलेंज हुए हैं वो निर्णय हैं जो सरकार के फॉर्मेशन से हैं, सरकार के बनाने से हैं, चीफ मिनिस्टर के शपथ से लेके चीफ मिनिस्टर नॉमिनेशन, चीफ मिनिस्टर का सदन में बहुमत, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो कई बार चैलेंज हुई हैं। उनमें भी लेकिन अधिकांश समय जो न्यायालयों के द्वारा जो निर्णय आए हैं। माननीय सदस्य, 1 मिनट आपका और है, और 1 मिनट है। कोई बात नहीं, मैं कंक्लूड करता हूं सर। उनमें भी जो व्यवस्थाएं रही हैं वो ऐसी रही हैं कि उनमें अधिकांश निर्णय जो महामहिम राज्यपाल के द्वारा लिए गए वही निर्णय अपहेल्ड हुए हैं। मैं पुनः अपने मित्र से ये अनुरोध करूंगा कि उन्होंने जो ये बिल लाया है इसको वो वापस लें। उन्होंने कुछ हो सकता है व्यक्तिगत कारणों से या और किसी दबाव में ये बिल लाए हों, लेकिन मुझे लगता है अगर वो बिल वापस लेंगे तो संविधान की मर्यादा बचेगी। संविधान भारत का जो निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर बनाया है और एक ऐसे पद पर जो बहुत बड़ा संवैधानिक पद है, उस पे हम किसी भी प्रकार से अगर मुझे लगता है छेड़छाड़ करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। और मुझे लगता है कि मैं पूरे सदन से ये अनुरोध करूं कि इस बिल के विरोध में अपना मत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Honorable Member Dr. L. Hanumanteya ji, 15 minutes. You have 15 minutes allotted by your party. Sir, thank you, Chairman. Sir, the private member bill moved by Dr. Shivadasan is timely, and this upper house with the representation of different political parties has to discuss thoroughly, and I request the house to have a unanimous decision on this in implementing the bill, so that the friction between the central government and the state governments, particularly the governments in the center and non-political attitude, will prevail in the state, sir. Sir, Article 153 says there shall be a governor in each state and one person can be appointed
and he can be given 2 or 3 states as in charge. A governor is appointed by the president and is a nominee of the central government. Sir, it is stated that governor has a dual role, that he is the constitutional head of the state, bound by the advice of the Council of Ministers of that particular state. Sir, he functions as a vital link between the union government and the state government. Sir, the governor has the power to grant pardons, reprieves, according to Article 161. Sir, the governor with the CM, head of the state, that except some conditions for discretions, he has to take the advice of the chief minister of the state, who is the head of the executive. Sir, the governor appoints the chief minister and other ministers according to the Article 164. He assents, withholds the assent, or reserves the bill for the consideration of the president passed by the Legislative Assembly. Then, sir, the governor may promulgate the ordinances under certain important circumstances according to the Article 213. Sir, governor is envisaged as the apolitical head. This is a very important factor to be considered. He is always an apolitical head who must act on the advice of the Council of Ministers. However, the governor enjoys certain discretionary powers granted under the Constitution. For example, giving or withholding assent to a bill passed by the legislature, determining the time needed for a party to prove its majority, or which party must be called first to do so, generally after the hung verdict in any election during the time. Sir, there are no provisions laid down for the manner in which the governor and the state must engage publicly when there is a difference of opinion. There is no provisions laid down so far, sir. Sir, the governor has 5-year term in an office. Sir, in 2001, the National Commission to Review the Working of the Constitution held that governor owes his appointment and his continuation to the union. There is an apprehension that he is likely to act in accordance with the instructions received from the Union Council of Ministers. It is only an apprehension, but it is not the fact. In the Constitution, sir, there are no guidelines for exercise of the governor's powers, including the appointment of a CM and dissolving the assembly. There is no limit set how long a governor can withhold assent of a bill. The governor sends a report to the center, which forms the basis of the Union Cabinet's recommendations to the President for invoking Article 356. This is another important article which the governor has to follow very carefully in the interest of the center as well as the state. Sir, why the attempts have been made to address concerns over the alleged partisan role played by the governors is the question I think we have to address today. Sir, changes regarding the selection of governors. Sir, the National Commission to review the working of the Constitution, appointed by the Atal Bihari Vajpayee's government in 2000, suggested that governor of a state should be appointed by the president after consultation with the chief minister of the state, which has to be noticed, and no central government so far has followed this, to have a consultation with the chief minister. Sir, the Sarkaria Commission, set up in 1983 to look into the center-state relations, proposed that Vice President of India and Speaker of Lok Sabha should be consulted by the Prime Minister in the selection of the governors.
This is another proposal by Sarkaria Commission, which is a landmark commission during that period. Sir, that Punchi Commission proposal says Justice Madan Mohan Punchi Committee constituted in 2007 on center-state relations proposed in its report that committee comprising the Prime Minister, Home Minister, Vice President, Speaker and concerned Chief Minister should choose the governor. This is another recommendation by the committee, sir. The Punchi committee also recommended deleting the doctrine of pleasure from the constitution, but backed the right of the governor to sanction the prosecution of ministers against the advice of the state government. So it also argued for a provision for impeachment of the governor by the state legislature. Sir, these are all the duties of the governors where we have to follow meticulously. Sir, unfortunately, today, what is happening, what are the comments in the public domain, and how the governor's officers have been treated by the central government, and why the state governments are forced to go to the Supreme Court to implement the constitutional spirit, which are not clear guide, which they don't have a clear guidance in this respect. Sir, the Supreme Court questions, can governors kill the bills passed by the Assembly? This is the question raised by the Supreme Court, sir. The substantive part of the Article 200 empowers the governor to withhold the assent of the bill. But in such an event, governor must mandatorily follow the course of action which is indicated in the first proviso of the communicating to the state legislature as soon as possible. A message warranting the reconsideration of the bill. But in most of the cases, sir, where people are in front of the Supreme Court today, the state governments are in front of the Supreme Court today, the minimum requirement of warranting the state legislatures as soon as possible, a message warranting the reconsideration of the bill has not been followed. Many a times, years together, bills were pending in the governor's office. This is the major cause to an elected government by the governors who are the representatives of the central government has followed. That is the major issue today which is under discussion. Sir, Baba Saheb Ambedkar has said during the draft constitution to the Constituent Assembly on November 4, 1948, Ambedkar highlighted the need to diffuse the constitutional morality in Indian society. He has also said that it is imperative to deepen the democracy, which is only a top dressing on Indian soil, which is essentially undemocratic. Sir, the journey of these 75 years of independence, the constitutionalism in India provides the perfect context to revisit the idea of constitutional morality, what Ambedkar said during that time, during 1948. It is also said the constitution and morality in light of the ongoing tussle between the governors and the elected governments, especially in Kerala, Maharashtra, of course not now, the government has changed, Punjab, West Bengal, Tamil Nadu. The noticeable factor is all these governments are non-BJP governments. That is what is to be noted today. Sir, the Supreme Court has expressed serious concern about the delays by the governors in assenting the bills passed by the state elected legislators. This violates the constitutional provisions and the doctrine of constitutional morality which Ambedkar was talking about. Sir, the Constitution of India has envisaged the role of the governors as
custodians of the constitutionalism in respective of states. However, owing to the nature of appointment using nominee selection by the union government, most of the time governors abide by the obligation of the ruling dispensation rather than the constitutionalism. This is the major observation at this time, sir. Sir, this has deepened the crisis between the union governments and the state governments, which is eroding the principles of cooperative federalism. Sir, the conduct of the governors in these states has resurrected the question of the need to continue the governors in office in a parliamentary democracy. That is the crisis today. That is a serious crisis today. So the fact that there is a conflict between the governor's office and the elected governments is a very sad part of the democracy, a serious concern of the democratic process. Sir, the immediate consequences of this trend are affecting the public governance and administration, erodes the harmonious relation between the state and central government, and it also affects the governor office, destabilizes the elected government as they are under pressure and non-performing the governance. This union-state relations, overall, the federal scheme of the constitution is in the state of disequilibrium. Sir, there are some solutions suggested by the experts of the constitution and people who have experienced the 75 years of independence. Sir, one that, firstly, the state government must be consulted before the governor's appointment by the union government. This is the suggestion, as recommended by the Sarkariya Commission. This will ensure much needed consultation between the union and state governments, thereby strengthening the relationship between both these governments in the true spirit of cooperative federalism. Sir, secondly, the Supreme Court of India must direct the Union Ministry of Law and Justice to frame the guidelines for the governor office in consultation with the Law Commission of India to assent to the bills on time to avoid unregulated delays in the future, which is very much required and necessary. Sir, thirdly, empower the office of the President of India. Honorable member, you have to one recall, more minute. I'll go according to your time. Empower the office of the President of India to recall the governors who are the subject of the constitutional violation in discharging the duties as per the Article 200. Article 200 has become a serious concern today, where the governors are playing with it, with the discretionary powers given by the Constitution to them are not followed with a judicious thinking and judicious decisions. Sir, lastly, the time has come to remove the word otherwise in Article 356 through a constitutional amendment, as governors have misused the word to dissolve many elected governments in the states. Thank you. So, sir, last sentence, this will curtail some of the discretionary powers and prevent the misuse of governor's office by the union government, whichever is in the power. These things, if they are followed, the real private members which we are discussing will have some fruitful decisions, sir. Thank you very much. Thank you. Honorable member Shri Jawahar Sarkar. You have 7 minutes. Thank you, sir. Thank you for giving us this opportunity of supporting the constitutional amendment brought in by Dr. Sivadasan to introduce election of governors as a mode to save the constitution. Now, one of the most depressing news that I as a legislature, you as legislators, we all as part of the overall structure of governance, one of the most depressing news that we have heard in the last few days is
the manner in which a governor, I am referring to the governor of Tamil Nadu, was pulled up by the Supreme Court for exceeding his jurisdiction. The Supreme Court has intervened from time to time, pulling up the governors of Kerala. Our governor in West Bengal has set new records, putting up the governors of Maharashtra for exceeding their powers. This all emanates from one mischievous word. I use the word, sir, one mischievous word in the Constitution that was a legacy of the colonial past. And this word is found, discretion is found in Article 163, subarticle clause 2. Now, based on this article, this is a colonial legacy. We all speak of colonial legacy, but we do not know how to define it. Anything that suits, anything that militates against our way of thinking, anything that militates sometimes against what I call the culture of the Ganga Valley, is said to be colonial and fit to be dumped out. No, it is not so. Colonialism spells itself out through the mechanics of power and hegemony. Through power and hegemony. And this is proved through the continuation of the powers of the institution of the governor in a democratic federal setup. This post came up from the Government of India Act, Imperial Act of 1919. It was carried on through the Government of India Act of 1935. And I would inform my honorable friends on both sides that the Deputy Chief Minister of West Bengal at that time, Shyama Prasad Mukherjee, whom they respect a lot, had a series of guerrilla wars with Governor Herbert, who did not allow him to exercise his democratic powers. Now, in a free and federal and democratic India, we should have learned the lesson and circumscribed, cut the talons of the governor, but instead we put this 163(2). Today, this bill seeks to bring in 153, an amendment to Article 153 to introduce elections. Now, we can't have a diarchy, sir. This is a democratic polity. You can't have two governments of India. There is one government of India that is elected by 37% vote. We respect it. Respect also the state governments that have been elected by the same electorate for governing their states. And do not assume that just because you have a colonial post, you can interfere with it, you can trip it, you can sabotage it whenever you feel like. You cannot. You have learned your lessons in the opposition. While in the opposition, you will learn them again when you come to the opposition. Now, having said this, West Bengal has the singular fortune of being out with the central government for 49 years. 2-3 generations. My generation has never seen any ability. And the instrument of the post of governor is used for every purpose, including the interference with the intrinsic law and order powers of the state. If there is any comment to be made, let the Home Ministry come up and make a comment. But why should a governor, advised by an undersecretary, I am saying, sir, at the cost of contradiction, all governors, irrespective of regime, are run by diktats issued by undersecretaries and deputy secretaries of the Ministry of Home Affairs. Come and challenge it and say, no, I will ask for the correspondence. I know what I'm talking about. It hurts the self-respect of any thinking person. The bureaucrats of North Block cannot be allowed to run a free run over the democratic aspiration of the different peoples of India. The election is because we consider the post of governor to be largely protocol, largely ceremonial, so that the chief minister doesn't have to run to every function. Seedhi baat mein keh diya. But then you can't bear such a huge expenditure. You can't go in for a huge expenditure and the lavish scale on which you have said. The lavish scale itself, whether the bill is passed or not, is a subject that government may like to review because it smacks of colonial imperialism. We have spoken, supposing, I'm giving a minute only, supposing you had a similar institution in the government of India. Supposing you had the president telling you morning and evening, ye aapne galat kiya, aapki law and order
I mean, you can't run. You are insulting the people who have elected that government, the central government or the state government. You cannot run. We had a small instance of this when President Zail Singh was having his run-ins with the Prime Minister of India. And that is not a very pleasant experience. Remember that experience and squeeze it to the experience of states. You'll know how you have created a ceremonial post into a nuisance, absolute nuisance. I support the election because the election would again be in tandem with what the people of that Honourable state member, want 1 minute. for the governor, what they want for the governor. Sir, the core of our strength is federalism. As of democracy, it is federalism that represents. I come from a state that is quite distant from the Ganga Valley. I come from a state that is quite distant from Tamil Nadu. But we feel that we are all together because we are respected. If you carry away the self-respect, you destroy India. We are one because we are many. Do not try to homogenize us. With these words, I support them. Thank you. Honorable Member Shri Santosh Kumar P, you have 3 minutes. Thank you, Vice Chairman. Even though the mover of the bill belongs to a political party which is very close to my party, I can't support this bill because my party, the Communist Party of India, stands for the abolition of the very post of governor. And this issue was highly debated in the Constituent Assembly as well, years ago. And Rohini Kumar Chowdhury, a prominent member from Bihar, had stated that a piece of cow dung can spoil entire vessel of milk. She was referring to the activities of the governor of Sindh. It's not history, but this is relevant even today. Governors they have become trouble engines to destroy everything in states. I don't want to give you a details of what is happening in Kerala and Tamil Nadu. Governors have become political manipulators. So why we need the post of governor? The mover have given a detailed list of examples, how the governors are spending money, how decorative their life is, how extravagant they are. So I don't want to add anything more. To perform the role of a governor and the duties of a governor, if at all anything is there, that can be done by the Chief Justice of a state or a Supreme Court Chief Justice. Nothing more is required. So I think it is high time to think about the abolition of the very post of the governor. And secondly, I think almost all parties are in agreement of the continuation of the post of governor. At least let us think about changing the very name of Raj Bhavans, because it's an old British name. No, I am not in favor of the name changing virus. That virus has affected everywhere in our country, every aspect of life, sphere of life. But Raj Bhavans, these people who are sitting in the Raj Bhavan think they are Rajas of modern time. So they at least let us, take initiative to rename Raj Bhavans. And moreover, I can tell you, this extra-constitutional overstepping activities of the governors must be controlled at any cost. And when we talk about the election of a governors, see, you have these a minute are more. not at all relevant because the electoral college which he suggests consists of even local representatives, or representatives from local bodies. That makes it's a very strong position because the chief minister, if you want to elect the chief minister, what you want? You have to, the members of the assembly can elect the chief minister. But here to elect the governor, you need the support of members of the assembly plus local, body representatives. That makes Member, the please post conclude. of the governor Your time is more, running out. let me complete, sir, please. 1 minute. Make it more, what is to say, more powerful. So that it should not be higher than the elected chief minister of a state. The chief minister is, of course, that is the highest democratically elected body in a state. Then how can be the governor above that? Then, moreover, to dismiss the governor, we don't want the representatives from the local bodies. Honourable member, your time is over. That also Please drawback conclude. of the bill. So Please anyway, sir, let me add this point once again, that we all have to think about the post of governor, and this post must be abolished at any cost. Thank you. Thank you. Honorable Shri R. Girirajan ji, just before you start, let me clarify that you have 3 speakers from your party, and the total time for your party is only 5 minutes. Total time. So therefore, we'll be only able to provide 2 minutes or max 2.5 minutes per member.
It is decided as per the roster. I can't help it. But, sir, Honorable Tiruchi ji, you are a senior member. You were part of the chair, you know. We work by the roster. We can't have a discretion. So 2 minutes, sir. Please Sir, start. respected sir. Thank you, sir. Thanks, my leader, Tiruchi Siva. It's the right time to discuss the governor's need or not. I want to say in Tamil, our leader, Perurijar Anna, who has இந்த அவையிலே மிகப்பெரிய தலைவராக பரிணாமப்படுத்தப்பட்ட நேரத்திலே அவர் சொன்ன வார்த்தை, ஆட்டுக்கு தாடி தேவையில்லை. Beard not to the goat. Like governor's post not necessary to the government, state governments. ஆட்டுக்கு எப்படி தாடி தேவையில்லையோ நாட்டுக்கு கவர்னர் தேவையில்லை. இந்த கவர்னர் பதவி என்பது மிகப்பெரிய அலங்கார பதவி. இந்த அலங்கார பதவி என்பது ஒருவரை கவர்னர் ஆக்கிவிட்டு மத்திய அரசு தனக்கு வேண்டாத அரசுகள் இருக்கின்ற இடத்துங்களிலே அவர்களை தலையாட்டி பொம்மைகள் போல் வைத்திருப்பதற்காக கவர்னரை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்தியாவிலே மகாராஷ்டிரத்திலே என்ன ஏற்பட்டது? கேரளத்திலே என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது? தெலுங்கானாவிலே என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது? ஏன் எங்கள் தமிழ்நாட்டிலே என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது? 15க்கும் மேற்பட்ட மாநில அரசுகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட, மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெரும்பான்மை பெற்ற மாநில அரசாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அரசு தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையிலே இயங்கிக் கொண்டிருந்த போதிலும் நாங்கள் அரசியல் சட்டம் வகுத்து தந்திருக்கின்ற நெறிமுறைகளின் அடிப்படையிலே பல்வேறு மசோதாக்களை, மக்கள் நலனுக்கான மசோதாக்களை நிறைவேற்றி கவர்னருக்கு அனுப்பிய நேரத்திலே கிட்டத்தட்ட 2 ஆண்டுகளாக 15க்கும் மேற்பட்ட மசோதாக்களை தன்னுடைய காலுக்கு அடியிலே போட்டு மிதித்துக் கொண்டிருப்பவர் தான் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டின் கவர்னராக இருக்கின்ற திரு R.N. ரவி அவர்கள் என்பதை இந்த மன்றத்திலே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். We have to discuss. Please wrap up, please. The time limitation should fix for assent given by the governors on several issues. In India, states are also not strangers to controversies arising with their governors, most of them relating to choosing of chief ministers, conducting floor tests, dissolving legislative assemblies, recommending president's rule and delaying assent to bills or reserving them for president's consideration in the recent times besides Tamil Nadu, Chhattisgarh, Haryana and Kerala and Telangana. Article 153 of the Constitution provides for a governor in each and every state. The executive powers are vested in the governor under Article 154. Honorable member, the constitutional please conclude. We'll scheme have to move on. warrants that assent of the governor or the president is a necessary for all bills to become the law of the land. The Supreme Court in Shamshar Singh versus State of Punjab 1974 has settled the position that the governor is only a constitutional head under the executive powers of the state. I'm moving on, honorable member. I'm Exercised sorry, by the your time is up. Council I'll of have to move Ministers, on. which you have Article of Shri India. Sujit Kumar, honorable member Shri Sujit Kumar. Sorry, I'll have to move on. Shri Sujit Kumar. I'm sorry, your time is up. Honorable member Shri Sujit Kumar. No, it's as per time. It's as per time. I'm sorry. You know the rules. You know the rules. You know the rules. Honorable member, please sit down. It's not going on record. It's not going on record. It's not going on record. Please. Honorable member Shri Sujit सर मेरा Kumar. समय अभी शुरू होना चाहिए. All right. और सर आप तो दिलदार हैं, 1-2 मिनट ज्यादा दे दीजिएगा. मेरे हाथ में नहीं है, माननीय चेयरमैन साहब का निर्देश. Sir, although I acknowledge and appreciate. You have a total of 5 minutes. Sir, 1-2 minutes, sir. Sir, although I appreciate and acknowledge the sentiments and the spirit with which this bill has been introduced by my dear friend and esteemed colleague, Mr. Shivdasan, I do not support the bill because I think it is neither desirable nor feasible. And I'll give you 4 reasons, sir. One is the issue of accountability. One is the constitutional reasons. Third is the normative grounds. And fourth are the constitutional debates which have settled this issue in my view. Sir, we have to understand the difference between accountability and constitutional responsibility. The high office of governor is that of constitutional responsibility, constitutional authority, not
accountability. Sir, in his arguments, the Honorable Member Shivdasan ji, sir, alluded to the stature and dignity of the high office of the governor. I completely am with him on that. And he argued that because of this high office which the governor holds, he should enjoy the support, legitimate support of the people, and he should be accountable to the people. But sir, for this, we already have an elected government in the state. Can you have two parallel power centers, one of the chief minister and one of the governor? Sir, the office of governor should evoke, sir, cooperation and respect. And to give further clarity, I would like to quote what the Constitutional Assembly member, Mr. B.G. Kher, had said. The most important principle of good government in a popular constitution is that no executive functionaries should ever be appointed by popular election. No executive functionaries should ever be appointed by popular election, neither by the votes of the people themselves, nor by those of their representatives. Sir, next I come to the normative grounds why I oppose this bill. Sir, the office of governor should exert an all-pervasive moral influence on the state, sir, state government and the people of the state. Sir, I'd like to quote Sarkaria Commission, which Hanumantia ji elaborately referred to. Sir, Sarkaria Commission on Interstate Relations quoted the office of governor as the constitutional head is to act as friend, philosopher, and guide to the elected government, the Council of Ministers. And sir, if we have an elected governor, as is envisaged in this bill, sir, we will not have the check and balance, which is the core of our constitution, sir. How can an elected governor, sir, operate freely without being beholden to the party that has elected or that has chosen that person to be elected? Sir, how can the governor think independently? Sir, these are the reasons why I oppose this bill. Sir, while addressing the Conference of Governors in June 2005, the former President of India, Dr. Kalam, observed that while there are many checks and balances provided by the Constitution, the office of the governor has been bestowed with the independence to rise above the day-to-day politics and override compulsions either emanating from the central system or the state system. Sir, now I'll refer to the constitutional grounds why I oppose this bill. Sir, in our scheme of things, constitutional scheme of things, the governor plays a very important role in maintaining the federal structure of our constitution, which also is part of the basic structure in the Supreme Court judgment of 1973, Kesavanand Bharati judgment. Sir, the celebrated judgment of S.R. Bomai versus Union of India explains in detail the importance of this role, and I quote, this is the Honorable Supreme Court: the key actor in the center-state relations is the governor, a bridge between the union and the state. The office of the governor is a vital link and a channel of impartial and objective communication of the working of the constitution by the state government to the President of India. And he goes on, the judgment goes on, because of paucity of time, I will not get to it. Sir, it is also important for the House to visit the Sarkaria Commission report on the role of the high office of the governor, and I will briefly quote from the report. The governor in our system does not function as a constitutional head for the whole gamut of his responsibilities. There is an important area, though limited and subject to constitutional constraints, within which he acts in the exercise of his discretion. Honorable member, last minute. Sir, his live link of channel between the union and the states. He is a live link of channel between the union and the state. Sir, finally, I'll refer to the constitutional debate. Sir, on this very issue, eminent member T.T. Krishnamachari had quoted, and I quote, the position is either you make the legislature supreme or you make the governor supreme. If you adopt the presidential system, the governor is supreme. But under the parliamentary system that we have, the legislature and the leader of the majority party in the legislature will be supreme. The choice is obvious, and that choice is logical. Sir, unquote. Sir, in their infinite wisdom, the founding fathers of our constitution had anticipated such a situation. And there was elaborate discussion for 2 full days, sir, on 30th of May 1949 and 31st of May 1949. And 2 alternatives were suggested. Sir, give me, sir, 30 seconds. Sir, alternative 1. This is Article 131 of the draft Constitution of 1948. First alternative, the governor of a state shall be elected by direct vote of all persons who have the right to vote at the general election for the legislative assembly of the state. This is the first alternative. Second alternative, the governor of a state shall be appointed by the president Honorable member. by warrant under his 30 seconds, sir, and seal from a panel of 4 candidates to be elected by the members of the legislative assembly of the state, or where there is legislative council in the state by all the members. Please conclude. Sir, after exhaustive and elaborate discussion, deliberation, debate, the Constituent Assembly adopted this second alternative with some modification,
which is Article 151 as it stands today, that the governor of a state We'll shall have be to appointed conclude. by the president Honourable by member. warrant under his hand and seal. And sir, our first Prime Minister Pandit Nehru also, sir, sided with this argument, the second alternative. Please conclude. And Please sir, conclude. I feel there is no compelling reason to deviate from the wisdom of our founding fathers, and I oppose this. This is the reason I oppose this. Honorable Member Professor Manoj Kumar Jha, you have 3 minutes. वाइस चेयरमैन साहब, आपको शुक्रिया कहने में और जय हिंद बोलने में ही वक्त गुजर जाएगा। बहरहाल माननीय उपसभापति महोदय, वाइस चेयरमैन साहब, मैं उन तमाम पीड़ित राज्यों के पक्ष में खड़ा हूं जो अपने अपने लाट साहब से परेशान हैं, और परेशानी कई तरह की है। मैं तो ये मानता हूं हमारे बीजेपी के मित्रों के पास बहुत अच्छा पूल है। अब यही कितने लोग हैं जिनको मैं चाहूंगा अपने स्टेट ले जाऊं बिहार, गवर्नर बना करके। अच्छे लोग हैं, लोकतांत्रिक, विशाल हृदय। तो सर, माननीय उपसभापति महोदय, एक वाकया बताना चाहता हूं। 1952 में बीसी राय, कोई नहीं है तृणमूल के शायद, बीसी राय वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे। नेहरू जी ने किसी को गवर्नर नियुक्त करने की कोशिश की, तो बीसी राय साहब ने कहा कि हमारे यहां नॉन बंगाली गवर्नर नहीं चलेगा। हालांकि उसके बाद काफी चीजें बदल गई, तो एचसी मुखर्जी साहब की नियुक्ति हुई। फिर 57 में वैसा ही कुछ हुआ, तो बीसी राय जी ने फिर कहा कि ना, वही बात अभी भी रहेगी, हमको बंगाली गवर्नर चाहिए। तो पद्मजा नायडू पर सहमति बनी। पद्मजा नायडू बाइलिंगुअल थी, मदर बंगाली, फादर आंध्राइट। तो एक वो दौर था जहां देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की बात सुनते थे, और एक ये दौर है, बाकी तो नहीं कहूंगा, फिल इन द ब्लैंक है, लेकिन मुख्यमंत्री से वैर रखना। गवर्नरों ने अपना दायित्व तो समझ लिया। कितने नाम गिनाऊं, कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाओ, हजारों हैं शिकवे, क्या क्या गिनाऊं। अब हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आई। वो टिप्पणी क्या कहती है? ये गवर्नर सचमुच अपने को लाट साहब समझते हैं। जब एक राज्य में राज्य की चुनी हुई व्यवस्था का मुख्यमंत्री अगर वो कुछ करना चाहते हैं, गवर्नर साहब बिल पे बैठ जाते हैं। वो बिल पे नहीं बैठते हैं, जन आकांक्षाओं पे बैठ जाते हैं। और जन आकांक्षाओं पर अगर कोई व्यक्ति बैठ जाता है, तो आप ये यकीन मानिए कि वो चुनी हुई सरकार के लिए प्रतिरोध के क्षण हर वक्त उत्पन्न करता रहता है। मैं आपको एक और उदाहरण दूं माननीय वाइस चेयरमैन साहब। जिन राज्यों में केंद्र की सत्ता, वाइस चेयरमैन साहब, तेरे आने और तेरे जाने में हमने सदियों का फासला देखा। कंक्लूड करें मैं सिर्फ 1-1.5 मिनट लूंगा सर, कोई नहीं, बस 1-1.5 मिनट, आपको दोबारा टोकना नहीं पड़ेगा जय हिंद से पूर्व। तो मैं देखिए तारतम्य टूट गया। क्या बता रहा था? दूसरा वाक्या बता रहे थे। कंक्लूड करें मान्यवर। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, प्लीज माननीय नीरज जी प्लीज। माननीय नीरज जी प्लीज सर, नीरज भाई वाला टाइम निकाल दीजिएगा मुझ में से। आप कंक्लूड करें मान्यवर। सर कंक्लूड कैसे करूं, बीच में नीरज भाई बोल दिए। चलिए आप मैं सर इतना कहना चाहता हूं कि जिन राज्यों में बीजेपी विपक्ष में है, वहां मजबूत हो जाती है बीजेपी। जानते हैं क्यों? गवर्नर साहब 60% विपक्ष का काम कर देते हैं, वो विपक्ष में हो जाते हैं। मैंने ऐसे गवर्नर्स देखे हैं जो टेलीविजन चैनल में शाम से बैठ जाते हैं, अपनी ही सरकार के बारे में। ऑनरेबल मेंबर प्लीज कंक्लूड। सर अनिल जी प्लीज कंक्लूड करें। ऐसे में 30 सेकंड्स प्लीज नहीं, एक बात बताइए प्लीज कंक्लूड। अगर ऐसे बात होगी तो कोई बात कैसे? माननीय मनोज जी सर, माननीय मनोज जी, आपने कहा तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा। एक चीज जो मुझको बड़ी दुखती है, जब मैं राजनीति में भी नहीं था, बता रहा हूं सर, गवर्नर का वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट का अधिकार। सर, राज्य की शिक्षा व्यवस्था में राज्य की सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, तुम्हारा सेशन लेट क्यों है, तुम्हारी ये परेशानियां क्यों है, तुम्हारी वो परेशानियां क्यों है। लेकिन वाइस चांसलर के चयन का अधिकार, नियुक्ति का अधिकार राज्य की सरकार के पास नहीं है।
अंत में मैं अपनी बात यही समाप्त करूंगा। माननीय उपसभापति जी, आपने वक्त दिया, हालांकि मेरे वक्त में कई लोगों ने वक्त ले लिया, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि गवर्नर के पद पर, क्योंकि आप सत्ता में, केंद्र की सत्ता में हमेशा नहीं है, ऐसी व्यवस्था ना हो कि केंद्र और राज्य के बीच में जो अंबेडकर साहब की अवधारणा थी कि राज्य खैरात नहीं मांग रहा है केंद्र से, एक सहकारी संबंध है जो। और आखिरी सर, आखिरी इसके बगैर कहूंगा आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आप बाहर कहिएगा कविता नहीं सुनाई, तो सर लाट साहबों के नाम, लाट साहबों के नाम, प्लीज प्लीज प्लीज, कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। जय हिंद सर। Thank you, honorable member. Honorable member, Dr. John Brittas, 2 minutes. Very brief, sir. Very brief. Sir, the slogan of Honorable Prime Minister is cooperative federalism. The tagline of G20 was that 3 Ds: democracy, development, diversity. In application, in implementation, the 3 D is like destabilize, disrupt, defame. किसको? Opposition governments को. ये डिस्टेबलाइज, डिफेम, डिसरप्ट करने के लिए उनका हाथ एक टूल है, ये गवर्नर साहब, ये चल रहे हमारा देश में। मिस्टर अनिल अग्रवाल, उनका दोस्त है केरल का गवर्नर, वो बार बार वहां आ रहे, उससे पूछ लीजिए। सर, my only request, I will be very brief, my only request to them is that if at all they want to ensure democracy, federalism in this country, let them adhere to cooperative federalism and remove all those people, because in our country there are 2 areas now, like flood affected, drought affected. One is ED affected area and governor affected area. Let us finish with this. Please pull back all your tools and ensure that your words are implemented. Let there be no difference between your words and deeds. Sir, I respect you. That's why I'm going to sit down. Thank you very much. Honorable member Shri Khiru Mato ji, 2 minutes. सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि वर्तमान परिदृश्य में राज्यपालों, उपराज्यपालों की नियुक्ति प्रक्रिया तथा उनके क्रियाकलाप भारत के लोकतंत्र के हित में नहीं है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अगर जनता द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के विधायी कार्यों में राज्यपाल के रूप में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति दुर्भावना से ग्रसित होकर हस्तक्षेप करेगा तो ये भारत के संघीय प्रणाली का अपमान है। प्रस्तावित विधेयक में अनुच्छेद 153 के प्रस्तुत में सुझाव के समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि राज्यपाल को किसी एक राज्यपाल की ही जिम्मेदारी दी जानी चाहिए और किसी कारणवश पद रिक्त होने पर राज्यपाल के कार्यों का निष्पादन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना चाहिए। मैं विधेयक के प्रस्तावित वर्तमान अनुच्छेद 155 की जगह संशोधित अनुच्छेद 155 जो राज्यपाल के निर्वाचन से संबंधित है उसकी प्रतिस्थापना का समर्थन करते हुए मानता हूं कि जिस प्रकार भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से बनता है उसी प्रकार राज्यों के विधानमंडल, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से बनते हैं। अतः जिस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सांसदों और विधायकों द्वारा किया जाता है उसी प्रकार राज्यपाल का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से राज्य में निर्वाचित विधानसभा सदस्यों, ग्राम पंचायतों, नगर पालिका और नगर निगमों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। राज्यपाल, उपराज्यपाल की सेवा अवधि राष्ट्रपति के मर्जी पर निर्भर है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार राज्यपाल का स्थानांतरण किसी अन्य राज्य में कर सकते हैं या पद मुक्त कर सकते हैं। राज्यपाल की सेवा की कोई संवैधानिक सुरक्षा नहीं है, इसलिए राज्यपाल केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाता है और स्वयं विवेक से कार्य नहीं कर पाता। अगर राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल का निर्वाचन होगा, माननीय सदस्य कंक्लूड करें, महाभियोग लगाकर उसको हटाने कठिन प्रक्रिया होगी तो राज्यपाल स्वतंत्र होकर बिना किसी दबाव में अपने दायित्व का निर्वहन कर पाएंगे।
कंक्लूड करें मान्यवर, कंक्लूड करें। एक मिनट। इस फैसले में न्यायालय ने कहा था कि किसी भी राज्य सरकार के बहुमत का फैसला राजभवन की जगह विधानमंडल होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार को शक्ति परीक्षण का मौका देना चाहिए। मान्य महतो जी, कंक्लूड करिए। महोदय, संविधान निर्माण के समय मसौदा समिति ने राज्यपालों की नियुक्ति या चुनाव का मामला संविधान के सभा का निर्णय के लिए छोड़ दिया था। आजादी के 75 वर्ष के बाद अमृत काल में देश मजबूत से आगे बढ़ा है और भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को कोई खतरा नहीं है। इसलिए लोकतंत्र के संघीय ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए राज्यपाल के शक्तियों का केंद्र सरकार द्वारा दुरुपयोग रोकने के लिए मैं राज्यपालों के निर्वाचन का सुझाव देने वाले विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर डीपी वत्स रिटायर्ड, 6 मिनट। माननीय सभापति जी, मैंने डिबेट सुने, बट आई विल सी इट थ्रू द आई ऑफ नेशन फर्स्ट। डेमोक्रेसी में चेक्स एंड बैलेंसेस से संविधान चलाया जाता है। पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया इसके स्तंभ हैं। इनमें सामंजस्य और बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। मैं बताना चाहूंगा कि गवर्नर साहब का रोल कहाँ अहम होता है। जैसे मैंने कहा नेशन फर्स्ट, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिटेल से डिस्कस हुआ था कि गवर्नर को इलेक्ट करा जाए या गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करे। एंड मैं बताना चाहूँगा कि उस ड्राफ्ट में द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ गवर्नर इज इनकम्पैटिबल विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम एस्टेब्लिश्ड इन द स्टेट्स। The mode of direct election is more likely to create conflicts between the governor and the chief minister. ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ड्राफ्ट है और जो संविधान सभा ने पास किया और बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान, हमने आर्टिकल 370 भी चेंज किया, उसको स्क्रैप किया। तो अंबेडकर जी ने लिखा था कि ये एक टेम्परेरी मेजर है। तो वी हैव ऑल रिस्पेक्ट फॉर बाबा साहब। The governor being only a constitutional nominal head, there is no point in making elaborate arrangements for his election and spending huge amount of money. The election of a governor would be entirely on personal issues, hence it is not in the national interest to involve a large number of voters in such an election. An elected governor would naturally belong to a party and would not be impartial. The election of governor would create separatist tendencies and thus affect the political stability and unity of the country. The system of presidential nomination enables the center to maintain its control over the states. The direct election of governor creates a serious problem of leadership at the time of general elections in the state. The chief minister would like his nominee to contest. मैं वापस आऊंगा नेशन फर्स्ट पे। मैं खुद कश्मीर में सर्व किया 5 साल तक और ऐसे हालात पैदा हो गए कि गवर्नर राज या प्रेसिडेंट राज लगाने के सिवाय कोई चारा नहीं था। और ये कांग्रेस शासन की बात है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट यानी जनरल केवी कृष्णा राव 6 साल तक लगातार रहे और उसके लगने के बाद भी जो मार धाड़, असेंबली में बम ब्लास्ट हुए और कितनी वायलेंस हुई, तो मैं ये कहूँगा नेशन फर्स्ट के मद्देनजर प्रेसिडेंशियल रूल नहीं, कई दफा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट भी लगाना पड़ता है। जैसे लगा था ईस्टर्न सेक्टर में, हमारी सरकार ने उसको विड्रा कर लिया जैसे डेमोक्रेसी मैच्योर होने लगी। एक शिवदासन साहब ने कहा था, इसी तरह मैं पंजाब का जिक्र करूंगा। आप सब ने देखा है कि नौबत कहां तक पहुंची कि एक धार्मिक स्थल पे भी एक्शन लिया लेट
इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने, और सबसे बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया, पार्लियामेंट भी सपोर्ट किया, और 3 प्रधानमंत्रियों ने, यानी राजीव लांगोवाल अकॉर्ड भी हुआ, कितने अकॉर्ड हुए, और बनाई सतलुज यमुना लिंक कैनाल को पाट दिया गया। अगर और अभी भी पानी जाना मंजूर है पाकिस्तान में, जलंधर और लुधियाना इसी साल डूबे, मगर अपने छोटे भाई हरियाणा को पानी नसीब नहीं है, तो सेंटर की लगाम स्टेट के ऊपर होना बहुत जरूरी है। ऐसा ही जैसा कि कहा कि डिबेट इज गवर्नर शुड बी इलेक्टेड और ही शुड बी अपॉइंटेड। आई एम टोटली फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन का रूल है कि डेमोक्रेसी में फेडरलिज्म भी है, डिसेंट भी है, और सेंटर की हुकूमत भी है, मगर कमांड एंड कंट्रोल में, माननीय सदस्य कंक्लूड करें। हाँ बिल्कुल करूंगा। कमांड एंड कंट्रोल का रूल है कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड तो विद इन लिमिट्स हो सकती है, अदरवाइज ये फेडरेशन टूट जाएगी। और मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। हमारा मुल्क मैच्योर तो है, शिवदासन जी ने कहा, वैसे कार्ल मार्क्स तो डेमोक्रेसी के ही खिलाफ थे, जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं। वो तो धर्म को भी ओपियम ऑफ द पीपल बोलते थे। और हमारा मुल्क 750 650 स्टेटों के कॉन्ग्लोमरेट से सरदार पटेल जी ने इकट्ठा किया था। भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, उसमें यूनिफाइंग फैक्टर्स हैं। यूनिफाइंग फैक्टर खेल, कंक्लूड करें, 6 मिनट हो चुके। हमारा संस्कृति, हमारा सिनेमा और हिंदुस्तानी फौज। तो मैं कहूँगा, टाइम की पाबंदी का मैं पालन करूँगा कि गवर्नर शुड बी ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, he should achieve the checks and balances, and it is a must for keeping the country united. Thank you. Thank you. Honorable ने कहा कि केंद्र की लगाम राज्यों पर होनी चाहिए। ये लगाम शब्द केंद्र की लगाम नहीं होना चाहिए। Honorable Shri M. Shanmugam, you have 2 minutes. Unfortunately, you have 3 speakers, so I'm able to give you only 2 minutes. Please Thank start. you very much, sir. Sir, on behalf of my DMK party, I would like to thank friend Dr. Sivadasan for bringing this important constitution amendment bill for discussion. As per the constitution, role of the governor is only a ceremonial, and he is a titular and head of the state because he is simply nominated by the president, in other words, by ruling party of the center. He is supposed to be a bridge between the state and union. Our party DMK earlier leader, the former leader Dr. Kalaignar, and the present leader, the Chief Minister Thalapathy Stalin, is always insisting governor should be appointed after consulting the state government in India. In India also, the founding father of the constitution have observed that the convention will be developed whereby the governor will be appointed after the consulting the state. The role of the governor is very limited and is bound by the advice of the cabinet, which has been reiterated by the judicial decisions umpteen times. The governor of Tamil Nadu is overstepping his authority and his publicity criticizing the state government and cabinet decision. Sir, the chief minister has mandate of the people and is elected chief executive of the state. When our state government took the matter is not giving the assent to the bill, the sitting over the bills by the governor. The Supreme Court expressed a serious concern over the delay by the governor on giving assent to the bills passed by the state assemblies. When he returned these bills by the state assemblies, after the observation of the Supreme Court in a special session, all these bills were passed by Tamil Nadu State Assembly
during the special session, our Chief Minister accused the governor and insulting the assembly and the people of the state by returning the bills, adding to the governor of Tamil Nadu returned the bills without stating any reason. Once the bill resent to the governor, it is like money bill Honorable and has member, no please option conclude. but give his assent, but he acted with an ulterior motive by sending all these bills to the president. It is very unfortunate that the governor is preventing elected state government from implementing the various schemes and programs through the legislative Honorable member. proposals. This issue, Governor ex officio Chancellor of State Universities is also be reviewed. In this connection, our state Honorable assembly member, has I'll have passed to a move bill on. to I'm make sorry. a chief minister I'll as have the to move on. chancellor, but the governor has not given assent to the bill. Because of that, functioning of the university is affected. Last sentence, and the please. We'll have to conclude. students are not able We'll have to to conclude. get a degree certificate as convocation program is not being Thank you, honorable finalized. member. I'm moving Many on. I'm moving demonstration and on. signature I'm moving on. campaign were Honorable held on member. state and Tamil Nadu. Honorable member, I'm moving Recall on. the Thank you. governor, but the union Shri government Ajay is not Pratap taking Singh. any action. Honorable Shri Ajay Pratap Singh. I'm sorry. Nothing else is going on record, honorable member. Thank you. I'm sorry. Time has run out. Honorable Shri Ajay Pratap Singh, 6 minutes. धन्यवाद उपसभापति महोदय। माननीय शिवदासन जी द्वारा जो संशोधन विधेयक यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है, उस विधेयक के विपक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। विपक्ष में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर उनके द्वारा सुझाए गए संशोधनों को ये सदन स्वीकार कर लेता है तो केंद्र राज्य के संबंधों पर असर तो पड़ेगा ही, साथ ही साथ इन संशोधनों के कारण हमारा देश कमजोर होगा। जब हम मजबूत भारत की अवधारणा पर विचार करते हैं, मजबूत देश की अवधारणा पर विचार करते हैं, तो मेरे विचार से मजबूत देश तभी हो सकता है जब हमारा केंद्र मजबूत हो। अगर केंद्र कमजोर हो जाएगा तो हमारा देश खंड खंड हो जाएगा। अक्सर हमारे विपक्षी साथी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, विविधता में एकता, लेकिन जिस सीमा तक वो विविधता की कल्पना करते हैं वो देश की एकता के लिए खतरा होता है। मेरे जैसे लोग जिनके लिए राष्ट्र प्रथम है, वो विविधता में एकता नहीं एकात्मता ढूंढते हैं। हमारे देश के अंदर अनेक ऐसे तत्व हैं जिसके कारण हमारा देश एक है, एक सांस्कृतिक बोध है, एक सांस्कृतिक मूल्य है, और इसीलिए हम लोग वन नेशन वन पीपल की अवधारणा पर विश्वास करते हैं। हम जिस संविधान को हम लोगों ने अंगीकार किया है, स्वीकार किया है, जिसके आधार पर चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो संचालित होती है, उस संविधान की हमने शुरुआत ही किया है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। उसमें यह नहीं लिखा गया कि हम मध्य प्रदेश के लोग, हम केरल के लोग, हम उत्तर प्रदेश के लोग। उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग, और हम भारत के लोगों ने जिस संविधान को अंगीकार किया है, स्वीकार किया है, उसके आधार पर भारत की समस्त संस्थाओं का संचालन होना चाहिए, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे कोई ग्राम पंचायत हो। वो संविधान के अनुसार संचालित हो रही है कि नहीं हो रही है, यह देखने की जिम्मेदारी हमारी जो केंद्रीय संस्था है, केंद्रीय इकाई है, उसकी होती है। और अगर कहीं संविधान को उल्लंघन हो रहा है, संविधान का परिपालन नहीं हो रहा है, तो उसको नियंत्रित करने की भी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। और नियंत्रित करने के लिए सूचना, जानकारी, समय समय पर मार्गदर्शन,
इसका काम हमारे गवर्नर केंद्र सरकार के आदेश निर्देश पर करते हैं। मैं दो उदाहरण देता हूं कि गवर्नर की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे जनरल साहब ने अभी जम्मू कश्मीर को उदाहरण दिया है। आप सभी को स्मरण होगा गवर्नर जगमोहन जी का। अगर जगमोहन जी गवर्नर के रूप में अपनी भूमिका का न्याय जम्मू कश्मीर में नहीं करते तो शायद आज जम्मू कश्मीर भारत से अलग हो चुका होता। पंजाब के उग्रवाद का भी जिक्र किया है जनरल साहब ने। पंजाब के हालात बेकाबू हो गए थे। गवर्नर रूल के कारण ही वहां के हालात को नियंत्रित कर पाए और आज अगर आतंकवाद वहां पर दबा है, समाप्त हुआ है, तो इसी संस्था के कारण हुआ है। मैं शिवदासन जी की पीड़ा समझ सकता हूं। सारे गवर्नर ऐसे नहीं है, कुछ गवर्नर ऐसे भी रहे हैं जिनके आचरण पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। केरल प्रांत की जो पहली चुनी हुई सरकार, नमूदिरीपाद सरकार, उसको उनके पड़ोसियों ने भंग किया। पंडित नेहरू ने भंग किया। और धारा 356 के उपयोग की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक उसका दुरुपयोग जो किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया। 51 बार धारा 356 को उन्होंने प्रयोग किया है। उसमें बहुत सारे अप्रिय प्रयोग हैं और जिसके कारण गवर्नर के प्रति एक वितृष्णा सी राजनीतिज्ञों में पैदा हुई है। लेकिन अब जब हम भारत के बारे में एक समग्र रूप से विचार करते हैं तो गवर्नर की भूमिका महत्वपूर्ण है। मैं ये भी आप सबको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जो गवर्नर की भूमिका है, गवर्नर का पद है, मैं 2 मिनट लूंगा, ये कोई नई बात नहीं है। जब आप किसी बड़े भूभाग को नियंत्रित करना चाहते हैं, एक बड़ी पॉपुलेशन को एड्रेस करना चाहते हैं, तो ये आज की प्रणाली नहीं है, प्राचीन काल से चली आ रही है, रामायण काल से चली आ रही है। अगर मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। रामायण में पात्र आता है खर, दूषण, मारी, स्वभाव। ये कौन थे? ये रावण के गवर्नर ही थे जो समय समय पर जानकारी दिया करते थे। मौर्य साम्राज्य के कार्यकाल में भी अगर महाजनपद के रूप में जब ये हमारा भूभाग विभाजित था तो महाजनपदों में भी गवर्नर प्रणाली ही थी। हमारे यहाँ पर जब सिकंदर आए, सिकंदर यहाँ पर सेल्यूकस के रूप में अपना गवर्नर ही छोड़ के गए। हमारे यहाँ मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना गवर्नर, अपना राज्य बना के सौंपा, वहीं से गुलाम वंश शुरू हुआ। चाहे गुलाम वंश हो, चाहे खिलजी हो, चाहे तुगलक हो, चाहे मुगल हो, चाहे अंग्रेज हो, सभी ने इस प्रणाली का अनुसरण किया है। और अगर एक भूभाग, बड़े भूभाग पर अपना नियंत्रण रखना है, एक बड़े भूभाग को अपने की एकता को स्थापित करके रखना है, एक बड़ी पॉपुलेशन को एड्रेस करना है, तो हमको इस प्रणाली का अवलंबन करना ही पड़ेगा। और इसलिए माननीय शिवदासन जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, मैं उस संशोधन से असहमत हूं। मैं इस बिल का, संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Shri P. Wilson, as you're aware, you've got about 2 minutes. Chairman, sir, thank you very much for giving me an opportunity. Sir, when the Constitution came into force, the Constituent Assembly makers, they thought that the governor will be a guide, friend, and a philosopher. He would actually facilitate between the state and the union. That was the impression the Constituent Assembly people thought, that these functions can be entrusted with the governor. Therefore, the governor was given the functions of executive powers, that is, to carry out the business in his name, and legislative powers, that is, to give assent to the bills, and judicial powers, that is, to grant remissions. But, sir, though the governor is given these powers, the actual head, the de facto head of the government is a chief minister. The governor, who is the unelected head,
is only a figurehead and is a de jure head. But today, what is happening? He has to act in accordance with the Constitution. He has to act under the aid and advice of the Council of Ministers. If you see how the governors are functioning throughout India, including that of Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, then even I would say Karnataka and West Bengal, they are completely ignoring the aid and advice of the Council of Ministers. They think that they are a super constitutional authority. They sit over the bills. They don't give assent to the bills. They sit over the files. They don't even act on the files or under the recommendations given by the Council of Ministers. Sir, time has come where we have to think whether these posts of the governor is required for a welfare state. Honorable member, please conclude. Therefore, sir, I would only say that the powers of the governors can be given to the speakers. What is the powers which I now told before this house? These are all the powers that can be given to the speaker of the house, and the speaker of the house can exercise the powers of the governor, because the governor has become a liability to any democratically elected government. Thank you, and honorable they member. don't act in accordance with the Constitution. They are in confrontation with the elected government. So time has come, sir, where the House has to debate about the powers of the governor. Sarkaria Commission has come down heavily. Thank you. Punchi Commission has come down heavily. The Supreme Thank Court has you. come down heavily, like Article 365, where Honourable Supreme member. Court gave a check and curtailed the powers of the governor. Thank the you. House has to discuss and see that the post of the governors has to be abolished. Thank you very much, Chairman, sir. Honorable Shri Biplab Kumar Deb, 6 minutes. Honorable Vice Chairman साहब, हमारे डॉक्टर वी शिवदेशान जी ने जो अमेंडमेंट बिल लाया है, मैं उसका विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि ये फेडरल सिस्टम के खिलाफ उठाने वाला कदम है। सबसे ज्यादा फेडरल सिस्टम की बात इस तरफ से आजकल आती है। मैं सभी आपके जो स्टेट में मुख्यमंत्री है, मैं फेडरल सिस्टम को शक्तिशाली बनाइए, तो फेडरल सिस्टम को शक्तिशाली बनाने के लिए जो चेन है वो गवर्नर है, केंद्र सरकार के साथ। राज्यों को अकेला सरकार चलाने के लिए नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि राज्य के पास डिफेंस नहीं होता, राज्य के पास एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं होता। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो कि केंद्र सरकार के पास है। इसलिए राज्य सरकार को और केंद्र सरकार के बीच एक चेन होना चाहिए। उस चेन का जो मूल व्यक्ति है वो गवर्नर होता है। गवर्नर के ऊपर कितना खर्चा होता है, कितना नहीं होता, वो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। साथ ही साथ मैं मेरे मित्र को बताना चाहता हूं, मैं जब त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बना 2018 में, 25 साल वहां कम्युनिस्ट के आप लोगों का सरकार थी और मुझे मौका मिला वहां काम करने की। और मुझे उस समय सुनाई देता था पूरे देश भर में कम्युनिस्ट के मित्रों ने जो त्रिपुरा में गोल्डन इरा चल रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे लगता है गोल्डन इरा चल रहा है, बहुत कुछ मिलेगा। फाइनेंस में पूछा तो 13,000 करोड़ की हमारे घाटती थी जो इंटरेस्ट देना पड़ता था। इधर तो पूरे देश में प्रचार हुआ था, गोल्डन इरा चल रहा था, पूरी दुनिया में उस चीफ मिनिस्टर का प्रचार किया जा रहा था जो 20 साल के मुख्यमंत्री लगातार रहे, हिस्ट्री कर रहा था। तो मुझे बहुत उत्साह था कुछ तो मिलेगा। और उसके बाद जब मैं सेक्रेटरीट में जाके चीफ मिनिस्टर के रूम में जाके देखा, जो वहां भारत के नेशनल फ्लैग नहीं है, एक भी मिनिस्टर के रूम में नेशनल फ्लैग नहीं थे, अशोक चक्र नहीं थे, क्योंकि भारत के संविधान को कम्युनिस्ट के स्वभाव में नहीं मानना इनका आदत है। वो मार्क्सवाद को मानते हैं, भारत के संविधान को जब जरूरत पड़ता है तब मानता है। इसलिए भारत के संविधान को जब भी मौका मिले उसको अटैक करना, उसको कमजोर करना ही कम्युनिस्ट का स्वभाव है। मैं कहता हूं मेरे मित्रों, स्वभाव इसको धीरे धीरे बंद कर दो। और साथ ही साथ भारत के जो स्वभाव उसमें आ जाना चाहिए। और इस देश के संविधान के ऊपर हम सवाल उठा लेते हैं।
इस देश के सिस्टम के ऊपर सवाल Please, उठा लेते हैं। please, please. No, no, it's not going on record. It's not going on. Address the chair. It's not going on record. नेशनल Please. फ्लैग जरूर लाया, मैं इसलिए गर्वीभूत करता हूं। त्रिपुरा के लोग बहुत वर्षों से चाह रहा था जो वहां नेशनल फ्लैग रूम में रहे, किंतु कम्युनिस्ट के कारण से वो नहीं पहुंच पा रहा था। मैं तो आगे जाके ये बोलूंगा, कम्युनिस्ट के एक समय तो पार्टी ऑफिस में 15 अगस्त 26 जनवरी में तो नेशनल फ्लैग नहीं उठाते थे, इतिहास है भाई। बाद में मजबूर हुआ तो नेशनल फ्लैग उठाने लगे हैं, वो सच्चाई है। Please address the chair, honorable member. इसलिए Address the chair. माननीय उपसभापति महोदय, मैंने कांग्रेस के हनुमान मंतिया जी को देखा, गवर्नर के बारे में बोले जा रहे थे, सिस्टम के बारे में बोल रहे थे। भाई, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सरकार आने के बाद हम लोगों ने असंवैधानिक रूप से किसी सरकार के साथ व्यवहार नहीं किया है। मैं इसलिए अपने सरकार का पीठ थपथपाता हूं। जो भी ऐसा किया गया है दुरुपयोग, वो No, I'm कांग्रेस not के allowing जमाने this. किया I'm गया। not उस allowing this. कांग्रेस No, को- no, no. This cannot go on. No, no, उस no, no, कांग्रेस को no. यूपीए Honorable- no, no, no. I'm not allowing कम्युनिस्ट it. पार्टी No, ने no. सपोर्ट दे के रखा हुआ था। इसीलिए डीएमके के मित्रों को बोलता हूं, आपके सरकार के सबसे गिराया ज्यादा ये इन्होंने जो Please सपोर्ट address the देकर रखा chair. था, उस सरकार ने गिराया। इसलिए इस बात को देखिए, हमारे सरकार आने के बाद हमने किसी सरकार को असंवैधानिक तरीके से नहीं गिराया, और हमने गवर्नर को जिस तरीके से काम करना है, माननीय हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में काम किया जाता है, पीएम के मार्गदर्शन में काम नहीं किया जाता है। ये कांग्रेस के समय होता था जो प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में काम किया जाता था, हमारे समय नहीं होता है। इसलिए संविधान को मानते हुए हम काम करते हैं। और जौहर सरकार जी अभी नहीं है, बोल रहा था तमिलनाडु के गवर्नर के ऊपर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, हाईकोर्ट ने आलोचना की, इसीलिए गवर्नर हटा देना चाहिए। तब तो इस देश में सबसे ज्यादा हाईकोर्ट ने इंटरवेंस किया है तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के ऊपर किया, उनके काम काज के ऊपर किया है। सबसे पहले तो इनको उठा देना चाहिए, इनको रिजाइन कर देना चाहिए। माननीय तो सदस्य, इसलिए 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। कोर्ट में कोई विषय उठे और कोर्ट इसका आलोचना समालोचना करे, इसलिए संवैधानिक सिस्टम में बैठे हुए व्यक्ति चले जाए और चले आए, ऐसा इस देश में नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। तो मैं मानता हूं जो इस सदन में जिस तरीके से इस बिल को अलग अलग व्यक्ति ने अपने विषय रखा है, किंतु मेरा मानना है गवर्नर बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नर के बिना केंद्र सरकार के साथ हमारा संपर्क जो है उसको चेन टूट जाएगी। और भारत इतना बड़ा देश है, उसको इस सिस्टम में रख के ही चलाया जाता है। इसलिए संविधान के माध्यम से जो बाबा साहब ने सिस्टम लाया है, उसको समय समय हमने बहुत सारे अमेंडमेंट किया है जो जरूरत पड़ता है, किंतु इसका कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं और मैं भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखता हूं। तो मैं आपको भी बोलता हूं, मार्गबाद छोड़ के भारत के संविधान पे निष्ठा पे आ जाइए। धन्यवाद। Thank you. May I now request Honorable Shri Naresh Agrawal ji to start? Sorry, no, Mani Naresh Bansal ji, I'm sorry. धन्यवाद उपसभापति जी। गवर्नर का चुनाव हो, हाँ जी, एक्चुअली सॉरी, 5:15 बजे हमें रुकना था। नहीं, अभी रोका है, अभी रोका है। 1 सेकंड। माननीय नरेश जी, अगली बार जब नेक्स्ट आपका प्राइवेट मेंबर्स बिल आएगा तब आप शुरू करेंगे अपना स्पीच। 5:15 बज चुके हैं। माननीय चेयरमैन साहब का आदेश था कि अभी स्पेशल मेंशंस लिए जाएंगे, तो अगले सेशन पे जब अगले दिन पे जब शुरू होगा तब आप करिए। कांग्रेस को कल अभी परमानेंट लिस्ट ऑफ स्पेशल मेंशन मिस इंदुबाला गोस्वामी जी, ऑनरेबल गोस्वामी जी। डिमांड फॉर स्टॉपेज ऑफ वंदे भारत ट्रेन एट पठानकोट रेलवे स्टेशन। Not present. Special mention, please. Microphone. Yes, please. Please start.
My subject is demand for stoppage of 22439 22440 Vande Bharat train at Pathankot railway station. माननीय रेल मंत्री जी के समक्ष वंदे भारत ट्रेन संख्या 22/439/22/440 पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर ठहराव के संबंध में निवेदन करना चाहती हूँ। वंदे भारत दिल्ली से कटरा आते और जाते पठानकोट से गुजरती है, किंतु इस स्टेशन पर ठहराव नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण रूट है जिसमें पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पंजाब, हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा व कांगड़ा के लोगों के लिए एकमात्र ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। साल भर भारी संख्या में लोग मां वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जम्मू जाते हैं। इसके पश्चात अधिकतर लोग प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर देवभूमि हिमाचल प्रदेश में धार्मिक पर्यटन हेतु मां ज्वालामुखी, मां बगलामुखी, नैना देवी, चिंतपूर्णी, चामुंडा देवी, मां ब्रजेश्वरी व शिव मंदिर बैजनाथ आते हैं। वंदे भारत ट्रेन के पठानकोट कैंट स्टेशन पर ठहराव न होने की वजह से हिमाचल प्रदेश के उपरोक्त धार्मिक स्थल पर्यटकों से वंचित रह जाते हैं। पठानकोट स्टेशन पर वंदे भारत के ठहराव से आम जन को कटरा जाने में बहुत आसानी होगी तथा धार्मिक पर्यटन को भी निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। वंदे भारत ट्रेन देश की पहली ऐसी रेल सेवा है जिसमें प्रीमियर सफर का सबसे अधिक ख्याल रखा गया है। इसलिए उपरोक्त रूट पर पठानकोट कैंट स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन का ठहराव लोकहित में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम होगा। मैं सरकार से मांग करती हूं कि आप संबंधित अधिकारियों को, माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि आप संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर वंदे भारत ट्रेन का ठहराव कम से कम 2 मिनट के लिए पठानकोट कैंट स्टेशन पर करवाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। Thank you. Shri M. Mohammed Abdullah ji, request to allow the hyper or hypopigmented vitiligo persons to join Indian Army. Thank you, Vice Chairman, sir. Attention is brought in the interest of the people who have the autoimmune disorder namely called vitiligo. Vitiligo is an acquired depigmentation disorder of great concern affecting 1 to 4% of the world population. Sir, a person with vitiligo develops patches of skin with little or no pigmentation across their body, and it is not a lethal or infectious disease. According to the medical standard of the Indian Defence Service, a candidate is deemed medically fit when he has no hyper or hypopigmentation or any other disease of the skin. Hence, the people with vitiligo found it difficult to join the Indian Defence Service. Hence, many of them feel distressed and stigmatized by their condition. Vitiligo candidates will be of normal anatomy without loss of any appendages. They will be free from all communicable diseases and skin ailment. Even though people with who have vitiligo disorder are expected to be at risk and adverse weather condition and at high altitude, the risk is meager and even not for those with mild vitiligo. Such physically and mentally fit aspirant having all the potential to perform their duties toward the nation should not be stopped from being a soldier or officer. Hence, I humbly request the Honorable Minister of Defence to immediately look into this issue with utmost priority and take the necessary step to regulate the medical standard of Indian Defence Service so that they can be placed in civil post and ensure their service to the nation in these regards. Thank you, sir. Thank you. Shri Vijay Pal Singh Tomar, demand for starting domestic flights from Meerut to various cities by expanding airstrip under the Udan scheme. धन्यवाद उपसभापति महोदय। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना द्वारा देश के विभिन्न शहरों को हवाई सेवा से जोड़ा है। मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक मुख्य शहर है जिसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यहाँ से 1857 में आज़ादी की क्रांति का पहला बिगुल फूंका गया था, जिसकी याद में शहीद स्मारक पर एक म्यूजियम बना है। बागा ओगरनाथ का मंदिर भी पर्यटन केंद्र है और महाभारत कालीन राजधानी हस्तिनापुर मेरठ जिले में स्थित है। पांडवों के समय से वारणाव्रत, विदुरकुटी, शुक्रताल, परीक्षतगढ़ पर्यटन के केंद्र बने हुए हैं। मेरठ खेल के समान का देश का दूसरा नंबर का हब है। विश्व भर में क्रिकेट के लिए मेरठ से निर्मित बैट बल्ले का प्रयोग किया जाता है। विश्व के अधिकांश खिलाड़ी क्रिकेट सामान खरीदने यहाँ आते हैं।
गत वर्ष एशिया स्तर के ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मेरठ जिले में यही किया गया है। मेरठ से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ करीब 550 किलोमीटर, हाई कोर्ट प्रयागराज करीब 750 किलोमीटर, वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर करीब 850 किलोमीटर, गोरखनाथ धाम मंदिर करीब 800 किलोमीटर। इन सभी स्थानों पर जाने में रेल से 12 से 20 घंटे का समय लगता है, जिससे यात्रियों को काफी समस्या आती है। मानव वर्तमान में एक हवाई पट्टी मेरठ में स्थित है, जहां पर चार्टर प्लेन और हेलीकॉप्टर वगैरह उतरते हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि उड़ान योजना के अंतर्गत मेरठ की हवाई पट्टी का विस्तारीकरण कर देश के विभिन्न शहरों को मेरठ से घरेलू हवाई यात्रा शुरू की जाए। धन्यवाद। Thank you. Shri Abdul Wahab, not present. Dr. Kanimudi NVN Somu, demand to develop cruise tourism in Chennai. Thank you, Chairman, sir. Cruise tourism is emerging as one of the rapid growing segments of the leisure industry globally. The Indian tourism sector is providing major contribution to the gross domestic product GDP and foreign exchange earnings EFF, as well as for providing employment. Chennai port is one of the oldest ports in the country in the southern part of India from the time of East India Company. During the British period, passenger services were operating regularly from Chennai to Malaysia, Burma, and Andaman. India's first international cruise was flagged off from Chennai to Sri Lanka in June 2023. The MV Empress, with 750 passengers on a 5-day sea cruise, will cross 3 ports. Cruise tourism holds huge opportunity for our maritime sector, and this cruise will further boost tourism, generate employment, and strengthen the economy. The cruise was launched from Chennai's International Cruise Terminal, built at a cost of rupees 17.21 crore. The main aim of the government is to develop Chennai as a cruise tourism hub. This initiative has the potential to greatly contribute to the economic development and tourism growth in India. By 2024, the government plans to build 3 new international cruise ports with additional ferry routes through India, Sri Lanka, Thailand, and Myanmar. At the moment, there are only few ferries piled by private companies, and the cost is on a higher side. Therefore, I urge the government of India to apply government-sponsored ferries at an affordable cost so that more and more tourists will experience cruise tourism in India. Thank you, sir. Thank you. Shri Sadanand Sheikh Tanwade. Chairman, sir, my special mention is concern over revocation of Indian passport in Goa. I beg to call the attention of the Minister of External Affairs to an important issue that has emerged in Goa, affecting a considerable number of individuals. The Regional Passport Office has recently revoked the passport of over 70 people due to the renewal of their Indian passport subsequent to registering their birth in Portugal. The basis of this revocation of Regional Passport Office in Goa is the birth registration in Portugal, considered as the effective date of acquiring citizenship. I urge the Minister of External Affairs to reconsider the decision of revoking Indian passports solely based on the birth registration in Portugal. I propose that the Ministry allows the renewal of Indian passports for these individuals until they acquire the official citizenship document from the Portuguese government. This measure is vital to facilitate their travel and ensure their well-being during the transition period until their Portuguese passports are ready. Furthermore, I implore the Ministry to expedite the process, enabling individuals to promptly obtain OCI cards upon acquiring Portuguese citizenship. Thank you, sir. Thank you. Shri Irana Kadari. Not present. Srimati Sulota Deo. Not present. Srimati Mahua Maji. Demand to declare Central Institute of Psychiatry, Ranchi, Jharkhand as Institute of National Importance on the line of Nimhans, Bengaluru. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. My subject is demand to declare Central Institute of Psychiatry, Ranchi, Jharkhand as Institute of National Importance on the line of Nimhas, Bengaluru. महोदय, मानसिक चिकित्सा से जुड़े इस विश्व प्रसिद्ध अनूठे संस्थान की स्थापना 1918 में हुई थी। अब जब भारत में मानसिक समस्या तेजी से फैल रही है, तो पूर्वी भारत के झारखंड, रांची के कांके में स्थित इस संस्थान की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। मानसिक समस्या के कारण
2012 से 2030 के बीच 1.03 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक क्षति का अनुमान है। लांसेट की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हर 7वां भारतीय किसी न किसी प्रकार के मनोविकार का शिकार है। आज आर्थिक सामाजिक तनाव, बेहतर जीवन प्रत्याशा और अवसाद के कारण माइग्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, अल्जाइमर, डिमेंशिया इत्यादि जैसी मानसिक बीमारियां या मनोविकार हो रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए लोगों को इससे बचाने और इसके समुचित इलाज के लिए अच्छे मनोचिकित्सा संस्थानों का होना बहुत जरूरी है। महोदय, रांची स्थित यह संस्थान एक ऐसा अग्रणी संस्थान है जो केंद्र सरकार की सहायता से पूर्वी भारत के लोगों के मनोरोगों के इलाज की दृष्टि से वरदान साबित हो सकता है। अतः मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करती हूँ कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री को पूर्वी भारत का निम्हांस घोषित कर इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाया जाए, इसका पुनरुद्धार किया जाए, यहाँ शिक्षकों, पीजी के सीट, वार्डों की संख्या और अन्य सुविधाएं बढ़ाई जाए ताकि लोगों को सस्ती, सुलभ और विश्व स्तरीय चिकित्सा मिल सके। निम्हांस बेंगलुरु का बोझ भी कम हो, लोगों का राह खर्च, होटल खर्च बचे, समय बचे और जरूरतमंदों को सस्ती, सुलभ और विश्व स्तरीय चिकित्सा मिल सके। यह संस्थान भारत को स्वस्थ रखने में मील का पत्थर साबित होगा। कृपया इस पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। Thank you. Shri K.R.N. Rajesh Kumar, not present. Srimati Geeta alias Chandraprabha. Demand of GI tag for Desi ghee from Orya, Uttar Pradesh. जी धन्यवाद महोदय। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और विभिन्न जिलों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। हमारे जनपद औरैया को देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। महोदय, वैदिक कालों से आज तक देसी घी का स्वास्थ्य के साथ साथ पूजा अर्चना में भी बड़ी मान्यता रही है। जहां एक तरफ स्वास्थ्य तो वहीं छोटे किसान जो गाय भैंस पाल कर अपनी जीविका चलाने के साथ ही देसी घी को तैयार करने से अपनी आय को बढ़ोतरी करते हैं। इसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद नीति में औरैया जनपद के लिए देसी घी का चयन हुआ है। देश विदेश तक जिले में उत्पादित घी को पहुंचाने एवं संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहन करने के लिए एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जिले के उत्पाद के रूप में देसी घी को चुना गया है। जिले में देसी घी के उत्पादन और व्यापार और मजबूती देने के लिए तथा देश विदेश तक इसकी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार एवं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि औरैया जनपद के देसी घी को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का दर्जा प्राप्त दिया जाए, जिससे कि देश के अन्य जियोग्राफी इंडिकेशन टैग प्राप्त वस्तुओं की तरह औरैया जिले के देसी घी को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पटल पर स्थान प्राप्त हो सके। धन्यवाद। Thank you. Lieutenant General Dr. D.P. Vats, retired. Demand for capacity building in medical services. Thank you, Sabhapati ji. With the Honorable Prime Minister's call for one world, one family and one future, provision of health services to mankind becomes our duty, being the largest population base in the world, with exportable human resources, including skilled medicals and paramedics. There is a huge demand for such professionals all over the world. Skilled manpower earns and brings massive foreign exchange and simultaneously get employment opportunities. To meet the global and national demand, Ministry of Health and Family Welfare has opened 23 AIMS, out of which 21 are functional, and 706 medical colleges with paramedical colleges, which is commendable. To meet such a huge demand, government should liberalize the licensing policies to permit the medical graduates to operate emergencies, including cesarean sections, after a one-year course in surgery, gynae, and anesthesia. Courses as was the practice before 1980. The medical profession should be taken out of Consumer Protection Act
and rural services should have more incentive. I urge the government to look into the matter to meet the huge demand of surgeons by imparting ad hoc practical training. Thank you. Srimati Sumitra Balvik. Need for promotion of self-help grounds to develop places like Jabalpur, Mandla, Chindwara, Panchmari as tourist centers. जी, उपसभापति महोदय धन्यवाद। आज मैं आपके सामने जो विषय लेकर खड़ी हूं वह मध्य प्रदेश से जुड़ा है। महोदय, पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वैसे तो यह बढ़ोतरी कोविड संक्रमण के बाद पूरे भारत में पर्यटन सेक्टर में हुई है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी फायदा हुआ है। मध्य प्रदेश को भारत का दिल माना जाता है। भेड़ाघाट, 64 जोगनी, बांधवगढ़, कान्हा, खजुराहो आदि जैसे कई विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल हैं। इसके साथ ही बहुत से ऐसे प्राकृतिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं जिन्हें पर्यटन की दृष्टि से और भी विकसित किया जा सकता है। महोदय, मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने स्व सहायता समूहों को बढ़ावा दिया है और करोड़ों महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ा है। आपके माध्यम से मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन को और सुदृढ़ बनाने हेतु ऐसे ही स्व सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई जाएं। जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, पचमढ़ी आदि स्थानों को पर्यटन के केंद्रों की तरह विकसित किए जाने से एक बहुत बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा और अर्थव्यवस्था के बढ़ते आयामों को लाभ मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगा। अतिथि देवो भव के मूल तंत्र को मध्य प्रदेश ने अपनाया है और भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों से प्रदेश का पर्यटन विभाग नए आयामों को छू सकता है। धन्यवाद। Thank you. Dr. L. Hanmantaiya, concern over rising number of cases of road accidents in India. Thank you, sir. Sir, concern over rising number of cases of road accidents in India. Sir, information regarding road traffic accidents is gathered through two reports, Road Accidents in India, published by the Ministry of Road Transport and Highways, and Crime in India, released by the National Crime Records Bureau. The data is solely sourced from police departments. Details about crashes are recorded through FIRs filed by involved parties. Witnesses or on-site police officers. In 2022, there were 1,50,998 cases reported for deaths due to negligence relating to the road accidents. This is 10.5% rise from cases reported during 2019 with 1,36,587 cases, which is an alarming and requires immediate intervention. Sir, however, the reporting process itself has limitations. The majority of cases are attributed to human error, overlooking other factors such as vehicle and infrastructure issues. The cause of the crash is documented as the fault of a road user without considering other contributing elements. Furthermore, sir, the reporting mechanism does not account for fatalities occurring in hospitals after 30 days as highlighted in the Road Accidents in India 2019 report published by the Ministry of Road Transport itself. The World Health Organization categorized India's official data on road traffic fatalities as either unsayable or unavailable due to quality issues in their 2019 Global Health Estimates released in December 2020. Sir, I would like to urge the government to adopt revised methodologies for collecting road traffic accident data that align with international standards. Thank you, sir. Thank you. Shri Ramchandra Jangra, need to prohibit setting up coal plants in non-coal producing areas. धन्यवाद उपसभापति जी। महोदय, बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण इन दिनों पूरी मानवता, पशु पक्षी सबके लिए गंभीर खतरा एवं चुनौती है। महोदय, वायु प्रदूषण के लिए वैसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा घटक कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। महोदय, एक समय था जब लोड फैक्टर के मध्य में बिजली संयंत्र लगाया जाता था, जैसे बठिंडा और पानीपत लगे, ताकि चारों तरफ बिजली की आपूर्ति हो सके। लेकिन पूरे देश में ग्रिड सिस्टम के विस्तार के बाद इसकी आवश्यकता नहीं थी,
क्योंकि कहीं से भी बिजली संयंत्र को ग्रिड से जोड़कर बिजली को उपयुक्त जगह पहुंचाया जा सकता था। महोदय, जिन प्रदेशों में कोयला खदानें हैं वहां भूमि भी सस्ती है तथा जंगलों की भी बहुतायत है। इसके अतिरिक्त उन प्रदेशों में वर्षा भी भरपूर होती है, लेकिन इसके बाद भी हरियाणा जैसे कोयला खदानों से सुदूर प्रदेशों में जो एनटीपीसी, सीएलपीसी, झाड़ली झज्जर में और खेदड़ हिसार में दूरदर्शितापूर्ण फैसले लेकर प्लांट लगाए गए। यही प्लांट कोयला खदान वाले क्षेत्रों में आधी कीमत पर लगाए जा सकते थे तथा कोयले की ढुलाई पर जो खर्च आने से बिजली की लागत बढ़ती है वह भी ग्रिड के माध्यम से चौथाई लागत से भी कम में बिजली लाई जा सकती थी। कोयले से भरी गाड़ियां हजारों किलोमीटर कोयले की धूल छोड़ती हुई जाती हैं तथा डीजल इंजनों से जो प्रदूषण होता है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि भविष्य में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को गैर कोयला उत्पादन राज्यों में मंजूरी न दी जाए तथा जो पहले ऐसे संयंत्र लगे हैं उनकी विस्थापना की योजना भी बनाई जाए। धन्यवाद। Thank you. Shri Biplab Kumar Deb, demand to start instrument landing system at NBB Airport, Agartala. महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को त्रिपुरा से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय से अवगत कराना चाहता हूं। एमबीबी हवाई अड्डा अगरतला एक इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स IFR हवाई अड्डा है, जहां विमान के पहुंचने, उतरने और उड़ान भरने के नेविगेशनल इश्यू सहायता और उपकरण लैंडिंग सहायता के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का उपयोग एक्यूरेट लैंडिंग में सहायता के रूप में किया जाता है, जो सामान्य और सही मौसम की स्थिति में रनवे पर उतरने के लिए विमान का मार्गदर्शन करता है। एमबीबी हवाई अड्डा अगरतला में पुराने ILS सिस्टम को नई प्रणाली से बदल दिया गया है। नया ILS सिस्टम इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो चुका है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विमानों द्वारा ग्राउंड कैलिब्रेशन और एयर कैलिब्रेशन 27 नवंबर 2023 को पूरा कर चुका है। अगले फेज में कैलिब्रेशन रिपोर्ट के आधार पर उपकरण प्रक्रिया प्रोसेस विकसित किए जाएगी और इसे अनुमति के लिए DGCA के भेजा जाएगा। DGCA की मंजूरी के बाद उस सिस्टम को चालू कर दिया जाएगा। महोदय, आजकल कोहरा के कारण बहुत सी फ्लाइट्स एमबीबी एयरपोर्ट पर उतर नहीं सकती और उन्हें दूसरे स्थान पर डाइवर्ट करना पड़ता है। इससे पैसेंजर्स को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और उन्हें आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ता है। अतः केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अनुरोध है कि इस दिशा में DGCA की मंजूरी शीघ्रता से प्रदान किए जाए, जिससे ILS सिस्टम को एमबीबी एयरपोर्ट अगरतला में शुरू किया जा सके। धन्यवाद। Thank you. Shri Niranjan BC, not present. Shri Rakesh Sinha, not present. Srimati Ramila Ben Bechar Bhai Bara, demand to construct hostels for tribal students. धन्यवाद सभापति जी। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राज्यव्यापी कन्या केनवनी रथ चलाकर बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया, बालिकाओं की शिक्षा पर जोर दिया। परिणाम स्वरूप आज आदिवासी, दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग की लड़कियों 100% शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। सरकार ने तालुका स्तर पर कॉलेज, ITI आदि संस्थान स्थापित किए। इससे सभी बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन अध्यक्षश्री तालुका स्तर पर दूर दराज गांव के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अप डाउन कर रहे हैं, जिसमें उन्हें काफी रुकावटें महसूस होती है। इसके कारण कई बच्चे अपने पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। दूर दराज गांव से शिक्षा के लिए आने वाले ऐसे बच्चों की इस समस्या का समाधान के लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि प्रत्येक आदिवासी तालुका स्तर पर इन लड़के लड़कियों के लिए रहने खाने व्यवस्था के साथ एक सरकारी समरस छात्रावास शुरू किया जाना चाहिए। यह छात्रावास तालुका जिला स्तर पर होने से हमारे आदिवासी बच्चों को बहुत अधिक फायदा प्राप्त होगा। सभापति,
यह आवागमन व्यवस्था से विद्यार्थियों को समय के साथ साथ आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। माता पिता गरीब होने से कुछ बेटे बेटियों को बीच में अध्ययन यात्रा बंद करना पड़ती है। मेरा अनुरोध है इस समस्या के निराकरण हेतु छात्रावास का निर्माण शीघ्र करवाना अति उचित होगा। धन्यवाद। Thank you. Shri Satish Chandra Dubey, not present. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, the 11th December 2023. जगत के सभी गणमान्य साथियों, देवी और सज्जनों, लाल किले का ये प्रांगण अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। ये किला केवल इमारत नहीं, यह एक इतिहास है। आजादी के पहले और आजादी के बाद कितनी ही पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन लाल किला अड़ी है, अमिट है। इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट लाल किले में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, हर राष्ट्र के पास उसके अपने प्रतीक होते हैं जो विश्व को उसके अतीत से और उसके मूल्यों से परिचित करवाते हैं। और इन प्रतीकों को गढ़ने का काम राष्ट्र की कला, संस्कृति और वास्तु का होता है। राजधानी दिल्ली तो ऐसे ही कितने प्रतीकों का केंद्र है जिनमें हमें भारतीय वास्तु की भव्यता के दर्शन होते हैं। इसलिए दिल्ली में आयोजित हो रहे इंडिया आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बिएनाले कई आयोजन कई मायनों में खास है।
मैं अभी यहाँ बनाए गए पैवेलियंस देख रहा था और मैं आपकी क्षमा भी मांगता हूं कि मैं लेट भी इसी के कारण आया कि वहां एक से बढ़कर ऐसे देखने योग्य, समझने योग्य चीजें हैं कि मुझे आने में विलंब हो गया और फिर भी मैं 2-3 स्थान तो छोड़ने पड़े मुझे। इन पैवेलियंस में कलर्स भी है, क्रिएटिविटी भी है, इसमें कल्चर भी है और कम्युनिटी कनेक्ट भी है। मैं इस सफल शुरुआत के लिए संस्कृति मंत्रालय, उसके सभी अधिकारी, इसमें प्रतिभाग कर रहे सभी देशों को और आप सभी को बधाई देता हूं। हमारे यहां कहा जाता है कि किताब जो है वो दुनिया देखने की एक छोटी सी विंडो के रूप में शुरुआत करता है। मुझे लगता है कला मानव मन के भीतर की यात्रा का महामार्ग है। साथियों, भारत हजारों वर्ष पुराना राष्ट्र है। एक समय था जब दुनिया में भारत की आर्थिक समृद्धि के किस्से कहे जाते थे। आज भी भारत की संस्कृति, हमारी प्राचीन धरोहरें पूरी दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करती है। आज देश विरासत पर गर्व, इस भावना लेकर अपने उस गौरव को फिर से आगे बढ़ा रहा है। आज आर्ट और आर्किटेक्चर से जुड़े हर क्षेत्र में आत्मगौरव की भावना से काम हो रहा है। चाहे केदारनाथ और काशी जैसे हमारे महाकाल, महालोक जैसे पुनर्निर्माण हो, या आजादी के अमृत काल में भारत सांस्कृतिक समृद्धि के नए आयाम गढ़ रहा है, इसके लिए ठोस प्रयास कर रहा है। भारत में हो रहा ये बिएनाले इस दिशा में एक और शानदार कदम है। इसके पहले हमने देखा है यहां दिल्ली में ही इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो हुआ था। अगस्त में फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज का आयोजन भी किया गया था। इन कार्यक्रमों के जरिए हमारा प्रयास है कि भारत में ग्लोबल कल्चरल इनिशिएटिव को संस्थागत बनाया जाए, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, एक आधुनिक व्यवस्था बनाई जाए। हम चाहते हैं कि वेनिस, साओ पाउलो, सिंगापुर, सिडनी, शारजा जैसे बिएनाले और दुबई, लंदन जैसे आर्ट फेयर्स की तरह दुनिया में भारत के आयोजनों की भी बड़ी पहचान बने। और इसकी जरूरत इसलिए भी होती है कि आज मानव जीवन पर टेक्नोलॉजी का प्रभाव इतना बढ़ता गया है और कोई भी दूर का जो देखता है वो नहीं चाहेगा कि उसका समाज रोबोट हो जाए। हमें रोबोट तैयार नहीं करने, हमने इंसान बनाने, और उसके लिए संवेदनाएं चाहिए, उर्मी चाहिए, सद्भावना चाहिए, उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए, आशा निराशा के बीच जीने के तरीके चाहिए। ये सारी चीजें कला और संस्कृति के माध्यम से पैदा होती है। जोड़ तोड़ के लिए तो टेक्नोलॉजी बहुत तेज काम कर सकती है, और इसलिए इस प्रकार की चीजें मानव की भीतर के सामर्थ्य को जानना, पहचानना, उसे जोड़ना, इसके लिए एक बहुत बड़ा सहारा देती है। और साथियों, अपने इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही
आज आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन का लोकार्पण भी हुआ है। ये सेंटर भारत की यूनिक और रेयर क्राफ्ट्स को, दुर्लभ कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मंच देगा। ये कारीगरों और डिजाइनर्स को साथ लाने, मार्केट से इसे उन्हें इनोवेशन करने में मदद करेगा। इससे कारीगरों को डिजाइन डेवलपमेंट की भी जानकारी मिलेगी और वो डिजिटल मार्केटिंग में भी पारंगत होंगे। और हम जानते हैं भारतीय शिल्पियों में इतनी प्रतिभा है कि आधुनिक जानकारी और संसाधनों के साथ वो पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, भारत में 5 शहरों में कल्चरल स्पेस बनाने की शुरुआत होना भी एक ऐतिहासिक कदम है। दिल्ली के साथ साथ कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद और वाराणसी में बनने वाले ये कल्चरल स्पेस इन शहरों को सांस्कृतिक रूप से और समृद्ध करेंगे। ये सेंटर लोकल आर्ट को एनरिच करने के लिए इनोवेटिव आइडियाज को भी आगे बढ़ाएंगे। आप सभी ने अगले 7 दिनों के लिए 7 महत्वपूर्ण थीम्स भी तय की। इसमें देशज भारत डिजाइन और समत्व, इन थीम्स को हमें एक मिशन के रूप में आगे लेकर चलना होगा। देशज यानी इंडिजीनियस डिजाइन को एनरिच करने के लिए ये जरूरी है कि हमारे युवाओं के लिए अध्ययन और रिसर्च का हिस्सा बने। समत्व थीम वास्तु के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को सेलिब्रेट करती है। मुझे विश्वास है नारी शक्ति की कल्पना शक्ति, उनकी रचनात्मकता इस क्षेत्र को नई ऊंचाई पर लेकर जाएगी। साथियों, भारत में कला को, रस और रंगों को जीवन का पर्याय, सिनोनिम ऑफ लाइफ माना गया है। हमारे पूर्वजों ने तो यहां तक कहा है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु वृक्ष विषाणहीन, अर्थात मनुष्य और दूसरे जीव जंतुओं में साहित्य, संगीत और कला का ही मुख्य अंतर है। यानी सोने, जागने और पेट भरने की आदतें अपनी स्वाभाविक होती है, लेकिन ये कला, साहित्य और संगीत ही है जो मनुष्य के जीवन में रस घोलते हैं, उसे खास बनाते हैं। इसलिए हमारे यहां जीवन की अलग अलग जरूरतों को, अलग अलग दायित्वों को चतुशास्त्र कला, 64 आर्ट्स के उसे जोड़ा गया है। जैसे कि गीत संगीत के लिए वाद्य, नृत्य और गायन कलाएं हैं। इनमें भी वाटरवेव्स आदि पर आधारित उदक वाद्यम यानी जलवाद्य जैसी स्पेसिफिक आर्ट्स भी है। हमारे यहाँ कितनी तरह के सेंट्स या परफ्यूम बनाने के लिए गंध युक्ति ही कला है। मीनाकारी और नक्काशी के लिए तक्ष कर्म कला सिखाई जाती है। कढ़ाई बुनाई के सौंदर्य की बारीकियों को सिखाने के लिए सूचिवान कर्माणी कला है। हमारे यहाँ ये सब काम कितने परफेक्शन के साथ किए जाते थे, इसका था अंदाजा आप भारत में बनने वाले प्राचीन वस्त्रों से लगा सकते हैं। कहा जाता था कि कपड़े का पूरा थान मलमल ऐसा बनता था कि एक अंगूठी में से उसको पार किया जा सकता था। यानी ये सामर्थ्य था।
भारत में नक्काशी, मीनाकारी जैसे काम भी केवल सजावट की चीजों तक सीमित नहीं थे, बल्कि तलवारों, ढालों, भालों जैसी युद्ध की चीजों पर भी अद्भुत कलाकारी देखने को मिलती थी। इतना ही नहीं, अगर कोई, मैं तो चाहूंगा कभी इस थीम पर कोई सोचे, हमारे यहां पशुओं के आभूषण, घोड़े पर अपना डॉग रखते थे, उस पर बैल होते थे, गाय होते, उस पर जो आभूषण में जो विविधताएं थी, कला थी, यानी अपने आप अजूबा है। और कितना परफेक्शन था तो उस पशु को फिजिकली तकलीफ ना हो, इसकी पूरी केयर करके बनाया जाता था। यानी अगर इन चीजों को समाहित करके देखें तब पता चलता है कि कितना सामर्थ्य इसमें भरा हुआ है। साथियों, ऐसी कितनी आर्ट हमारे देश में रही है और यही भारत का प्राचीन इतिहास रहा है और आज भी भारत के कोने कोने में इसके निशान हमें मिलते हैं। मैं तो जिस शहर का सांसद हूं वो काशी इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। काशी को अविनाशी कहते हैं क्योंकि काशी गंगा के साथ साथ साहित्य, संगीत और कलाओं के अमर प्रवाह की धरती है। आध्यात्मिक तौर पर कलाओं के जन्मदाता माने जाने वाले भगवान शिव को काशी ने अपने हृदय में स्थापित किया है। ये कलाएं, ये शिल्प और संस्कृति मानवीय सभ्यता के लिए ऊर्जा प्रवाह की तरह है और ऊर्जा अमर होती है, चेतना अविनाशी होती है। इसीलिए काशी भी अविनाशी है। फ्रेंड्स, भारत के इस कल्चर को देखने के लिए दुनिया भर से जो लोग आते हैं उनके लिए कुछ महीने पहले हमने एक नई शुरुआत की थी। हमने गंगा विलास क्रूज चलाया था जो काशी से असम तक गंगा के अंदर प्रवास करते हुए यात्रियों को लेकर गया था। इसमें दुनिया के अनेक टूरिस्ट आए थे। करीब 45-50 दिन का वो कार्यक्रम था। एक ही यात्रा में उन्हें गंगा के किनारे बसे कितने ही शहरों और गांवों और इलाकों का अनुभव प्राप्त हुआ। और हमारा मानव संस्कृति का विकास भी नदी के तटों पे हुआ है। अगर एक बार नदी के तट की कोई यात्रा करता है तो जीवन की गहराई को जानने के लिए बहुत बड़ा अवसर होता है। और इसी एक विचार में से ये गंगा क्रूज को हमने शुरू किया था। फ्रेंड्स, कला का कोई भी स्वरूप क्यों ना हो, उसका जन्म प्रकृति के, नेचर के निकट ही होता है। यहां भी मैंने जितना देखा, कहीं न कहीं नेचर का एलिमेंट उस आर्ट के साथ जुड़ा हुआ है, उससे बाहर एक भी चीज नहीं है। इसलिए आर्ट बाय नेचर, प्रो नेचर और प्रो एनवायरमेंट एंड प्रो क्लाइमेट है। जैसे दुनिया के देशों में रिवर फ्रंट की बहुत बड़ी चर्चा होती है, भाई फलाना देश में दिखना रिवर फ्रंट वगैरह वगैरह। भारत में हजारों वर्ष से नदियों के किनारे घाटों की परंपरा है। हमारे कितने ही पर्व और उत्सव इन्हीं घाटों से जुड़े होते हैं। इसी तरह कूप, सरोवर, बावड़ी, स्टेपवेल्स की एक समृद्ध परंपरा हमारे देश में थी। गुजरात में रानी की वाव हो, राजस्थान में अनेक जगहों पर, दिल्ली में भी आज भी कई स्टेपवेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो रानी की वाव है उसकी विशेषता यह है कि पूरा उल्टा टेम्पल है। यानी कैसे उस समय की कला सृष्टि को सोचने वालों लोगों ने इसका निर्माण किया होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इन सारे हमारे पानी से जुड़े जितने संग्रह के स्थान हैं, इनका आर्किटेक्चर आप देखिए, इनका डिजाइन देखिए, देखने में किसी मेगा मार्बल से कम नहीं लगते। इसी तरह
भारत के पुराने किलों और दुर्गों का वास्तु भी दुनिया भर के लोगों को हैरान करता है। हर किले का अपना आर्किटेक्चर है, अपना साइंस भी है। मैं कुछ दिन पहले ही सिंधुदुर्ग में था, जहां समुद्र के भीतर बहुत ही विशाल किला निर्मित है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जैसलमेर में भी पटवों की हवेली भी गए होंगे। 5 हवेलियों के इस समूह को इस तरह बनाया गया था कि वो नेचुरल एयर कंडीशनिंग की तरह काम करता है। ये सारा आर्किटेक्चर न केवल लॉन्ग सस्टेनिंग होता था, बल्कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल भी होता था। यानी पूरी दुनिया के पास भारत के आर्ट एंड कल्चर से बहुत कुछ जानने सीखने के लिए अवसर है। फ्रेंड्स, आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर ये मानवीय सभ्यता के लिए डायवर्सिटी और यूनिटी दोनों के स्रोत रहे। हम दुनिया के सबसे विविधतापूर्ण राष्ट्र हैं, लेकिन साथ ही वही विविधता में हमें आपस में जोड़ती है। जब मैं अभी किलों की बात कर रहा था, मैं 1-2 साल पहले कार्यक्रम के लिए बुंदेलखंड गया था। तो झांसी के किले पर एक कार्यक्रम था। फिर मैंने वहां सरकार से बातचीत की कि हमने बुंदेलखंड को फोर्ट टूरिज्म के लिए डेवलप करना चाहिए। और बाद में उन्होंने सारा रिसर्च किया, उसका जो ग्रंथ तैयार हुआ है, आप हैरान हो जाएंगे। अकेले बुंदेलखंड में इतना रिच हेरिटेज सिर्फ फोर्ट्स का, सिर्फ झांसी का नहीं, अनेक जगह पे और पास में ही सारे, यानी इतना सामर्थ्यवान है। मैं तो चाहूंगा कभी हमारे जो फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट है वो वहां जाकर के उसको आर्ट वर्क करने का एक बहुत बड़ा कंपटीशन रखा जा सकता है। तभी जाकर के दुनिया को पता चलेगा कि हमारे पूर्वजों ने क्या कुछ निर्माण किया है। क्या आपने सोचा है कि भारत की इस डायवर्सिटी का स्रोत क्या है? इसका स्रोत है मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत का डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर तभी फलते फूलते हैं जब समाज में विचारों की स्वतंत्रता होती है, अपने ढंग से काम करने की आजादी मिलती है। डिबेट और डायलॉग की इस परंपरा से डायवर्सिटी अपने आप पनपती है। इसलिए आज भी हमारी सरकार जब कल्चर की बात करती है तो हम हर तरह की विविधता का स्वागत भी करते हैं, उसे सपोर्ट भी करते हैं। देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में G20 के आयोजन के जरिए हमने अपनी इस विविधता को दुनिया के सामने शोकेस किया है। साथियों, भारत अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसा, इस विचार को जीने वाला देश है। अर्थात हम अपना पराया की सोच से जीने वाले लोग नहीं है। हम स्वयं की जगह वयम की आस्था रखने वाले लोग, हम सेल्फ की जगह यूनिवर्स की बात करने वाले लोग। आज जब भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है तो पूरा विश्व इसमें अपने लिए बेहतर भविष्य देख रहा है। जैसे भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ से पूरे विश्व की प्रगति जुड़ी है, जैसे आत्मनिर्भर भारत के हमारे विजन में पूरे विश्व के लिए नए अवसर जुड़े हैं, वैसे ही आर्ट और आर्किटेक्चर जैसे क्षेत्रों में भी भारत के पुनरोदय से, भारत के सांस्कृतिक उत्थान से पूरे विश्व के हित जुड़े हैं। हमने योग जैसी अपनी विरासत को आगे बढ़ाया तो आज इसका लाभ पूरी दुनिया को हो रहा है। हमने आयुर्वेद को आधुनिक वैज्ञानिक मानकों पर मजबूत बनाने के लिए प्रयास शुरू किए तो इसकी अहमियत पूरी दुनिया समझ रही है। हमने अपने सांस्कृतिक मूल्यों को सामने रखकर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए एक नए विकल्प संकल्प की। आज मिशन लाइफ जैसे
अभियानों के जरिए पूरे विश्व को बेहतर भविष्य की उम्मीद मिल रही है। आर्ट, आर्किटेक्चर और डिजाइन के क्षेत्र में भी भारत जितनी मजबूती से उभरेगा, उसका उतना ही लाभ पूरी मानवता को होने वाला है। साथियों, सभ्यताएं समागम और सहयोग से ही समृद्ध होती है। इसलिए इस दिशा में दुनिया के दूसरे सभी देशों की भागीदारी, उनके साथ हमारी पार्टनरशिप बेहद महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा कि आयोजन का आगे और भी विस्तार हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में देश साथ आए। मुझे विश्वास है ये आयोजन इस दिशा में एक अहम शुरुआत साबित होगा। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और देशवासियों से मेरा आग्रह है कि मार्च महीने तक ये आपके लिए उपलब्ध है। पूरा दिन निकालिए, एक एक चीज को देखिए, हमारे यहाँ कैसी प्रतिभाएं हैं, कैसी परंपराएं हैं, प्रकृति के प्रति हमारा कितना लगाव है, इन सारी बातों को एक जगह पर महसूस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Prime Minister, sir, for your invaluable insights, guidance, and vision. Your vision of developing a cultural spaces project at the Red Fort is now real and happening. Please remain in your places, ladies and gentlemen, until the Prime Minister has left the premises. कैसे मिली खेती को गति, कैसे पकड़ी नीतियों ने गति, खेती में हुई कितनी प्रगति, क्या किसानों ने की उन्नति? जवाब है हाँ। प्रमाण है खेती को लेकर लगातार बदलता नजरिया। खेती से जुड़ा एक तबका खेती को आजीविका मात्र का साधन न मानकर
तरक्की का आधार मान रहा है। वो स्मार्ट हो चला है, या यूं कहिए कि देश की खेती किसानी स्मार्ट हो रही है। पिछले एक दशक में खेती में आए बदलावों को देखकर ये कहा जा सकता है कि खेती घाटे का सौदा नहीं बल्कि तरक्की की इबारत है। हाँ, जरूरत है साफ नीयत और नीतियों के जमीनी क्रियान्वयन की। परंतु जिस देश में 1 रुपए में से 15 पैसे जमीन तक पहुंचने की बातें होती रही हों, वहां योजनाओं को जमीन तक पहुंचाना ही अपने आप को चुनौतियों से दो हाथ करने जैसा था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभालते ही इस पर काम शुरू किया। सबसे पहले देश के आम बजट में खेती किसानी को मिलने वाली हिस्सेदारी में बढ़ोतरी की, मिलने वाले लाभ को सीधे किसानों के खाते तक पहुंचाया। साल 2014 से लेकर 2023 तक के सभी बजटों में आवंटित राशियों, घोषित योजनाओं में देश के अन्नदाताओं पर खासा ध्यान दिया गया। ग्राम स्वराज का जो सपना बापू ने देखा था, उसे सरकार ने पूरा करने का भरपूर प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिहाज से मास्टर प्लान तैयार किया। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, जिसे पीएम गति शक्ति के नाम से शुरू किया गया, जिसे पूरा करने का लक्ष्य 2024-25 तक है। इस मेगा प्लान के तहत 16 मंत्रालयों और विभागों ने उन सभी परियोजनाओं को जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मोड में डाल दिया है। माना जा रहा है कि मेगा फूड पार्क, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस और कृषि प्रसंस्करण केंद्रों के जरिए किसानों की आय दोगुनी करने में पीएम गति शक्ति मदद करेगी। पिछले कई वर्षों से लगातार कृषि का देश की अर्थव्यवस्था में महत्व कम होता जा रहा था। किसी जमाने में कृषि क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में 65% का योगदान देता था। अब कई वर्षों बाद पहली बार कोविड के दौरान कृषि ने फिर बाजी पलटी, तो केंद्र सरकार भी अपनी योजनाओं के माध्यम से खेती को गति देने के लिए प्रयासरत नजर आ रही है। मेगा प्लान पीएम कृषि गति शक्ति योजना के तहत कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में मौजूद भारी कमियों में सुधार करना है। मसलन गांवों में खेतों के निकट सोलर कोल्ड स्टोरेज, अनाज भंडारण के लिए वेयर हाउस, मेगा फूड पार्क और कृषि प्रसंस्करण केंद्र खोलना है। गति शक्ति योजना का उद्देश्य लॉजिस्टिक और कम्युनिकेशन तकनीक से खेती किसानी को बाजार से कनेक्ट करना है, ताकि कृषि उत्पादों के रख रखाव पर आने वाले खर्च को कम कर उनका सही दाम किसानों को मिल सके। भारत में कई बार फसल इसलिए खराब हो जाती है क्योंकि उसे खरीदने वाला कोई नहीं था, या फिर इसलिए कि उसे ठीक से रखने के लिए गोदाम नहीं है। इस बर्बादी के कारण कई बार बाजार में उनके दाम बढ़ जाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 23 करोड़ टन दाल, 12 करोड़ टन फल और 21 करोड़ टन सब्जियां वितरण प्रणाली में खामियों के कारण खराब हो जाती हैं। कटाई के बाद होने वाले औसत नुकसान में प्रमुख अनाज फसलों के लिए 10 से 16% तक खराब हो जाता है। ये नुकसान कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अभूतपूर्व खाद्य संकट से जूझ रहे देश के लिए यहाँ एक चिंताजनक आंकड़ा है। भारत में हर साल कटाई के बाद 55,600 करोड़ रुपए की फसल का नुकसान होता है। खराब कोल्ड चेन और अव्यवस्थित लॉजिस्टिक के कारण हर साल लगभग $14 बिलियन की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। बागवानी बोर्ड के अनुसार भारत में कोल्ड स्टोरेज में 90% की कमी है। भारत के 60% कोल्ड स्टोरेज केवल 4 राज्यों यानी गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में है। कटाई के बाद होने वाले नुकसान के कारण बेहतर भंडारण क्षमता और कोल्ड चेन के अभाव में खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता में गिरावट आती है।
आधुनिक प्रसंस्करण इकाइयों की कमी के चलते एंजाइमेटिक ब्राउनिंग की स्थिति बनती है, जिसके चलते उत्पादों की सेल्फ लाइफ कम हो जाती है। अगर इस मुसीबत की जड़ को ही खत्म कर दिया जाए तो सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। लेकिन मौजूदा सरकार में प्रसंस्करण के प्रयासों को गति मिली है। बीते 9 सालों में इस दिशा में बहुत कठोर फैसलों के साथ मजबूत कदम उठाए गए हैं। उन्हीं में से एक कदम है नई भंडारण नीति। हजारों टन अनाज को डिपो यार्ड में भीगने की तस्वीरें सिस्टम की लापरवाही को उजागर करती है। जाहिर तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है। डिपो यार्ड अपने परिसर में कृषि उपज को बुनियादी सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहते हैं। ये समस्याएं उन अनाजों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं जिनकी हाल में कटाई की गई होती है, और उन फसलों को भी प्रभावित करती हैं जिनकी कटाई होने वाली होती है, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को भारी नुकसान होता है। कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना नई भंडारण ढांचे का प्रमुख लक्ष्य है। भंडारण ढांचे को आधुनिक बनाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। यह कदम अनाज तक ही सीमित नहीं, बल्कि तेजी से खराब होने वाली वस्तुओं जैसे फल, सब्जियां, दूध, मांस, मछली को लेकर और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। वहीं बागवानी फसलों के बढ़ते उत्पादन के कारण पर्याप्त भंडारण सुविधाओं के निर्माण की जरूरत है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भंडारण सुविधाओं के अभाव में हर साल 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खाद्य वस्तुएं बर्बाद हो जाती हैं। हर्मेटिक या एयर टाइट कंटेनर्स जैसी उचित भंडारण विधियों का उपयोग कर हम उपज को कीड़ों, कृतकों, मोल्ड और नमी के चलते खराब होने से रोक सकते हैं, ताकि प्राप्त उपज के लिए गुणवत्ता मानकों एवं प्रमाणीकरण को कार्यान्वित किया जा सके। साथ ही भंडारण एवं प्रसंस्करण का पालन सुनिश्चित किया जा सके। इसी के साथ सड़क नेटवर्क एवं उन्नत लॉजिस्टिक का उपयोग कर पारगमन के दौरान देरी के बावजूद हम होने वाली क्षति को कम कर सकते हैं। सरकार समेकित कृषि विपणन योजना यानी ISAM की उप योजना कृषि विपणन अवसंरचना यानी AMI के तहत कृषि उपज की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी वेयर हाउसेस के निर्माण के लिए सहायता प्रदान कर रही है। साल 2021 से 2023 में AMI उप योजना के तहत किसानों सहित लाभार्थियों के लिए 740.88 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता वाली 42,138 वेयर हाउसेस को सहायता प्रदान की गई। वहीं पिछले 3 वर्षों में ISAM की AMI योजना के तहत 64.32 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाली कुल 2,314 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है। दुनिया भले ही तमाम तरह की आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रही हो, लेकिन भारत सरकार देश की रीढ़ कहे जाने वाले कृषि क्षेत्र को मुश्किलों के बीच उम्मीद के तौर पर देखती आई है। यही वजह है कि भारत सरकार ने वर्ष 2020 में 6,865 करोड़ रुपए के कुल बजटीय खर्च के साथ 10,000 किसान उत्पादक संगठन यानी FPO के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र परियोजना शुरू की है, जिनमें से 4,748 FPO देश भर में पंजीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें 130 जैविक, 95 तिलहन, 87 मधुमक्खी पालन, 49 कृषि वानिकी और बांस को लेकर पंजीकृत किए गए हैं। खास बात यह है कि इनमें 357 महिला FPO भी पंजीकृत किए गए हैं। 30 जून 2023 तक देश भर में पंजीकृत FPO की संख्या 6,319 हो चुकी थी, जो लगातार बढ़ रही है। बाजार का गणित, मौसम का विज्ञान, तकनीकी का प्रयोग और नीतियों के सहयोग से खेती को गति मिल रही है। किसानी स्मार्ट क्या हुई,
अब किसान परंपरागत खेती की डगर से विदेशी बाजारों में भी अपनी पैट्स जमा रहे हैं। अब वो अपने माल के उचित दाम न मिलने पर निराश होकर उसे खेत में सड़ने के बजाय उसकी प्रोसेसिंग पर ध्यान दे रहे हैं। उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाकर पैकेजिंग कर वो मुश्किल को अवसर में बदल रहे हैं। भारत में प्रोसेस्ड फूड निर्यात बढ़ाने के लिए PLIS यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत अब किसान कंपनियों द्वारा अपने ब्रांड को देश के बाहर प्रमोट करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने 50% सब्सिडी का प्रावधान किया है, ताकि देश में बना भारतीय ब्रांड भी विदेशों में धूम मचा सके। अभी बाहर की ही कंपनियां इंडियन फूड बनाकर अपने ब्रांड के नाम से बेचती हैं। इस पहल से हमारे यहाँ से न सिर्फ निर्यात बढ़ेगा बल्कि अवसर भी खुलेंगे। आज देश में 707 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर फोकस किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये योजना सहकारी क्षेत्र में खाद्यान्न भंडारण क्षमता में 70 मिलियन टन की वृद्धि करेगी, जो सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना होगी। यह योजना सहकारी समितियों को देश भर में विकेंद्रीकृत भंडारण सुविधाएं स्थापित करने का अवसर देगी, जो भारतीय खाद्य निगम पर बोझ कम करने, कृषि उपज की बर्बादी में कमी लाने और किसानों को उनकी उपज बिक्री के बेहतर अवसरों के लिए मदद करेगी। इस योजना से स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता का निर्माण कर कटाई उपरांत होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। इससे किसान गोदामों में अपनी उपज का भंडारण या साझा इकाइयों में अपनी उपज का प्रसंस्करण कर अधिकतम लाभ कमा सकेंगे। इस योजना के तहत किसान अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जैसे कि उचित मूल्य की दुकानों के रूप में सेवा देने, साथ ही कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना कर आय में वृद्धि कर सकेंगे। इसके चलते उपभोक्ताओं, विशेष रूप से गरीब और कमजोर वर्गों के लिए खाद्यान्न की उपलब्धता से खाद्य सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार होगा। खरीद केंद्रों से गोदामों तक और गोदामों से उचित मूल्य की दुकानों तक खाद्यान्नों की आवाजाही को न्यूनतम कर परिवहन लागत को कम किया जा सकेगा। हैंडलिंग और पैकेजिंग का जोखिम कम होगा, साथ ही आवाजाही में देरी से भी निजात मिलेगी। खाद्यान्न के सुरक्षित हो जाने से किसानों को बड़ा बाजार मिलेगा। वो कीमतों में उतार चढ़ाव, कटाई उपरांत होने वाले नुकसान को भी रोक पाएंगे। बेहतर सुविधाओं और प्रौद्योगिकियों में निवेश से फूड प्रोसेसिंग से तरक्की के द्वार आसानी से खोले जा सकेंगे, जिसका आगाज हो चुका है। उम्मीद है कि PPP या FPO के माध्यम से खाद्य भंडारण की पहल बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। साथ ही ये भी माना गया है कि उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीकों की जरूरत होगी। इंडियन फूड मार्केट को दुनिया भर में लॉन्च करने के उद्देश्य से भारत का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन करेगा, ताकि विविध खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वैश्विक निवेश को आकर्षित किया जा सके। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 भारतीय खाद्य अर्थव्यवस्था का प्रवेश द्वार है, जो भारतीय और विदेशी निवेशकों के बीच साझेदारी को सुगम बनाएगा। दरअसल ये वर्ल्ड फूड इकोसिस्टम उत्पादकों, फूड प्रोसेसर्स, इन्वेस्टर्स, नीति निर्माताओं और संगठनों का अपनी तरह का अद्वितीय आयोजन होगा। ये वैश्विक खाद्य मूल्य श्रृंखला के साथ खुदरा प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विनिर्माण और कोल्ड चेन लॉजिस्टिक के प्रदर्शन, जुड़ाव और सहयोग का मंच है। श्री अन्न यानी मिलेट्स, जो कि भारत की समृद्ध विरासत का हिस्सा और किस्सा रहे हैं, इन्हें भारत के सुपर फूड के तौर पर भी दुनिया भर में प्रमोट कर उसका लाभ उठाया जा सकता है। मिलेट्स जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि और कुपोषण जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ा सकते हैं। साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। भारत के पास खाद्य प्रसंस्करण का वैश्विक केंद्र बनने
और विश्व खाद्य बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ अर्जित करने का विजन भी है और मिशन। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत अपने ऐसे समर्थकों को बढ़ावा देना चाहता है जो इसके खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का समर्थन और उसे गति प्रदान कर सके। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को पर्याप्त ऋण प्रदान कर इसे उद्योग का एक बड़ा हिस्सा बनाया जा सकता है। एक कुशल और सर्वव्यापी इकोसिस्टम बाधाओं को दूर करने और एक समन्वित एवं एकीकृत ढांचे की स्थापना में महत्वपूर्ण कदम होगा। पिछले 9 सालों में किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिहाज से केंद्र सरकार ने योजनाओं के ढेर लगा दिए हैं, जिनमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, भारत ब्रांड, जैविक खेती और जीरो बजट प्राकृतिक खेती, सॉयल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मंडी सुकिसान क्रेडिट कार्ड अभियान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि आयात निर्यात नीतियां, अन्नदाता बने ऊर्जादाता और खेती के ढांचे में बड़े स्तर पर निवेश पर बल दिया है, जिसके परिणाम भी दिखने शुरू हो गए हैं। इसमें एक तरफ समाज की पहल रंग ला रही है तो दूसरी ओर सरकार का सहयोग और प्रोत्साहन उन्हें अपने हिस्से का एक मुट्ठी आसमान तोड़ लाने के लिए प्रेरित कर रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन की नायिका मातंगिनी हाजरा, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि देश के लिए मर मिटने की कोई उम्र नहीं होती। वर्ष 1932 में अपनी झोपड़ी के बाहर से निकलने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन के जुलूस का शंखनाद से स्वागत करने वाली मातंगिनी 62 वर्ष की उम्र में आजादी के आंदोलन से जुड़ी। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामलुक में इसकी कमान मातंगिनी हाजरा ने संभाली। मातंगिनी ने तामलुक में एक बड़ी रैली निकालने का निश्चय किया और 29 सितंबर को 6000 लोगों के जुलूस के साथ मातंगिनी हाजरा तामलुक थाने की ओर चल पड़ी। ब्रिटिश प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी, लेकिन मातंगिनी हाथ में तिरंगा लिए वंदे मातरम के उद्घोष के साथ बढ़ने लगी। अचानक एक गोली मातंगिनी के दाएं हाथ पर आ लगी। घायल मातंगिनी दूसरे हाथ में तिरंगा लिए फिर आगे बढ़ने लगी। गोलियां चलनी बंद नहीं हुई और लगातार तीसरी गोली 72 वर्ष की मातंगिनी हाजरा के माथे पर जा लगी। आखिरी सांस तक हाथ में तिरंगा और जुबान पर वंदे मातरम। यही थी मातंगिनी हाजरा। अद्भुत साहस, उत्साह और आजादी पाने के ललक से युवाओं को भी पीछे छोड़ने वाली मातंगिनी हाजरा पूरे देश के लिए एक मिसाल है। भारत विविधता का दर्पण है, एकता की मूरत है, लोकतंत्र की जननी। यहाँ वेदों में गणतांत्रिक व्यवस्थाओं के उदाहरण है। बदलाव आया तो केवल स्वरूप में। बदलते समय के साथ भारत बना विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र। भारत की संस्कृति में त्रिभुज का अपना बेहद अनूठा महत्व है। इसका जिक्र वैदिक संस्कृत में भी मिलता है, जिसे त्रिकोण कहा जाता है। कई तरह के अनुष्ठानों के दौरान भी त्रिकोण आकृति बनाई जाती है। इसे पवित्र श्री यंत्र से भी प्रेरित बताया जा रहा है। संसद का जो नया भवन है
वो तिकोने आकार में, लेकिन वो सामान्य तिकोना नहीं है। अगर आप देखें तो उस सामान्य तिकोने के ऊपर एक और तिकोना है, यानी एक तरह से वो सितारा स्टार बनता है। अगर आप उस स्टार को देखें तो वो स्टार एक तरह से हमारे श्री चक्र की कल्पना करता है। हम लोगों ने जब इसके आर्ट वर्क की बात की तो हमने ये सोचा कि कैसे ये जो तिकोना है, अगर इस तिकोने के ऊपर हम पब्लिक एंट्रेंसेस और सेरिमोनियल एंट्रेंसेस इनको अगर जोड़ें तो ये एक तरह से श्री चक्र की निर्मित करते हैं। और ये श्री चक्र यानी क्या है? ये श्री चक्र यानी पीपुल्स एंडेवर, यानी लोगों का प्रयास, और डिवाइन विल यानी ऊपरी शक्ति की जो इच्छा शक्ति है। तो ये उसका समन्वित परिणाम है। जो इसकी पूरी संरचना की गई है, षटकोण के ऊपर एक षटकोण रखकर उसके हिसाब से बनाया गया, और ये वो कोण है जो शक्ति का प्रतीक है, जो ज्ञान का प्रतीक है, जो प्रेरणा का प्रतीक है। तो आशा ये की जाती है कि आप इन चीज़ों को ग्रहण करके अंदर जाएंगे और जब बाहर आएंगे तो आप इन्हीं चीज़ों को आगे तक पहुंचाएंगे। 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाने वाले संसद भवन को संविधान सदन के पास बनाया गया है। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में इसकी स्थापना हमारे सभ्यतागत लोकाचार में निहित मूल्यों के गहन जागरण का प्रतीक भी है। देश आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है। हमारी लोकतंत्र की भव्यता का प्रतीक है संसद भवन की यह नई इमारत। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं नए संसद भवन के प्रवेश द्वारों के बारे में। सही मायने में अगर देखा जाए तो यह केवल प्रवेश द्वार नहीं है, बल्कि इनमें जीवन के मूल्यों के संदेश निहित हैं, जिन्हें समझने की जरूरत है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इन प्रवेश द्वारों का सीधा संबंध हमारे देश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के साथ है। नए भारत के हर नागरिक के उज्जवल भविष्य को समर्पित नए और पुराने संसद भवन की इमारत एक दूसरे की पूरक होंगी। इन भवन में प्रवेश के 6 द्वार हैं, जो भारतीय सभ्यता के अनुसार प्रकृति को अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। मकर और हंस यानी जल को नमन, शार्दुल और गरुण यानी नभ को नमस्कार, अश्व और गज यानी हल को प्रणाम। संसद का नया भवन है, उसकी परिकल्पना में 3 जो है वो विशेष द्वार हैं, जिसको हम अंग्रेजी में सेरिमोनियल एंट्रेंसेस कहते हैं, और उसके साथ 3 जो है वो पब्लिक एंट्रेंस है, यानी सामान्य द्वार है। सेरिमोनियल एंट्रेंसेस का आशय ये है कि जहाँ से कोई उत्सव के समय, जब कोई जैसे माननीय राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो प्रोसेशन आता है, तो उस तरह के हैं, या अलग अलग राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, या एक द्वार है जहाँ से सारे माननीय सांसदगण और माननीय मंत्रीगण जहाँ से प्रवेश करेंगे। तो इसलिए वो 3 सेरिमोनियल एंट्रेंसेस हैं। हमारी संस्कृति और हमारे पुराने जो वेद हैं उनसे जुड़े हुए जो ऐसे शब्द जो अपने आप में बहुत कुछ परिभाषित करते हैं, वो नाम रखे गए हैं इन द्वारों के। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी संस्कृति को आगे बढ़ावा मिल रहा है और हम नई पीढ़ी उस संस्कृति के साथ पूरी तरह से जुड़ भी रहे हैं। नई संसद भवन के 6 द्वारों में 3 मुख्य द्वार और 3 उप द्वार हैं। नए भवन के द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है सत्यमेव जयते, यानी जनता के हित के लिए सत्य की रक्षा करना इस भवन का कर्तव्य है। संसद भवन के 3 मुख्य द्वार जल, नभ और थल को दर्शाते हैं।
जिन्हें ज्ञान, शक्ति और कर्म द्वार का भी नाम दिया गया है। इन द्वारों से उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री का आगमन होगा और जो उपद्वार हैं उनसे कुछ खास लोग और विजिटर्स आएंगे। आइए आगे कुछ और जानकारी लेते हैं विस्तार से। नए संसद भवन के 3 मुख्य द्वार अश्व, गज और गरुड़, जिनका नाम ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार भी है। जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, उस दिन गज द्वार से ही प्रधानमंत्री ने प्रवेश किया था। तीन जो सेरेमोनियल एंट्रेंसेस हैं उनके ऊपर हमने गार्जियन स्टेच्यूज बनाए। हमने देखा कि हमारे यहाँ द्वारपालों की एक परंपरा है, भारतीय वास्तुशास्त्र में द्वारपालों की परंपरा है। हम कोई भी एक प्रमुख वास्तु देखते हैं, फिर चाहे वो राजप्रासाद हो, चाहे मंदिर हो, वहाँ पर द्वारपाल रहते हैं। लेकिन हमको ये भी दिखाना था कि हम ऐसे द्वारपाल चुने जो सभी तरह की विचार परंपराओं में और सभी तरह के बिलीफ्स में उनकी स्वीकृति हो। इसलिए हमने हमारे यहाँ के जो कंपोजिट एनिमल्स हैं, ऐसे ऐसे प्राणियों की जिनकी कल्पना हमारे यहाँ शास्त्रों में की गई है और वो अलग अलग तत्वों से जिनका संबंध है, तो इसलिए हमने जो हमारा पूर्वी द्वार है, पूर्वी द्वार में हमने गरुड़ की प्रतिमा स्थापित की। गरुड़ यानी जो विजेता का भाव है, जो जिसमें एक आत्मविश्वास है, जो ऊंची ऊंची छलांग भरता है। गरुड़ के हमारे यहाँ पर अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग मायने भी दिए गए, और सिर्फ सनातन परंपरा में ही नहीं, अलग विश्वास के जो जैसे अन्य देशों में भी गरुड़ की अपनी मान्यता है, तो उस पर हमने गरुड़ की प्रतिमा लगाई। फिर जो उत्तरी द्वार है वहाँ पर हमने गज की प्रतिमा लगाई, तो वो गज द्वार है, क्योंकि हम सोचते गज जो है वो ऐश्वर्य का प्रतीक है, और उत्तर की जो दिशा है वो एक तरह से राजा की दिशा है, जो पूरे के पूरे प्रासाद का स्वामी है, या हम कहें यहाँ तो भारत की जनता ही पूरे प्रासाद की स्वामी है, लेकिन उस ऐश्वर्य को दिखाने वाला है। दक्षिणी द्वार है, उसमें हमने अश्व की प्रतिमा लगाई, तो अश्व जो है वो ऊर्जा का प्रतीक है, जो निरंतर आगे बढ़ते रहने का प्रतीक है। ऐसे हमने 3 द्वार बनाए। हम जब भी पूजा करते हैं, जल, अग्नि, वायु का अपने ध्यान में रखकर ही उसकी पूजा की जाती है। और मुझे लगता है लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, जब मंदिर की बात होती है, लोगों की आशा इसके साथ जुड़ी है, तो ये सब चीज़ों की ताकत इसमें रहनी बहुत ज़रूरी है। ये सभी तीनों शक्तियाँ हमारे हिंदुस्तान में हमेशा हर व्यक्ति ने, हिंदुस्तानियों ने महसूस किया है, वही आज फीलिंग इस पार्लियामेंट में आने के बाद भी हुई है। संसद के मुख्य द्वार और उपद्वार पर पशु और पक्षियों को स्थापित किया गया है, जो कि शुभता का प्रतीक हैं। गज द्वार पर पत्थर के 2 हाथी बने हुए हैं। हमारे यहाँ घर होता है ना, तो वास्तुकला तो घर में भी चलता है, और वास्तुकला से अगर परिपूर्ण हो तो वास्तुकला के माध्यम से हम सुसंस्कारित करते हैं, पुरस्कृत करते हैं। अगर घर में कुछ खराबी हो तो हम अगर दीप जलाते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं, तो उससे घर के अंदर एक वातावरण तैयार होता है। उसी प्रकार से संस्कार हर तरह से हमारी जो संस्कृति रही है, तो ये वास्तुकला के दृष्टिकोण से जो आपने कहा ना कि जैसे गज द्वार है, तो स्वाभाविक है कि जो गज है वो धन और ऐश्वर्य का एक प्रतीक है। गज ज्ञान, धन, बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। गज को भगवान गणेश का भी रूप माना गया है। इस हमारे संसद भवन में जिस तरीके से 6 द्वार हैं और ये हमारे देश की संस्कृति को दर्शाते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जल, थल जो एक पृथ्वी को एक जोड़े रखता है, और आप देखिए गज द्वार अपने आप में दोनों को जोड़ करके बहुत शक्तिशाली बनता है। उसी प्रकार के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस द्वार से जाएंगे, हमारे उपराष्ट्रपति जी, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी उस द्वार से जाएंगे। ऐरावत कहाँ से आया? ऐरावत भी उसी शास्त्र परंपरा से आया, और वास्तु में भी उसका उल्लेख मिलता है, तो वास्तु परंपरा से भी आया। तो हर एक दिशा का क्या विधान है, और उस दिशा के विधान के अनुसार उस दिशा की क्या शक्ति है, कौन सी दिशा किस चीज का प्रतीक है, उसको देखते हुए हमने वहाँ पर उस तरह के प्राणियों को रखने का विचार किया है। इसीलिए गज जो है वो उत्तर की दिशा में, क्योंकि वो शक्ति का प्रतीक है, हमारे
ऐश्वर्य का प्रतीक है, संपन्नता का प्रतीक। गरुड़ पूर्वी द्वार पर हमने देखा कि पूर्वी द्वार जो है वो सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला द्वार है, क्योंकि वहाँ से सभी माननीय सांसदगण, माननीय मंत्रीगण प्रवेश करेंगे। और वो पूर्वी द्वार एक तरह से हम देखते हैं पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है, और इसलिए वो विकास की दिशा है, उन्नति की दिशा है, निरंतर आगे बढ़ते रहने की दिशा है, ऊंची उड़ान भरने की दिशा है। तो इसलिए हमने वो गरुड़ वहाँ पर रखा कि गरुड़ उसका प्रतीक है। ओडिशा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो कि लगभग 772 साल पुराना है। बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बने इस मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस मंदिर की खासियत है कि सूर्य के प्रकाश की पहली किरण इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है। इसका क्या संबंध है हमारे नई संसद भवन से, यहाँ के प्रवेश द्वार से, आइए जानते हैं। 1250 में बना कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा के पुरी में है। इस मंदिर का निर्माण गांग वंश राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। अबुल फजल ने आइन ए अकबरी में लिखा है कि राजा नरसिंह देव ने 12 साल के पूरे राजस्व को मंदिर के निर्माण में लगा दिया था। कलिंग शैली में बने इस मंदिर की संरचना रथ के आकार की है, जिसमें 7 घोड़े और 12 जोड़ी पहिए लगे हुए हैं। इन पहियों को धूप घड़ी भी कहते हैं, क्योंकि ये वक्त बताने का काम करते हैं। इस रथ में 7 घोड़े हैं, जिन्हें सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि संसद भवन में स्थापित चक्र और प्रवेश द्वार पर मौजूद अश्व इसी मंदिर से लिए गए हैं, जो कि स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। ये जो प्रतिमाएं हमने अलग अलग द्वारों पर लगाई हैं, ये सारी प्रतिमाएं भी भारत के शिल्प शास्त्र में, शिल्प परंपरा में कहीं न कहीं उपलब्ध हैं। ये हमने वहाँ से इसलिए ली ताकि किसी को ये ना लगे कि ये सिर्फ कलाकार की कपोल कल्पनाएं हैं, कि कलाकार ने अपने मन से कुछ चीज़ें बनाई हैं। नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमारे शिल्प में, हमारे कहीं न कहीं वास्तुकला में उपलब्ध थी। जैसे कोणार्क का मंदिर है, कोणार्क के सूर्य मंदिर में चक्र का विधान हम सब देखते हैं, तो इसलिए हमने जो चक्र है वो वहाँ से लिया था। गरुड़ की भी प्रतिमा जो है वो तमिलनाडु के शिल्प से उठाई है, तमिलनाडु के मंदिरों से उठाई है, और वहाँ पर वो अपने आप में उपलब्ध है। जैसे होयसालेश्वर में मकर की प्रतिमा है, शार्दुल की प्रतिमा हमको ग्वालियर में मिलती है, उड़ीसा में हमको अश्व की प्रतिमा मिलती है। तो ये सारी प्रतिमाएं हमारे देश के अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग वास्तु में, अलग अलग जगहों पर उपलब्ध हैं। इनको दिखाने का आशय ये था कि ये दरअसल इनके पीछे अपना एक शास्त्र है, अपना एक विधान है, उसका पूरा का पूरा विवरण है, पूरा आख्यान है। तो ये कहीं भी ऐसा न लगे कि सिर्फ कल्पित है और इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसके पीछे कोई तथ्यात्मक आधार नहीं। आप इस समय संसद भवन के पूर्वी प्रवेश द्वार पर हैं, जिसे कि गरुड़ द्वार का नाम दिया गया है। जो 3 मुख्य द्वार हैं, उनमें गरुड़ द्वार भी बेहद खास है, जहां पर गरुड़ की प्रतिमा लगी हुई है। गरुड़ को आमतौर पर कहीं भी तेजी से यात्रा करने की शक्ति रखने वाला, हमेशा सतर्क रहने वाला और नाग के दुश्मन के रूप में भी चित्रित किया गया है। गरुड़ को पक्षियों का राजा और पतंग जैसी आकृति वाला बताया गया है। कुछ और रोचक जानकारियों की अगर बात करें तो गरुड़ इंडोनेशिया, थाईलैंड और मंगोलिया में भी सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में लोकप्रिय है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है। वहां की राष्ट्रीय एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ है। इंडोनेशिया की सेनाएं संयुक्त राष्ट्र मिशन पर गरुड़ के नाम से ही जाती हैं। खास बात यह है कि भगवान विष्णु की सवारी भी गरुड़ है, और हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म में भी गरुड़ की अपनी एक अलग महत्ता है। जैसे ही आप उन 3 जो उत्सव द्वार हैं, सेरेमोनियल एंट्रेंसेस, उससे जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पर 3 फॉयर हैं, यानी एक बड़े मंडप हैं। उन मंडपों में हमने अलग अलग प्रतिमाएं रखी। तो जब हम उत्तरी द्वार से अंदर आए तो हमने उस द्वार को नाम दिया संकल्प मंडप। संकल्प मंडप इसलिए कि ये भारत की संकल्प शक्ति का द्योतक है, और इसलिए उस संकल्प मंडप में जो 2 हमने प्रतिमाएं रखी हैं, जो 2 बहुत बड़े बड़े म्यूरल्स बनाए हैं, जो कि धातु के म्यूरल्स हैं, ब्रास के म्यूरल्स हैं। एक पे हमने चाणक्य की प्रतिमा दिखाई है
कि चाणक्य जो है वो बुद्धि का संकल्प है, और बुद्धि से, अपने संकल्प शक्ति से उन्होंने कैसे एक बहुत बड़े राज्य की, बहुत बड़ी राज्य व्यवस्था की स्थापना की अपने शिष्य के माध्यम से, चंद्रगुप्त के माध्यम से। और दूसरी तरफ हमने महात्मा गांधी का वो दृश्य दिखाने की कोशिश की जिसमें वो नमक बना रहे हैं। तो ये जो नमक का सत्याग्रह है, ये भी भारत की एक संकल्प शक्ति का द्योतक है कि कैसे एक नमक बनाने की एक घटना ने पूरे देश का वातावरण बदल दिया, स्वतंत्रता का आंदोलन किया। इसी तरह जो हमारा पूर्वी द्वार है, जिसको हमने कर्तव्य मंडप का नाम दिया, और कर्तव्य मंडप का नाम दिया इसलिए कि हम निरंतर अपने कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, कर्तव्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए वहाँ पर हमने एक कोणार्क के चक्र को दिखाया है। देखिए, कोणार्क का चक्र क्या है? कोणार्क का चक्र हमारे जीवन की निरंतरता को दर्शाता है। भारत का जो पूरा का पूरा विधान है, सोच है, वो चक्रीय है, सर्कुलर है, लीनियर में हम विचार नहीं करते, और उस बात को हमारा कोणार्क का चक्र दिखाता है कि हम कैसे निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। और वहीं हमने उसके सामने कर्तव्य मंडप के प्रतीक के रूप में सरदार पटेल और बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसे दो हमारे प्रतीक पुरुषों को दिखाने की कोशिश की। तो ये हमारा दूसरा मंडप हुआ। और तीसरा जो हमारा मंडप है वो ज्ञान का मंडप है। हमने वहाँ पर एक तरफ गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद दिखाया है। हम जानते हैं कि हमारी जो प्राचीन परंपरा है उसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद है वो अपने आप में एक ज्ञान की पराकाष्ठा है और ज्ञान की स्वतंत्रता की पराकाष्ठा है। ये भी संदेश पूरे विश्व को जाना चाहिए कि आज से 5000 साल पहले भी गार्गी याज्ञवल्क्य जैसे प्रकांड विद्वान से संवाद कर सकती थी, उन्हें अपने शास्त्रार्थ में हरा सकती थी। और उसके दूसरी ओर हमने नालंदा का विश्वविद्यालय दिखाया। हम जानते हैं कि नालंदा विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र रहा है, विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय रहा है। उपद्वारों में सबसे पहले बात करेंगे हंस द्वार की, जो कि उत्तर पूर्व में स्थित है। हंस की एक कलाकृति 15वीं शताब्दी में निर्मित हम्पी कर्नाटक के विजय विट्ठल मंदिर में स्थित प्रतिमा से प्रेरित है, जिसकी ऊंचाई 7 फुट है। हम्पी में घूमने के लिए दूर दराज के इलाकों से लोग आते हैं, लेकिन जब वो यहाँ के पिलर्स को छूते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। दरअसल ये म्यूजिकल पिलर्स के नाम से जाने जाते हैं। यही इस मंदिर की खासियत है। हंस विवेक, आत्मज्ञान, प्रज्ञा, सौंदर्य और स्वच्छता का प्रतीक भी है। हंस का रंग सफेद है, इसलिए वो शांति और पवित्रता का भी प्रतीक माना जाता है। ज्ञान और विवेक से संपन्न होने के कारण ही हंस माता सरस्वती का वाहन है। वहाँ पर 3 पब्लिक एंट्रेंसेस भी हैं। एक पब्लिक एंट्रेंस में हमने हंस द्वार बनाया है। हंस किस बात का प्रतीक है? हंस न्याय का प्रतीक। तो जब संसद है तो संसद क्या है? संसद भारत में न्यायपूर्ण व्यवस्था को सुनिश्चित करती है। इसलिए हंस जो है, हंस क्या करता है? नीर क्षीर विवेक, जो दूध का दूध पानी का पानी करता है, वो जो न्यायप्रियता है वो हंस दिखाता है। तो उस हंस को हमने उस द्वार पर दिखाने की चेष्टा की है। बात करें शार्दुल द्वार की, तो ये द्वार ग्वालियर का गुजरी महल की कला का नमूना है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित गुजरी महल भारत के प्रसिद्ध पुरातात्विक संग्रहालयों में से एक है। गुजरी महल का निर्माण 1486 ईस्वी से 1516 ईस्वी के बीच में करवाया गया था। ये इमारत वास्तविक रूप से एक महल थी, जिसका निर्माण राजा मान सिंह ने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए करवाया था, जो कि एक गुजर थी। शार्दुल ताकत और शक्ति का प्रतीक है। सुरक्षा के नजरिए से महल और मंदिरों के प्रवेश द्वार पर रक्षक की भूमिका में शार्दुल की प्रतिमा को रखा जाता है। पश्चिम का द्वार है, वहां पर हमने शार्दुल की प्रतिमा दिखाने की कोशिश की। शार्दुल भी एक तरह से कंपोजिट एलिमेंट है, जो शेर का एक तरह से एक रूप है, लेकिन वो किस चीज का रूप है? वो वीरता का रूप है। वो अपने आप में एक वीरत्व, एक शौर्य का प्रतीक भी है और तेजस्विता का प्रतीक, वो हमने वहां पर दिखाने की कोशिश की। संसद भवन का मकर द्वार कर्नाटक के होयसलेश्वर मंदिर को दर्शाता है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। आइए जानते हैं इस बारे में। कर्नाटक का हेलेबिडु या हेलेबिड में मौजूद होयसलेश्वर मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र मंदिर है।
ये मैसूर से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। होयसल राजा ने 12वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण शुरू कराया था। कुछ क्षति के बावजूद मंदिर की कलाकृतियां मुख्य रूप से बरकरार हैं। इन वर्षों में इसमें कई पुनर्स्थापन हुए हैं, लेकिन सभी को पूरी तरह से प्रलेखित नहीं किया गया है। एएसआई ने इसके जीर्णोद्धार को पूरा करने के लिए सावधानी पूर्वक कदम भी उठाए हैं। संसद का मकर द्वार यहीं से लिया गया है। मकर का जल से जुड़ाव है। हिंदू पौराणिक कथाओं में जल संबंधी प्रतीक से इसे जोड़ा गया है, जिसका काम जल को शुद्ध करना और सृजन करना है। मकर द्वार का उद्देश्य सुरक्षा और नकारात्मक शक्तियों से बचाव करना है। तीसरा जो द्वार है उसको हमने मकर द्वार कहा है। और मकर द्वार दरअसल क्या है, मकर हमारे यहाँ पे जल तत्व का प्रतीक है। हम सब जानते हैं कि जल में एक क्षमता है कि सारी चीज़ों को अपने अंदर समा लेता है, और जब सब चीज़ों को समा के सब चीज़ों को एक साथ करने की प्रतीक, तो एक तरह से वो एकता का प्रतीक भी होगा। तो इसलिए ये जो हमारे 3 पब्लिक एंट्रेंसेस है उसको हमने उस तरह से दिखाने की कोशिश की। त्रिकोण की आकृति की हमारी नई संसद भवन की दिव्यता ने पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया का भी दिल जीता है। विश्व भर में आज हमारी नई संसद भवन की चर्चा है, जो बेहद अर्थपूर्ण है, जिसके अपने अलग मायने हैं। नया संसद भवन 4 मंजिला है। ये पूरा कैंपस 64,500 वर्ग मीटर के दायरे में फैला हुआ है, जिसमें भारतीय लोकतंत्र की विरासत को दिखाया गया है। स्वतंत्रता के 75 साल बाद एक ऐसी वास्तु की निर्मित हुई है जो पूरी तरह से भारतीय है। भारत के लोगों ने इसकी कल्पना की और भारत के लोगों ने ही इसे बनाया, निर्मित की, और वो सब भी किया रिकॉर्ड समय में। इसलिए इसमें पूरी की पूरी भारत की 140 करोड़ जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति होती। इसलिए ये कहना कि ये संसद है, ये सिर्फ कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह है, कुछ काम करने वाले अफसरों की जगह है, ऐसा नहीं है। ये एक एक भारतीय के जन आकांक्षाओं का प्रतीक है। आजादी के अमृत काल का ये उषा काल है। भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर के नए भवन में अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वहाँ के जन सामान्य के अंदर एस्पिरेशन है, उस एस्पिरेशन को आइडेंटिफाई हम करें। नए एस्पिरेशन जगाने के लिए मैंने क्या पढ़े हैं और उसको हम चैनलाइज करें। हम इस प्रकार से जन भागीदारी से चीजों को कर सकते हैं। आकांक्षित जिले देश के ऐसे जिलों का समूह है जो दशकों से विकास की मुख्य धारा से दूर रह गए।
लेकिन इनके सपनों को नई उड़ान दी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत देश के 112 उन जिलों को शामिल किया गया जो आर्थिक सामाजिक रूप से विकास की मुख्य धारा से दूर थे। पहले अधिकारी इन अल्प विकसित जिलों में जाने से परहेज करते थे, लेकिन धीरे धीरे आकांक्षी जिलों की बदलती तस्वीर ने अधिकारियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। अब सभी अधिकारी इन जिलों में तैनाती लेकर जनपद को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम को ब्लॉक और शहर तक विस्तारित करने की इच्छा व्यक्त की। सैकड़ों अफसर इन दिनों लगातार महीने में 2 बार 3 बार उन दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट में जाकर के बैठते हैं, 2-2, 3-3 दिन वहां रहते हैं। उस टीम के साथ बैठ करके रणनीति बना करके इम्प्लीमेंट कर करके चीजों को बदलने के लिए खुद कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार के केंद्रीय दफ्तर के सैकड़ों मुलाजिमों का हिंदुस्तान के दूर दराज के इलाकों में 2-2 दिन ट्रैवलिंग करना पड़ता है, जा रहे हैं। ये बेटर टुमारो की तो गारंटी है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम का मकसद भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की संस्कृति को बढ़ावा देना है, ताकि 112 जिलों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार लाया जा सके। साथ ही इन जिलों की रियल टाइम मॉनिटरिंग और रैंकिंग को भी सुनिश्चित किया जा सके। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत 5 विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिनमें स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, बुनियादी ढांचा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत का पालन करते हुए सभी नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना और समावेशी विकास हासिल करना है। पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो इन जिलों में रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में काफी बेहतर हुई है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अपनी 2021 की रिपोर्ट में भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तारीफ की है। यूएनडीपी के मुताबिक डेल्टा रैंकिंग में चुने गए झारखंड का सिमडेगा, उत्तर प्रदेश के चंदौली, सोनभद्र और मध्य प्रदेश के राजगढ़ में काफी सुधार देखने को मिला है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता का नतीजा ही है कि झारखंड के गुमला जिले को इस साल होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ओवरऑल प्रोग्रेस विद स्पेशल सैचुरेशन की श्रेणी में देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रधानमंत्री अवार्ड से नवाजा गया। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की श्रेणी में लोक प्रशासन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड से नवाजा गया। नीति आयोग आकांक्षी जिलों में विकास की प्रगति का जायजा लेने के लिए हर महीने डेल्टा रैंकिंग जारी करता है। ये रैंकिंग 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के आधार पर 5 सामाजिक आर्थिक विषयों के तहत की जाती है। +1,000 gigawatts renewable energy potential in India. As of July 2023, renewable energy sources in India have a combined installed capacity of 179.32 gigawatts. India is the world's 3rd largest producer of renewable energy, 4th in wind power capacity, and 4th in solar power capacity. India aims to produce 5 million tons of green hydrogen by 2030. India has already achieved its target of 40% installed electric capacity from non-fossil fuels.
UN Secretary General Antonio Guterres has warned the world that humanity is on the highway to climate hell with foot on accelerator. Listen in. Humanity has a choice: cooperate or perish. It is either a climate solidarity pact or a collective suicide pact. We are in the fight of our lives and we are losing. India is emerging as a global powerhouse in the renewable energy sector and is set to achieve net zero emissions by 2070. India's announcement that it aims to reach net zero emissions by 2070 is a hugely significant moment for the global fight against climate change. We believe that an ounce of practice is worth more than a ton of preaching. हम भारत में के फ्यूल मिक्स में नॉन फॉसिल फ्यूल की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं. Hello and a very warm welcome viewers. You're watching this special presentation of Sunset TV on making India a manufacturing powerhouse, and today our focus is on the renewable energy sector. In this edition, we've packed everything for you on how India is emerging as a global powerhouse in the renewable energy sector, voices that matter, stakeholder versions, and of course, a visit to the manufacturing unit. In fact, right now, we're at one of the MSME units producing solar components. So come along with me on this exciting journey. With a population of around 1.4 billion, India has a massive demand for energy to fuel its rapidly growing economy. From a power deficit nation at the time of independence, the efforts to make India energy independent have continued for over 7 decades. Today, we are a power surplus nation with a total installed electricity capacity of over 4 lakh megawatts. International Energy Agency has called it the largest ever expansion of access in the history of mankind. Largest ever expansion of electricity access anywhere in the world in history. No country has connected so many households in such a short period of time. India has made impressive strides in the renewable energy sector, positioning itself as a front-runner in the global renewable energy market. Thanks to central government policies and initiatives, technological advancements, and significant foreign investments, India has witnessed remarkable growth in the renewable energy capacity. The scale of transformation in India is stunning. Its economic growth has been among the highest in the world, lifting millions of people out of poverty. Every year, India adds a city the size of London to its urban population, involving vast construction of new buildings, factories, and transportation networks. Coal and oil have so far served as bedrocks of India's industrial growth and modernization, giving a rising number of Indian people access to modern energy services. This includes adding new electricity connections for over 50 million citizens each year over the past decade. Despite the fact that nation consists of over 17% of world population, it only accounts for about 5% of global emissions. India's sheer size and its huge scope for growth means that its energy demand is set to grow by more than that of any other country in the coming decades. In a pathway to net zero emissions by 2070, India estimates that most of the growth in energy demand in this decade would already have to be met with low carbon energy sources. Having understood the importance of this crucial sector in the years following the signing of the Paris Agreement, the renewable energy sector was one of the critical sectors identified under the Make in India program, which was launched in 2014. With its focus on a zero defect and zero effect policy, there was a need for the development of the sustained long-term capacity of the renewable sector while ensuring zero effect through reducing greenhouse gas emissions by increasing dependence on clean and green technologies. Private sector is driving the renewable energy wave in India.
The phenomenal growth of manufacturing industry in our country is a testimony of the fact that Make in India is just not a patriotic slogan. It has been fully imbibed by the consumers and supported by the industry. The growth in manufacturing sector is not only limited to one or two places, but it is all across. For example, in the renewable industry, till around a decade back, as well as module manufacturing is concerned, we have a capacity of even less than 10 gigawatt. And by 2026, we're looking forward to add at least 100 gigawatt of module manufacturing capacity. We want to lead by example and leave behind a cleaner, sustainable planet for our future generations. That is the mission that we at Renew Power are embarked upon. India has been aggressively pushing towards a more sustainable future by investing heavily in renewable energy sources, with solar energy at the forefront of its efforts. India is endowed with abundant solar energy, which is capable of producing 5 trillion kilowatts of clean energy. We are blessed with around 300 sunny days in a year. Many states in India have already recognized and identified solar energy potential, and others are lined up to meet their growing energy demands with clean and everlasting solar energy. The top 5 states for installed renewable capacity in India are Rajasthan, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu, and Maharashtra. Most states in India have a comprehensive residential solar rooftop policy, and you can use the power produced from your own residential rooftop solar system. 8,877 megawatts rooftop solar capacity was added as on 31st of March 2023. The Ministry of New and Renewable Energy, under its scheme Development of Solar Cities, has approved and sanctioned 60 cities. Sachi, the historic home to the renowned Stoop, now holds the distinction of being India's first solar city. India's utility-scale solar park model has firmly stood its ground. India now houses multiple ultra-mega solar parks with capacity of more than 1 gigawatt, and 2 of them are the largest commissioned in the world to date. The solar parks in India continue to attract global capital and some of the most renowned domestic and international renewable energy developers. Bhadla Solar Park is the world's largest solar park located in India, which is spread over a total area of 14,000 acres in Jodhpur district in Rajasthan. Floating solar power also helps tap into India's large water reservoirs and overcome some of the persisting issues facing ground-mounted solar. The largest floating solar power plant in India is currently in Ramagunda in Telangana. The Union Cabinet has also approved to introduce the production-linked incentive scheme in high-efficiency solar PV modules for enhancing India's manufacturing capabilities and enhancing exports. The scheme focuses on direct employment of about 30,000 and indirect employment of about 120,000 persons. Import substitution of around 17,500 crore every year. The government has also allocated a total capacity of 39,600 megawatts of domestic solar PV module manufacturing to 11 companies, with a total outlay of 14,007 crore under the production-linked incentive scheme for high-efficiency solar PV modules. Manufacturing capacity totaling 7,400 megawatts is expected to become operational by October 2024, 16,800 megawatts capacity by April 2025, and the balance 15,400 megawatts capacity by April 2026. Thanks to the government's proactive schemes like production-linked incentive and other incentives, India has been emerging as a global hub for solar manufacturing. As for NSEFI's official data estimates and market intelligence, we believe that India's manufacturing capacity for solar modules will touch 100 gigawatt by 2026 or 2027, with another 100 gigawatt of cell manufacturing capacity and around 60 to 70 gigawatt of
ingot polysilicon wafer capacity. The focus has been on made in India also. That is where the manufacturers like us are finding a good space to show to the world that yes, there is alternative to China, and yes, the made in India renewable energy products are available, and we are equally competent and we are equally price competitive, technology competitive to offer to the world good quality solar products. A treaty-based international intergovernmental organization, International Solar Alliance, aims at mobilizing more than $1,000 billion of investment by 2030 for the massive deployment of solar energy. It was established by Prime Minister Narendra Modi and then President of France on November 30, 2015. ICA's objective is to scale up solar energy, reduce the cost of solar power generation through aggregation of demand for solar finance, technologies, innovation, research, and capacity building. We've also put together a global solar facility which provides a payment guarantee mechanism to the private sector investors who invest in these kinds of small projects. With all of this, we hope to be able to create the kind of ecosystem that it takes for the world to move towards a solar future. Hydropower is commonly produced when fast-moving water spins turbines to generate electricity. India is endowed with large hydropower potential of 1,45,320 megawatts. There are around 197 hydroelectric power plants in India, with nearly 100 gigawatts of electricity potential in India's rivers lying untapped because of high tariffs. The government has approved a slew of measures under the hydro policy to make it competitive. As part of the new hydro policy, large hydropower projects have been declared as renewable energy sources, making them a part of renewable purchase obligation, which requires power discoms to buy a fixed amount of renewable energy to cut reliance on fossil fuels. These measures are particularly beneficial for development of hydro projects in hilly regions and states, which are often located in remote and far-flung areas and require development of extensive associated infrastructure such as roads, bridges, for transportation of heavy and large-sized equipment and machinery to the project site. Koyna Hydroelectric Power Project is considered to be the largest hydroelectric power plant in India. Wind energy in India is emerging as an important and reliable source of renewable energy. Wind energy is generated by the use of wind turbines installed in wind farms. According to MNRE, the total installed capacity of wind energy in India is 41.2 gigawatts as of September 2022. There are more than 800 wind power plants in India installed to generate wind power. Tamil Nadu tops the list of states with the largest installed wind power generation capacity. Gujarat houses the second largest installed wind power generation capacity. Maharashtra has the third largest installed wind power generation capacity. Karnataka houses the fourth largest installed wind power generation capacity. Rajasthan houses the fifth largest installed wind power generation capacity in the country. For offshore wind energy, India has a very vibrant policy that came up in October 2015, known as the National Offshore Wind Energy Policy Framework. The objective is to develop offshore wind energy in Indian Exclusive Economic Zone along the Indian coastline. A solar wind hybrid policy was issued in May 2018. The main objective of the policy is to provide a framework for the promotion of large grid-connected wind, solar, photovoltaic hybrid systems for optimal and efficient utilization of wind and solar resources. The wind-solar PV hybrid systems will help in reducing the variability in renewable power generation and achieving better grid stability. The Green Hydrogen Mission aims to promote the production and utilization of green hydrogen. It is poised to play a pivotal role in reducing the nation's carbon footprint and achieving its commitment to renewable energy sources. The government has approved a whopping 19,744 crore for the implementation of the National Green Hydrogen Mission in the country. Considered a future fuel,
Green hydrogen or ammonia is said to be a replacement for traditional fossil fuels. The mission is to reduce India's oil imports and provide clean fuel to citizens. At the same time, to make India a global hub for using, producing, and exporting green hydrogen. Its production capacity is likely to invite investment of 8 lakh crore and create over 6 lakh clean jobs. Hydrogen is light and can be stored. It is energy dense and doesn't generate direct polluting emissions. Therefore, it is considered as a substitute for fossil fuels in heavy transport sectors like maritime transport or the aviation sector, where it is hard to decarbonize the fuel. There was undivided focus on mitigating climate change and switching to renewable sources during India's ongoing G20 presidency. In fact, parliaments of the G20 nations and other invitee nations discussed the issue during the P20 summit hosted by India. After pioneering the International Solar Alliance, India has also paved way for Global Biofuel Alliance. Biofuels are generated from all types of waste, which of course is locally available everywhere. While currently biofuel is only systematically produced from crops and industrial food processing waste, it can also be produced from human-generated waste due to advances in technology. This solves multiple problems. Waste is diverted from landfills as an energy source. It is renewable and available at all times, and being locally produced resolves the hassles and carbon emissions. Prime Minister Modi, along with the leaders of Singapore, Bangladesh, Italy, USA, Brazil, Argentina, Mauritius, and UAE, launched the Global Biofuel Alliance on 9th of September 2023 on the sidelines of the G20 summit in New Delhi. The Global Biofuel Alliance is an initiative by India as the G20 chair. The alliance intends to expedite global uptake of biofuels through facilitating technology advancements. In this leaders' communique, and that's a very important component. It talks about tripling renewable energy, cutting down on fossil subsidies, but it talks about green hydrogen, it talks about biofuel, this partnership on biofuels, Global Biofuel Alliance. It talks about ending plastic. It talks about disaster risk reduction. So many, many components to the Green Development Pact. And this, to my mind, is one of the biggest achievements which this G20 has seen. 1,600 retail outlets, E20 is available. And the movement forward is to have, by the end of 2025, all petrol pumps in the country to have E20. But I think an even more significant achievement of the leadership of the Honorable Prime Minister is that we've already moved from the hesitancy of 5%, hesitancy of 10%, hesitancy of 20%. Our mindset is already changing and looking beyond 20%. How will that happen? Greater ethanol production. India is pioneering a new model of economic development that could avoid the carbon-intensive approaches that many countries have pursued in the past and provide a blueprint for other developing economies. In addition, Government of India has also initiated major reforms with missions, like the Renewable Energy Evaluation Storage Projects. For example, Green Credit Program, PM Pranam, Govardhan Scheme, Bharatiya Prakratik Kheti, Bio Input Resources Center, Nishti, Amrit Dharohar Initiative, Coastal Shipping Replacement, Vehicle Scrappage Policy, PM Kusum Yojana, which are spread across 13 ministries as part of Green Growth Agenda. Sector is witnessing a rapid growth. There's been more than 50 gigawatt of bids already announced by utilities. And on top of that, both commercial and industrial category of consumers are also eager to buy more and more renewable power. It doesn't stop at this. Indian government is also pushing that all these power plants should use Make in India. In an era of accelerating change, the imperative to limit climate change and achieve sustainable growth is strengthening the momentum of global energy transformation. The rapid decline in renewable energy costs, improving energy efficiency, widespread electrification,
increasingly smart technologies, continual technological breakthroughs, and well-informed policy making all are driving the shift, bringing a sustainable energy future within reach. The world's actions today will be crucial to create a sustainable energy system. Ultimately, the path to secure a better future depends on pursuing a positive, inclusive, economically, socially, and environmentally beneficial energy transition, the way India is pursuing. Well, viewers, that's all I had for you in this edition. With camera person DK Pandey, camera assistant Riyasat, and video editor Mukhtar Ali, I'm Kriti Mishra signing off for Sunset Television. आठ दिसंबर साल 1720 को श्रीमंत पेशवा बालाजी बाजीराव भट्ट का जन्म हुआ। उन्हें नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। अपने पिता बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद पेशवा के पद की जिम्मेदारी के लिए छत्रपति शाहू ने उन्हें अपना पेशवा नियुक्त किया। मराठा साम्राज्य में पेशवा का पद प्रधानमंत्री पद होता था। वे मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति शाहूजी महाराज के 8वें पेशवा रहे। उनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य की विजय पताका अपने चरम पर पहुंची। 8 दिसंबर साल 1985 को सार्क की स्थापना हुई। आज ही के दिन 7 दक्षिण एशियाई देशों के नेताओं ने साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इन 7 देशों में शामिल थे मालदीव, भारत, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। अप्रैल 2007 में दिल्ली में सार्क की 14वीं बैठक के दौरान अफगानिस्तान एक नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ। सार्क का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के विकासशील देशों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में मजबूत करना है। इसके साथ ही दक्षिण एशिया में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और कल्याण को बढ़ावा देना है। आज के दिन को सार्क चार्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 दिसंबर साल 1983 में ब्रिटेन के उच्च सदन यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने सदन की सीधी कार्यवाही टेलीविजन पर दिखाने के पक्ष में मतदान किया। सर्वप्रथम इस प्रस्ताव को सांसद लॉर्ड सोम्स ने सदन के पटल पर रखा, जिसे बहुमत से पारित किया गया। सोम्स चाहते थे कि देश की जनता ये देख सके कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कामकाज कैसे चलता है। इससे पहले संसद सत्र के केवल शुरुआत की ही कुछ झलक जनता देख पाती थी, लेकिन तब अमेरिका जैसे कई देशों में राजनेताओं के बीच होने वाली बहस को टेलीविजन पर दिखाया जाता था। मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ, जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की अतृप्त प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग मेरा। मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर। पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर। पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात, जिसको पल भर में ही छूकर। ऐसे व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन। मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग।
मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का, मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का अमरदान। मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर। मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सठका सहर। मेरा स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में चहर चहर। इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभ मैं। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश। जगती का रच करके विनाश कब चाहा है निज का विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर। विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है इतिहास अमर। यदि आज देहली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर से हिंदू की जय तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, दो आंसू शेष बचा पाया जब जब मानव सब कुछ खोकर। मैं आया तभी द्रवित होकर, मैं आया ज्ञान दीप लेकर। भूला भटका मानव पथ पर चल निकला सोते से जगकर। पथ के आवर्तों से थककर जो बैठ गया आधे पथ पर, उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के सुदित लाल। मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के क्षुदित लाल। मुझको मानव में भेद नहीं मेरा अंतस्थल वर विशाल। जग से ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार। अपना सब कुछ हूँ लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागार। मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकियों का वह राज मुकुट। यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वह किरीट तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग मेरा। मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार। अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार। क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में चलने